So batsman Roshan is now comes out to the middle और बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त सागर की गेंद पर ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलते हुए काफी बाहर रहा और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा एक रन का इजाफा. Mic check. Mic testing 1 2 3 testing. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. इस बार बैटर गेंद के ऑफ स्टंप पर आती गेंद के इस वक्त खेलना चाहा था क्योंकि और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 4 overs completed, 37 for 2 for Kodical Indians. They are looking in a good situation after being losing the toss and put it to bat by Kings United in the inaugural match of this tournament. And now 3 overs remaining in overall calculation in their innings. And before the 5th of toss, इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अब मैं सतीश को यहाँ पर इस श्रृंखला में पहली बार आमंत्रित करता हूँ. आइए सतीश, स्वागत है आपका. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. So good morning everyone, and we are welcoming you for the prestigious Kodical Premier League Season 3, which is proudly organized by Vishal cricketers Kodical, as they are celebrating their silver jubilee, and they wanted to make this silver jubilee a memorable one, and so that they are done all hard work to organize such a wonderful cricket tournament in the name of Kodical Premier League Season 3. After that very grand inaugural ceremony of this prestigious tournament, we are into the inaugural match, and in this inaugural match we are watching two teams are clashing in the first league match of Kings United as well as Kodical Indians. After winning the toss, Kings United elected to field first, so that Kodical Indians managed to score exactly 37 runs by losing 2 wickets, and over number 4 which is completed. Thank you very much, Gopi. Once again, after a long time, once again we are back into UCG cricket ground, and might be it was the last tournament of the season as well, looks like, and we are into the end of the season, and with the end of the season we were having one good tournament here in UCG cricket ground. Outside the line of leg stump and going to be a wide signal by umpire Roland Pinto. 1+1, 2 more runs which is added to total, and scoreboard now is 39 for the loss of 2 wickets. Kodical Indians, after getting a very good start with the 2 opening very good batters, Yatiraj as well as Afiz, scored 33 valuable runs for the first wicket, and partnership which is broken. Now these 2 batters are in the middle, try to get some good score in the remaining 3 overs. Meanwhile, well within the reach of the batter in dedication, which is offered outside the line of off-time batsman off the front foot, try to hit that one in your extra cover region, but not really moving his feet towards the line of the delivery, and that's why he completely missed out delivery, and there's no possibility of any run. 39 for the loss of 2 wicket. Delhi was outside the line of leg stump, going to be a wide. Does of run out in that occasion. Of course, if the throw is good enough, I think it's definitely going to be the opportunity to become the run out here for the batter Roshan. And he just survived from that run out because the direct hit which is not just missed out. The one wicketkeeper behind the stump not really able to collect the throw, because there's a little bit of wide throw coming from that short fine leg region fielder, so that Roshan survived from that run out. 41 for the loss of 2 wicket. What a fantastic condition out here. Unbelievable, isn't it? After watching 3-4 days of heavy rains in Mangalore, and no one believed that we are having that kind of a condition today, and thanks to the god of sun giving that kind of opportunity and that kind of a light here. This time lofted that one down to deep long off for 4 runs. A lovely shot there from Roshan. Little progression, Chetan right just coming into the line of the delivery, effortlessly play. You know exactly where the fielder is, mid off up in the circle, quite deliberately lofting that one, and he got enough bat on that one, just indicating, we can see that that was a sweet sound which is coming from the bat of the batter, indicating that he not only did hit that one very well, but even he timed very well for that nice looking lofted off drive on drive there from Chetan. Scoreboard jumps into 45 for the loss of 2 wicket here in over number
5 in progress. Again, short balls. This time again, nicely balled. Wicket keeper not really backing up. Chance of run out, but not a really good throw coming from the fielder at backstop. By call by umpire Roland Pinto. One more addition to total addition of that single scoreboard. Now moves on to 46 now for the loss of 2 wicket. Nitesh. And after that expensive first over, as he was looks to be second over, little bit struggling as well. Nitesh. Right around the wicket, across the line of the delivery. Chetan, Roshan tried to swing that one again, not really coming from the middle of the bat, inside edge of the bat. After ball is hitting his leg, and the before the fielder from a short square leg. In fact, he fields the ball enough time for the batter to complete the single. 47 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Nitesh is searching for the right line so far, and is bowling round the wicket from the Biribiri Kudla. And oh, look at that delivery! Absolutely fantastic Yorker one. He's just deserved the wicket for the delivery, but negotiated very well there by the last moment by Chetan in the negation. Quickly realizing Chetan that was a ball, you need to give some kind of respect in the negation. Just putting the ball back into the line of the delivery and surviving from that Yorker line delivery from Nitesh. 47 for the loss of 2 wicket. Again, little bit misjudgment there from Chetan. He thought it might be wide, but the ball is just coming angling away from the right-hander batsman, well within the reach of the batter. And after completion of over number 5, it looks like Kodical Indians are in a good situation. 47 for the loss of 2 wicket. So thank you, DJ. So for the little bit of determination required in the end of each and every over, and now it's the start of the over number 6. Will going to commence from Aloysius D'Souza and one of the big sponsor of this cricket tournament, and the bowler introduced from that, and Mithun, the fourth bowler, has been introduced by the captain of Kings United. The first ball down the leg stump, nothing much to do with the delivery. Seeing the line of the delivery, left that one rightly so, but umpire not missing the opportunity. Srianz to signal the wide. Ratish Raj, our scorer so far, is one of the best and very young talented scorer out here in our commentary box, doing the job. And again one more wide, the little bit morning exercise here for Sriraj, and one more addition. 49 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. Mithun struggling, get his line and land from the Aloysius D'Souza, and lovely shot just over the top of that cow point extra cow division fielder, and before the fielder from the cow point division to run back to field that one, ample time for Roshan to complete that couple of runs. 50 comes up here for Kodical Indians, and they got a 50 in exactly 5.1 deliveries. Not quite getting hold of that one properly, the previous stroke we are talking about, and this time also is on really struggling to get the timing proper. Again that ball is just coming into the batter, the left hand batter, and quite understandable. You can see some part of the cricket pitch, we can see the little bit of wetness still there, and that's why the ball is not really coming to the bat. If the bowlers bowls a good line and land, still they can capitalize that opportunity to get some good deliveries, but still I want to say that, and the condition looks to be pretty good, and maybe the having that much of rains in 4-5 days, no one can imagine that there will be a tournament in UCG ground. But again, just like I'm mentioning about, it's all that Vishal Kodical, definitely they wanted to celebrate their silver jubilee by organizing a successful KPL season 3, and definitely the blessing of God and leading from the fan, we can see that the bright sunshine today in this UCG cricket tournament in Mangalore as well. 52 for the loss of 2 wicket. Again the batsman Chetan coming to the striker's end, and for him one at deep long off, one deep extra cover, deep long on, deep mid wicket.
and that is the four fielders in outside the circle. One a deep backward square leg, and altogether for the bowler's back drive, and the bowler Mithun fails to collect the ball on his follow through, and one more addition to total addition of that single scoreboard now moves on to 53 for the loss of 2 wicket here in over number 6 in progress. 7 overs match as per the decision of the organizers. Again outside the line of off stump, going for the cut in relegation, but the line of the delivery is not that much of easy because that ball is very close to the body of the batsman Roshan, so that he completely missed out that delivery. The wicketkeeper behind the stump completes job Jayant behind the stumps, and there is no possibility of any run. 53 for the loss of 2 wicket. Very good score here for Kodical Indians under the great leadership of captaincy of Yatiraj. They start over a shot. No need to run for that. That was really went like a tracer bullet. Absolutely fantastic reverse stroke played there by Roshan. Nothing wrong with the line of the delivery. Look at that one. I want to see it in the replay. The kind of the exquisite footwork he did in this previous delivery, because that ball is almost targeting into the, look at that one replay, that way that the batsman has got exquisite footwork, and because of the bat speed, we are talking about the speed of the bat is definitely going to be exquisite, and footwork is more than that. It's really exquisite indeed. So because of that he got a boundary in the last delivery of the over number 6. 57 for the loss of 2 wicket. Very good score here for Kodical Indians are looking in a commanding position. Even though they lost the toss, asked by the opposition to bat first, and they are really batted very well. Even the condition is not a bit of encouragement for the batters, but still because of Yatiraj and Hafiz, the 2 opening batters, are laid the foundation. Especially Hafiz is a little bit aggressive. Is hit 1 6 and 1 boundary, and even Yatiraj also hit 1 6 and 1 boundary, and both are complemented each other very well. 14 runs for Yatiraj and 15 runs for Hafiz. Sharat, new bowler. The 5th bowler is been introduced. Started with a slight leg cutter in the relegation, slower one in the relegation, and Jayant is just realizing that the condition of the pitch is very suitable to bowl the slower one rather than looking for some extra pace in the bowling. He bowled a slight leg cutter. Look at that one. This time he left it, but I think the fielder is there. The deep extra cover. Oh, this is not a good effort. This is not a good effort that from the fielder trying for the catch for the single hand. This is not a good to see, and you need to, if you wanted to take the catch, you have to put your 2 hands in the direction of the ball, and that fielder in the relegation, of course a little bit difficult one, but I think in this level you need to take that kind of catches. Catches win the matches, which is one of the great slogan in cricket. This time bowler's back drive, oh, powerfully driven back, and even a very good quick reaction coming from Sharat in the relegation, because when the ball is hit powerfully, it's very difficult. Even I think his ball hit the stomach of the bowler. I think another day, yesterday I saw one in IPL, the one stroke which is hit back to bowler. I think Asaranga, I think, is managed to take the catch, the caught and bowled, when the batsman hits powerfully, and 59 on the board. One more wicket is back into pavilion. This time ball hits straight to the hands of Deep Long on, and wicket number 3 is 59 for the loss of 3 wicket. I think the Santner is the bowler, and we are talking about that cotton bowled and yesterday's IPL, when the batsman, the captain of Royal Challengers, Sanju Samson, I think, is the batter. One hit that one pretty hard back to bowler, and Santner take a very good cotton ball catch, and so here also one opportunity for the Sharar Bharat to take the cotton ball, but ball just missed out. But he got a wicket anyhow. Very next delivery. This time he's looking for the sweep shot. Just beat the infield. Ball running out to the final boundary for 4 runs. Not a good effort there from the fielder. The needed one good fielder when you're having a fielder behind the wicket who can run well.
and that's not a good running here from the fielder. It's not a good chasing, in fact, and ball just winning the race against the fieldsman. Welcome boundary, 63 for the loss of 3 wicket. Runs are coming very freely here for the Kodical Indians in this particular over. The over number 6 is really very good. Oh, one time clean him up. Good comeback. Very good comeback here by Bharat. Bowled a quicker one this time. He's quickly realizing that is a bowling a slower one, not that much of enough here to restrict the runs. So he's trying for the quicker one. He got a wicket, and one more wicket is back into pavilion. So that's it. The innings is completed. There 7 overs quota, and Kodical Indians managed to score 63 now. 63 for the loss of 3 wickets, and that means 64 is going to be, which is the target for Sure. Thank you very much, Shruti. So for in the middle of every over, every innings, Shruti will going to entertain you, and she will going to join in this cricket tournament as well, so that ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 64 ರನ್ನ ಗುರಿ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಕಂಡ ಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಲಕಂಡ ಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ as well as Team Srianz, and meanwhile 64 is going to be a target for Kings United, and wait and see how well they will going to get the target. Meanwhile, change in commentary box as well before the innings will going to start. It's a time for Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 64 the target for Kings United set by Kodical Indians. At batted first they managed to score 63 runs in their stipulated 7 overs and they set a victory target of 64, and as far the required run rate is concerned, exactly 9.15 runs per over they have to score for victory in their stipulated 7 overs. 64 runs they have to score and their innings now going to start. Their openers are the crease Sagar and Muhammad Ali. Meantime the bowler is Swartak और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त स्वार्थक तैयार. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई पहला पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत. ओवर की पहली गेंद स्वार्थक सागर के लिए और दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद थी, इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में. एक रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, सेकंड रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले बल्लेबाज पहुंच चुके थे. अगर थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचता तो शायद कुछ बात वहां पर बन सकती थी, लेकिन थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर और बल्लेबाज दूसरे रन यहां पर सफलता पूरा कर चुके थे इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचे और विकेट कीपर विकेट को उड़ाए. बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके. लेग बाय इस वक्त घोषित अंपायर द्वारा 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 2 रन बिना से नुकसान के. निस्संदेह बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत किंग्स यूनाइटेड को, अगर उन्हें इस 64 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है निर्धारित 7 ओवर में. और जहां तक सवाल है माहौल का, तो क्रिकेट के लिए पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई और अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर सिल्वर जुबली 25th ईयर दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फैंटास्टिक cricket tournament by Vishal cricketers Kodical in the name of Kodical Premier League Season 3 2022. अगली गेंद स्वार्थक की और साइड पर गेंद का इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग, इस बार जरूर उनका विकेट यहां पर गिरेगा. नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज सीधे देखते रह गए फील्डर की ओर और स्ट्राइकर के बल्लेबाज सीधे दौड़कर आए नॉन स्ट्राइकर की ओर. इस बीच ये विकेट यहां पर गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज सागर और पहला विकेट यहां पर खो चुका है किंग्स यूनाइटेड 2 रनों के ऊपर. It's 2 for the loss of 1 wicket. So Mithun, the number 3 batsman is now comes out to the middle और निस्संदेह यहाँ पर मिथुन को मोहम्मद अली के साथ मिलकर एक साझेदारी इस वक्त निभानी है अगर उनके टीम को उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर करना है तो. और देखना है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं. और स्वार्थक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ कटर गेंद गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला. इससे पहले कि पॉइंट पर कुछ मिसफील्ड के बाद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ एंड बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और अब स्ट्राइक लेंगे मोहम्मद अली और गेंदबाज स्वार्थक की गेंदों का वो सामना करने के लिए तैयार. स्वार्थक दाहिने हाथ ओवर द विकेट यहां पर गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद अली के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और स्वार्थक का गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट पर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर जब तक वो गेंद को काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड करे और थ्रो करे नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास किया था और इस बार कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त करते हुए स्कूप किया था गेंद को एंड फील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट पर और 2 रन बल्लेबाज
मोहम्मद अली यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्वार्थक एक बार फिर से मोहम्मद अली के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया, फील्डर माफ कीजिए गेंदबाज द्वारा, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्वार्थक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए यह गेंद चिप गया लंग ऑफ पर और गेंद इस वक्त सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर टकरा चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का यहां पर लग चुका है और मोहम्मद अली जो बल्लेबाज थे जिन्होंने छक्का लगाया, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए उछाल दिया इस वक्त लंग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट खोने के बावजूद यहां पर एक बेहतर शुरुआत कर चुका है किंग्स यूनाइटेड। 12 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 12 for 1 आफ्टर फर्स्ट ओवर। और जहां तक सवाल है दूसरे ओवर का, इस वक्त चेतन गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद लेकर तैयार, ऑप्शन से बाहर गेंद को स्कूप किया, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। गेंद इनफील्ड को क्लियर करते हुए निकली थी कवर पॉइंट पर और एक टिप्पे के बाद जब तक पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 का यहां पर शानदार प्रगति होती हुई, और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने इस शानदार श्रृंखला का यहां पर आयोजन किया है और इस श्रृंखला का पहला दिन का पहला मैच का द्वितीयार्ध यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज चेतन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये फुल टॉस, पुल दैट वन एंड ही फिनिश द स्ट्रोक इन स्टाइल। फुल टॉस गेंद पर जो इस वक्त ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो ट्रीटमेंट उन्होंने किया, सही इलाज करते हुए गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। और मोहम्मद अली इस वक्त काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए छक्का नंबर 2 उनके बल्ले से लगता हुआ स्कोर बोर्ड छलांग लगाकर पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर प्रगति पर। चेतन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए एक बार ड्राइव किया यतिराज के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पर। अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़े अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, स्ट्रोक को चेक किया था, और यतिराज जो फील्डर मिड ऑफ 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद थे, ऊपर की ओर छलांग लगाकर जरूर उन्होंने गेंद को लपकना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। चेतन की गेंद, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त जगह बनाते हुए, और गेंद को मिड ऑफ पर जब तक यतिराज अपनी बाईं ओर जाकर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 21 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ किंग्स यूनाइटेड। और जहां तक सवाल है बल्लेबाज मोहम्मद अली का, तो इस वक्त वो काफी आक्रामक नजर आते हुए 2 छक्का अब तक वो झड़ चुके हैं, और चेतन ने एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद, बेहतर गेंदबाजी, एब्सोल्युटली परफेक्ट डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी मौके पर इस धीमेपन को मोहम्मद अली नहीं समझ पाए और गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली, और गेंद उनका टॉप एज पर टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर लपक ली गई, और एक बेहतर स्लोवर गेंद के जरिए गेंदबाज चेतन ने विकेट
प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 21 for 2 इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो नए बल्लेबाज का यहां पर आगमन हो चुका है और इस बीच डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ जयंत नए बल्लेबाज। और जहां तक सवाल है ओवर का, तो दूसरा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 21 for 2 after 2 overs for Kings United chasing the victory target of 64 in 7 overs. They are scored 21 in the first 2 overs. And let's straight away coming back to the equation. और अगर इक्वेशन की ओर नजर डालें तो 5 ओवर का खेल बाकी है और 5 ओवर में चाहिए उन्हें 43 रन, 43 रिक्वायर्ड इन 5 overs with a required run rate of exactly 8.40 runs per over. So the next match will be played between team Srianz versus Kalakanda Sia Strikers, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. टीम श्रेयांस और कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के सर्व खिलाड़ियों से मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें यहां पर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। अगला मैच इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा, कृपया खिलाड़ी ध्यान दें। और यहां पर तीसरा ओवर शुरू होता है, थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। और पहली गेंद लेफ्टी गेंदबाज, ओह एब्सोल्युटली परफेक्ट आउट कटर एंड अ फैंटास्टिक वर्क बिहाइंड द स्टंप्स। दिस इज एन फैंटास्टिक वर्क बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर। धीमी गेंद थी इस वक्त और कहना पड़ेगा लेग कटर गेंद। इस बार गेंद को फ्रंट फुट पर जाने के बाद खेलना चाहता लेकिन धीमेपन को समझ नहीं पाया और जैसे ही गेंद टिप्पा खाई अपने दिशा को बदलते हुए घुमाव लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में और विकेट कीपर चेतन जो थे तुरंत गेंद को कलेक्ट करते उन्होंने विकेट चटका दिया और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका। बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग और 21 रनों पर तीसरा विकेट हो चुका है। इट्स 21 for 3। इब्राहिम नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त किंग्स यूनाइटेड के लिए क्रीज पर मौजूद और इस बीच प्रतीक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद फुल टॉस। इस बार ने स्ट्रोक को रोक लिया था, अंतिम क्षण में गेंद को खेल दिया इस फुल टॉस गेंद को और इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 22-22 नाउ for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी किंग्स यूनाइटेड के लिए। 42 रन और बनाने हैं बचे हुए 4.4 ओवर में और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग हिट लेकिन गेंद फील्डर के पहुंच से बाहर कवर पॉइंट पर जब तक थोड़ी सी मिसफील्ड और लेकिन इस बार 1 ही रन से बल्लेबाज संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 27 balls left in overall calculation in their innings and 41 more runs now they have to score for victory। 27 गेंदें 41 रन और बनाने हैं। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया विकेट से हटते हुए डीप मिड विकेट पर। फील्डर पीछे दूसरे रन के लिए सोच रहे हैं लेकिन नहीं मिलेगा और थ्रो पहुंच चुका है गेंदबाज के हाथों में और अंतिम क्षण में दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट। 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर
3 in progress. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीची रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला और प्रतीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद सीधे टकरा चुकी है स्टंप्सों पर, उनके पैरों के बीच से गेंद इस वक्त निकली और सीधे टकरा चुकी है ऑफ स्टंप पर। गिल्ली बेल डिस्टर्ब होता हुआ और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, it's 24 for the loss of 4 wicket, 4 overs remaining in the overall calculation in their innings, and in remaining 4 overs they have to score 39 more runs for the victory, and the asking rate is now gone up to exactly 9.75 runs per over. तो 4 ओवर का खेल बाकी, देखते हैं उनकी पारी में इन बचे हुए 4 ओवर में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर पर वो माइक्रोफोन पर आगे का कोडिकल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और सतीश, द इक्वल बैटल कंटिन्यूइंग, तख्ता थोड़ा सा यहाँ पर भारी लगता हुआ कोडिकल इंडियंस का, लेकिन मैं समझता हूं बचे हुए 4 ओवर में 39 रन बनाने, 39 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 24 डिलीवरीज, और मैं समझता हूं यहां पर कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी जरूर होगी किंग्स यूनाइटेड के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें या इस मैच में कमबैक करना है तो। So thank you very much, Gopi. Exactly, you were mentioning about if they wanted to come back for team Kings United, and they wanted to get some the big overs, in the sense big overs that required run rate is 10 runs per over, and wait and see how well they will go to get that 10 runs per over, which is the required run rate. This kind of dotted deliveries, I think definitely the pressure is really creeping up for United if they wanted to win the Kings United against Kodical Indians from the far end. Right arm over the wicket, Chetan bowls, and the batsman this time tried to toss that one in the onside region. Again, he got a little bit bad in the relegation, so that one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 26 on the board for the loss of 4 wickets. Chasing of 64 to win this match. Still they are struggling in the middle. And here is the next one. Right arm over the wicket. It was this time he lofted it on over the top of the extra coverage, and ball running down to deep extra cover. Before the fielder from the deep cover point region to run across to field the ball. Ample time for the batter to complete the second. Now going for the third as well in the form of overthrow. The bowler tried to make the run out by throwing the back and throw, but ball just missed the stumps, and in between the batters are not really missing the opportunity to convert that 2 into 3. So with that 3 valuable runs, scoreboard now moves on to 29 for the loss of 4 wicket here in over number 4 in progress. Chetan again bowling from the far end, right arm over the wicket, ball straight, bravo him, clean him up without seeing the line of the delivery, without coming into the line of the delivery, just swinging the ball against the line, and pays the penalty for that. But Chetan not really missing, you miss high hit, and he hit the stumps. Wicket number 5 is back into pavilion. So Ibrahim, I think a little bit, Kishan is back into pavilion looking for the expansive drive, and he pays the penalty for that. Samit is a new batter, lovely shot over the top of that wideish mid-on fielder before the fielder from the long on to run across to us. Wideish long on to field the ball. Ample time for the batter to complete the single, and with that single, scoreboard 30 for the loss of 5 wicket after completion of over number 4.
So match number 2 of the day, number first will be going to play against the team Srianz versus Kalakandasia Strikers. And those who are not signed the official chart, I request to complete the formalities of signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲಕಂಡಸಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Swartak will going to continue. In fact, his bowling is second over. He bowled first over and is conceded 10 runs and picked up 1 wicket. Now he is bowling his second over from the Birwir Kudla end. One more sponsor of this cricket tournament, KPL Season 3 2022. Right arm over the wicket delivers. Again that was a little bit outside the line of leg stamp batsman going for the drive, but this time he missed it completely. But umpire not missing here. Umpire Roland Pinto seeing that ball missed the bat but hits the leg. So leg by call by umpire, and our scorer receiving the signal from umpire, and one more addition to total 31 for the loss of 5 wicket here in over number 5 in progress. Umpire Roland Pinto just watching the width of the bat of the batsman. As per the rules and regulation, 4.25 inches allowed, but not more than that. And here is again Pratik, right arm over the wicket delivers. This time driven that one Swastik in fact is the bowler, and right in the gap, in fact before the fielder from the mid wicket to run across to his left. Rafiz the fielder and the deep mid wicket to collect the ball, and ample time for Ibrahim to complete the 2 runs. Ibrahim trying his level best, being one of the experienced players for the side of Kings United. He just wanted to get his runs for his team, and so far they're struggling as far as the required run rate is concerned. Now 33 for the loss of 5 wicket. Still long way to go. Another 31 more runs required for the victory. Swartak bowls, this time lofted at one down to deep long off, not more than a single. Good piece of fielding by Roshan from the deep long off, charging into the ball. They needed just such kind of the fielder in the deep who can run well, run quickly, athletic fielders, which is very much required in the deep. And one more single. Roshan is a fielder. 34 for the loss of 5 wicket. Swartak, right arm over the wicket to Samit. Samit this time chipped that one in there safely, right in the gap. Again the long chase here for the fielder. Rafiz once again is in the picture. He's a busy customer in the deep. Again the ball is going regularly to that area, and again the couple of runs here for Samit, and with that couple of runs Coburn now moves on to 36 for the loss of 5 wicket. Another 28 more runs required for the victory for Kings United to win this match, and this is the over number 5 in progress. 15 balls remaining. This time coming down to Pratik using his feet. Wicketkeeper fails to collect the ball, Pratik, but not missing the opportunity here. Umpire Roland Pinto not happy with the batter, as he was regularly running in protected zone, so that umpire just Roland Pinto asking him to not run in that area. And scoreboard now 37 for the loss of 5 wicket. 27 more runs required for the victory in remaining 14 deliveries to spare. Again went for the reverse sweep, again not getting hold of that one problem. Obviously missing the ball completely from the bat. Doesn't run out, direct it, but batsman is safe, and umpire again signaling here as a leg by. So with the addition of that single, scoreboard now moves on to 38 on the board. So over number 5 completed, chasing 64 to win this match. Still they're struggling in the middle, and now last 2 overs they required another 26 runs to win this match.
I request the captain of team Srianz, please report here in commentary box immediately. Srianz ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ commentary box ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ. The next match, team Srianz takes on the challenge of Kalakanda CS Strikers for the next match. Once again, welcome back, and again we can see that it is a bright sunny morning, and we are again looking in such a good condition today. Absolutely perfect condition after a long time, and after that 5 days of heavy rain here in Mangalore, we are definitely blessed with the God's grace, as we got a bright sunny morning out here in this most beautiful UCG cricket ground, and we are watching one most prestigious Kodical Premier League season 3 2022 as Vishal cricketers Kodical celebrating their silver jubilee, and they wanted to make this the memorable one, and so far it's a very good cricket is going on here, and we are having a live telecast of this cricket tournament. Those who are failed to come here to watch the match live, they can watch this tournament live from your mobile. You just go to the Abhimata YouTube channel, one of the most popular YouTube channel as far as cricket is concerned, underground cricket is concerned, and one of the most popular and very quality YouTube channel having a live telecast of this cricket tournament, and the cricket lovers can enjoy the match here. The first ball of the over number 6, as I was looking for the on drive, of course not more than a single. He's got a connection but not getting the distance what he's looking for, and after one bounce which is collected by the deep long on fielder, and with the addition of that single scoreboard numbers on to 39 on the board for the loss of 5 wickets. Still long way to go, and another 25 more runs required for the victory to win the match. Using his feet this time, Samit not quite getting hold of that properly. He uses his feet, but the bowler Roshan is not really providing the opportunity to freeze his arm, and he just got a single for that. With a single scoreboard now 40, that means 24 more runs required for the victory in 10 deliveries. Roshan. Again one more delivery which is outside the line of off stump, and not the delivery where the batsman can get any kind of runs. A little bit misjudgment there by the Ibrahim, is a settled batsman in the middle. So far is trying for the big shot but not getting that much of result for that particular delivery. Again Roshan, right arm over the wicket. Ibrahim looking for the big drive, appeal for leg before wicket, but ball certainly going down the leg stump. Rightly so, umpire not interested to raise his finger, but he's interested to raise his leg to signal the leg by, and Ratish Raj is our scorer, just receiving the signal from umpire Sriraj. Scoreboard numbers on to 41 for the loss of 5 wicket, and still it's some big hits badly required to win the match. Again right arm over the wicket, using his feet and not quite getting hold of that one properly. One more single. ದಯಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Down the leg stump, going to be wide. They will going to get another extra run. As far as the extra is concerned, it's going to be a 1+1, 2 wides with the addition of that 2 extra runs. Scoreboard numbers on to 44 on the board. That means 20 runs required for the victory. One big shot can change the complexion of this match. Wait and see. Roshan from the far end, from the Aloysius D'Souza end. Right arm over the wicket, using his feet straight round the ground. Again not quite getting hold of that one and again one more single is added. Total going for the second mix up, and again the batter survived the extra bounce in the occasion for the wicketkeeper behind the stump, and one more addition to total. Ali ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಓಲಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ.
Thank you, DJ. So welcome back once again for the KPL season 3. So last over remaining now in the innings of Kings United. In the last over they have to get another 18 runs to win this match and wait and see how well they will going to get. A lot of dignitaries out here in the community box as well, and we have one of the big supporter of Underarm cricket, Nandan Kulshekar is one who is a big supporter of Underarm cricket, and we needed that kind of support from all cricket lovers to make this Kodical Premier League Season 3 is a successful one. Meanwhile, one more wicket is back into pavilion of Kings United as the bowled out and the wicket run out into correction, run out taken place, and wicket number 6 is back into pavilion. 47 for the loss of 6 wicket. What a wonderful opportunity is provided by Vishal cricketers Kodical. It's a belt area match, belt area, the cricket tournament, and everybody knows that Kodical has got a lot of talents in that region of Kodical, just like the Kiran Kodical, our chief guest corporator, just mentioning about when he says the speech, inaugural speech that he is just talking about the Kodical has got a lot of talents in that region, so that it's a good opportunity, the very good platform for all the talents to showcase their the performance in this the big event, KPL Season 3. One more wicket is back into pavilion here, 48 for the loss of 6 wicket. So welcome back again. The last over is in progress. Some runs are badly required here for United if they want to win the match again. Not more than a single. Ball went straight to the hands of short mid-off, and with that single, scoreboard now moves on to 49 on the board. Just one shot of 50 and 15 short of the target. And the last 2 deliveries left, and all we can see that the formalities left in this game. Again went for the big shot. Is gone. One more wicket is back into pavilion. So one more wicket is back into pavilion, and the one delivery which is can see that fantastic one. Devam Pratik is a fantastic bowler, and we can see that in the replay the way that he is turning the ball, he's just exploiting the conditions so beautifully, and he got the wicket. Left arm again down the wicket, delivers last delivery of the innings, and that's it. It's a victory, and it's a victory, comprehensive victory for Kodical Indians defeating their opposition by 13 runs, and I think it's a big margin victory for Kodical Indians because under the leadership and the captaincy of Yatiraj, I think is a happy captain to see in his face. He's started the journey in this league matches with the victory. It's always going to be a good news and good start, and each and every the teams wanted to get the same start in the league matches, and I think the Kodical Indians are really happy with the performance here. They won the match by 13 valuable runs against Kings United, and Kings United, they lost their first match, but they have to come with a lot of positive frame of mind when they're going to play the second matches. That's it for the day, first match of the day number 1, and now it's going to be a second match of the day number 1. Now it's a time to announce the man of the match. The man of the match, which is goes to, I think it looks like a little bit the bowlers dominated game,
because whenever the bowlers picking up 4 wickets, it's equal to 50 runs which is scored by the batter. So that I think Pratik is the one who picked up 4 wickets in just 6 runs in 2 overs at the economy of 3 runs per over. So Pratik is judged as a man of the match. And Pratik of Kodical Indians, I request please come forward and collect your man of the match award from our chief guest, Mr. Elusius D'Souza, and is the proprietor of Jack's Panjimagero and one of the big sponsor of this cricket tournament as well. And it's over to Shruti in the presentation ceremony. ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ದೀತೇರು ಟೆಂಪೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೀತೇರು ದಯಮಂತ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿ ಟೆಂಪೋ ಪಾರ್ಕ್ ದೀತೇರು ಅವರಿಂದ ದಯಮಂತ ಏನತ್ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ धन्यवाद सतीश। तो मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है। द सेकंड मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट विल नाउ गोइंग टू बिगिन बिटवीन टीम श्रेयांस वर्सेस Kalakanda Sia Strikers, and news is here from the center that the skipper of team Srianz, after won the toss, he elected to field first, and the openers of Kalakanda Sia Strikers at the crease are Mahesh and
प्रशांत. And the bowler is Yatish now, and the first ball of the match is now coming up. So the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद इस वक्त लेग स्टंप पर गेंद को बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हो चुकी है. अगर गेंद को ठीक तरह से फील्ड कर लेते फील्डर तो निस्संदेह वहां पर रन आउट हो सकता था स्ट्राइकर या नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन अंतिम क्षण में हड़बड़ाहट में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली फील्डर ने, और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज इस गेंद पर न सिर्फ बचे बल्कि एक रन भी उन्होंने प्राप्त किया. तो इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. और एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेटर लाइन, एंड ही गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और गेंद को फ्रंट फुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई निकली काफी तेजी के साथ और सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जाकर टकराती हुई. और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में प्रशांत का विकेट गिर चुका है और पहला विकेट यहां पर खो चुका है कलाकंदासिया स्ट्राइकर्स. इट्स 1 for 1 इन द फर्स्ट ओवर. ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕಣ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ गुरु प्रसाद इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस वक्त यतीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पिछले गेंद पर वो प्रशांत का विकेट प्राप्त कर चुके हैं और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. बिरवेर कुडला इनकी ओर से दाहिने हाथों पर तो विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को रक्षात्मक तरीके से इस वक्त ढकेला और गेंद को फील्ड कर लिया गया. इस वक्त शॉट कवर पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और गेंदबाज यतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद एक बार फिर से गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन इस बार मिड ऑफ पर गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज यतीश फेंक चुके हैं और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद एक बार फिर से अंदर की ओर आती हुई गेंद को खेला बड़ी मुश्किल के साथ अंतिम क्षण में बैकफुट पर जाने के बाद, और गेंद को इस वक्त मिड ऑफ पर फील्ड कर लिया गया. तो 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में यतीश फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुरु प्रसाद के लिए क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार हवा में कवर पर रन्स नहीं मिलेंगे. एक टिप्पे के बाद गेंद को अपने दूसरे प्रयत्न में फील्ड कर लिया फील्डर ने और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. सुजीत वहां पर फील्डर थे जो कि एक बेहतर फील्डर के रूप में जाने जाते हैं और यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 इक्के यहां पर दिखाई देते हुए स्कोर बोर्ड पर. 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट. और जहां तक सवाल है दूसरा ओवर का, तो देखते हैं दूसरा ओवर कौन शुरू करता है. जैक्सन की ओर से तो एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नवीद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार महेश. तो फील्डिंग में जमावट चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार. नवीद फील्डिंग में जमावट करने के बाद अभी भी 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की पहली गेंद नवीद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी अंदर की ओर आई, लेकिन गेंद को खेलने के प्रयास में काफी हद तक सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं किया और गेंद बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद फील्ड कर लिया गया विकेट कीपर द्वारा. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और एक बार फिर से नवीद तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट महेश के लिए इस बार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट.
दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट. अगर इस कैच को वो कन्वर्ट करते हैं तो निस्संदेह एक बेहतरीन कैच के रूप में ये कैच जाना जाता. और यहां पर निस्संदेह मैं देखना चाहूंगा रिप्ले में, देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त खेला था. एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग मैग्निफिसेंट एफर्ट. और जहां तक सवाल है इस स्ट्रोक का, तो रन इस वक्त मिला एक. और एक बार फिर से गेंदबाज ड्राइव किया और मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, रन आउट का खतरा. लेकिन अंतिम क्षण में मैं समझता हूं बल्लेबाज यहां पर पहुंच चुके हैं. तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर. जोखिम भरा रन यहां पर पूरा करते हुए महेश, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर यहां पर प्रगति पर एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए नवीद. और तो निस्संदेह एक बेहतरीन प्रयत्न. 2 गेंद पहले
So वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर सम डिस्टर्बेंस। और यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पर लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकली और वाइड का इशारा अंपायर का। तो इस वक्त कलाकंदा का स्कोर पहुंच चुका है 14 रनों पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज इस वक्त यतीश, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 1 रन प्रदान किया था, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था और अपना दूसरा ओवर यहाँ पर फेंकते हुए गेंद बैकफुट पर गया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त पंच किया और इससे पहले कि डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए यतीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर स्टंप्स को कवर करते हुए शफल होते हुए गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ लंगॉन पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर और तीसरे ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। कलाकंदा स्ट्राइकर्स still they are searching for the right track. Just 16 runs they scored in their first 3 overs for losing 2 wickets and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और देखना यह है कि बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई टीम श्रेयांस के खिलाड़ियों के बीच कि अगला ओवर किसको दिया जाए और एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी सौंपी जा रही है नवीद के हाथों में, जिन्होंने भी पहला ओवर अपना बेहतरीन फेंका है और अपनी अगली दूसरी ओवर लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में फील्डर्स इस वक्त छाते हुए और चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ उनकी पारी में। गणेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, जहां तक सवाल है इस वक्त मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडर मौजूद, मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग और पॉइंट इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और अपनी ओवर की अगली गेंद पहली गेंद लेकर नवीद इस वक्त तैयार था। यहाँ तो ऊपर विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, डाइविंग लगाने के बावजूद गेंद को नहीं रोक पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न इस वक्त किया फील्डर ने और इससे पहले की गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। निस्संदेह बेहतरीन प्रयत्न इस वक्त किया था डाइविंग एफर्ट के जरिए फील्डर ने पॉइंट पर और लेकिन गेंद अंतिम क्षण में उनके पहुंच से बाहर और आखिरकार रन इस गेंद पर बल्लेबाज को मिले 2 और स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नवीद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद विकेट बिखेर दिए इस वक्त विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग इस गेंद पर विकेट कीपर ने की लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित और इस वजह से कोई क्षति नहीं। यहां पर 18 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 की शानदार प्रगति यहां पर करते हुए, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 25th ईयर। और इस बीच लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे गेंद को फील्ड कर दिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है नवीद का, एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गणेश सामना करने के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से बेहतर गेंद थी, धीमी गेंद अपील लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई और बल्लेबाज को कोई क्षति नहीं इस गेंद पर।
बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए नवीद और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज गणेश इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का 19 2 विकेट के नुकसान पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट स्टिल द बैट्समैन ऑफ Kalakanda searching for the right track and a good fantastic piece of bowling performance continuing here from the opening bowlers of team Srianz और गेंदबाज नवीद अगली गेंद ऑन साइड पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर लंबा छक्का इस वक्त लगता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और बल्लेबाज थे जिन्होंने छक्का लगाया महेश तो लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी सफल होते हुए गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद की सही गति को भापते हुए गेंद को उछाल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ 25 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कलाकंदा स्ट्राइकर्स की पारी में लगता हुआ महेश के बल्ले से 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 25 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स with average of exactly 6.25 runs per over they scored in their first 4 overs और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश को आइए सतीश धन्यवाद थैंक यू Thank you very much again Gopi and Shruti and again Team Srianz after winning the toss they elected to field first and so far it's the equal battle is on in fact the 25 for the loss of 2 wicket after completion of over number 4 just 3 overs remaining in the innings of the Kalakanda CS strikers and wait and see how many runs they will go and score. Lovely shot, look at that one, absolutely that was a perfect placement, even the fielder trying his level best but again the ball just winning the race against the fielder. Lovely cricketing stroke, in fact it's one of the most difficult stroke to play as we are talking about the switch it is concerned. Look at that one, the way he is got the position, absolutely not only got a good position but he picking up that line and length so good and even the fielder from the deep extra cover region, deep cover point region try to reach down at deep backward point but ball just winning the race against the fieldsman and got a welcome bound here. 29 for the loss of 2 wicket across the line of the delivery wanted to swing that one on the onside region and wicketkeeper behind the stump did this time managed to remove the bails but I think no question of getting any result in favor of the wicketkeeper and the fielding team. So good comeback there by the bowler in the relegation Kiran Raj. And Kiran Raj, everybody knows, is one of the most senior most player, got a lot of experience behind him and that's why he got an ability, he got a potential of coming back because he can't do anything whenever the batter playing some unorthodox cricketing stroke like a reverse stroke, very difficult for the bowler to survive. Again Kiran Raj ball, beautiful ball, absolutely perfect one, that was a plumb in front of wicket, no doubt at all, quicker one, straighter one and this time batsman Ganesh after playing a good innings is back into pavilion 29 for the loss of 3 wicket. That was a really good piece of bowling there from Kiran Raj, quickly realizing that the batsman little bit is in an aggressive frame of mind and he just managed to bowl that in a right line and moving the ball from almost in a good length spot and batsman tried to swing that on the onside and missed it completely but I think he's played a very good innings for his team. 29 for the loss of 3 wicket. Kiran who scored 11 valuable runs. Little correction, Ganesh who scored 11 valuable runs and now Bhagwan came into bat here. And it's a very difficult condition actually. When Ganesh came into middle, they lost 2 quick wickets for just 5 runs and then Mahesh and Ganesh, they really played as per the condition required and they got a very good partnership for the 4th wicket. Here is the second one, little bit correction. Look at the turn of that delivery from Kiran Raj, but umpire exactly know that ball is just going away from the line of that outside the line of leg stump, the wide line, and rightly so white call by umpire. Scoreboard numbers on to 30 for the loss of 3 wicket. That brings Mahesh into strike now. Kiran Raj, right arm over the wicket, off the backward. Oh, mix up! But this time the batsman survived. The end of the throw is not the good egg, I think so. And ball, definitely that ball might be returned to the hands of
the wicket keeper, and but the fielder. Sujit is thought that it might be a chance of run out in the non-strikers, and but batsman survived. This time Bhagwan just improvising quite beautifully and closing the face of his bat. Ball is outside the line of off stump, but Bhagwan know exactly the kind of stroke he going to implement, and he got a success as well, and he managed to get the single down to short square leg region. 32 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Again Ratesh correction, and Kiran Raj bowls at delivery. Hello. Hello. Hello, my check. Hello, check. I request an electrician. Hello. I request an electrician. Please report here. Electrician. Hello. Check. So over number 6 will going to continue from the far end. So meanwhile, one more wicket is back into pavilion as the batsman Mahesh is looking for the big shot down to deep long on, but not really getting the distance what he's looking for. He got elevation, but fails to get the distance what he's looking for. And one more wicket is back into pavilion. 34 for the loss of 4 wicket. And this is over number 6 in progress. Hello. So for next delivery, Bhagwan just watching the ball till the last moment, seeing that ball is going wide outside the line of off stump. Left that one rightly, so one more addition. 35 for the loss of 2 wicket. Again, 4 wicket in fact outside the line of off time. One more similar delivery, identical mirror display of previous one. The same line and length bowler. A little bit struggling here, Bashir, after getting a wicket in the first delivery. Quite unfortunate, isn't it, when you got a wicket for the first ball and then you're bowling 2 wides ball after that. And Bhagwan facing next delivery from Bashir from the LOCS D'Souza. And the lovely shot from Bhagwan. Beautifully played that one. No need to run for that. Ball is running down to deep. Backward point boundary for 4 runs. Just picking up the line and length so quickly by playing exquisite reverse stroke. What a beautiful stroke that one from Bhagwan. Absolutely fantastic. He's a very talented young player for the side. And the way that he's picking up the line is so quickly, isn't it? Exquisite footwork. And Kalakanda cycles are getting some runs in this slog overs. Again, right arm over the wicket delivers nicely. Turns going to set to the hands of fielder, but direct hit. Umpire says not out rightly, so the Bhagwan managed to land his the bat in the right time. This time chance of run out in the strikers, and the first attempt and second attempt, Kiran Raj a little bit struggling actually the first attempt to remove the wicket, and the second attempt he managed to complete the job, but again the Bhagwan is out of a crease and he's back to Pavilion. Played a small cameo, but a very good innings which actually in the end played by Bhagwan. 41 for the loss of 5 wicket.
So 41 for the loss of 5 wickets, and Bhagwan back into pavilion actually try to get another extra runs in that situation, but not quite able to complete that second run. So he's finding himself short of his crease. The wicket number 5 is back into pavilion. 41 for the loss of 5 wicket. Umpires for this cricket tournament, Arish Patil now as a field umpire, along with him Srianz, two very good umpires, and along with the most experienced campaigner as far as umpiring the field is concerned, Roland Pinto, out here in commentary box as a third umpire, and the score now is a 41 for the loss of 5 wicket. Here is announcement from the supporters of Kalakanda. Rohit Moili announcing 500 rupees for 6, and that's only for Kalakanda CS strikers. This time we lost it, but just missing the 500 rupees, but the fielder not missing the catch here, and there might be the little bit excitement shown here by Akshay. In fact, Ilvacation Shivaram, he tried to get that one over the deep long on region, but he fails to get the distance right as a deep long on fielder complete the job, and he just missed out that 500 rupees which is announced by Rohit Moili, and the supporter of Kalakanda Sia strikers, but unfortunately for the batter, for the fortunity of the Rohit Moili, still his 500 rupees safe in his pocket. 42 for the loss of 6 wicket. Bashir, good comeback in this over after 1 wicket and then boundary, the next delivery, and then he bowled 2 very good deliveries followed after that boundary. Bashir, right arm over the wicket to Akshay. Akshay this time, chance here for the field, a short mid wicket, a little bit slow reaction coming from that mid wicket. There might be the opportunity there, and tough one, and the batter got a single for that. So with that single, score number on to 43 for the loss of 6 wicket after completion of over number 6, and last over remaining in the innings of Kalakanda CS strikers. So last over remaining in the innings of Kalakanda CS strikers, and last opportunity for the batters of Kalakanda strikers, CS strikers, to get some 500 rupees cash prize, and Rohit Moili, and one of the supporter of Kalakanda CS strikers, announcing that the 500 rupees cash, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಕಂಡ ಸಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ 6 ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಲಿದೆ. So wait and see which batsman will going to get that 500 rupees. Now last over is in progress, what a delivery that one again from Kiran Raj. He got a wicket for that. So next match, Royal Army versus Kodical Cricket Challengers, and Kodical Cricketers Challengers completed their signatures, and we are waiting for the signatures. Let me correction, Royal Army completed their signatures, and we are requesting Kodical Create Challengers to sign the official charts as soon as possible. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್, and Royal Army already completed the signatures and waiting for the players of Kodical Create Challengers to complete the signatures. So Kiran Raj has got a very good start in the forward number last, as he got a wicket, very good wicket for the first fantastic quick off cutter, and now is bowling second time in this over, right arm over the wicket. There was a wide outside and an off time wicket keeper, diving effort but not quite able to stop the single. That's going to be 1+1, 2 wides added to the total score of Kalakanda CS strikers, 45 for the loss of 7 wicket, and Kiran Raj again back to his bowling mark, right arm over the wicket to the right hand batsman. Look at the work there from wicket keeper behind the stump, absolutely exquisite. It's just in a blink of eyes he complete the job
It's one of the most difficult job, I must say, as far as the technique of collecting the ball around the legs of the batter is concerned. It's very difficult job for the wicketkeeper behind the stump. Whenever we are bowling, you're collecting the ball around the legs of the batsman. We are not having the replay for that, but I want to see that one in a replay. The way that wicketkeeper behind the stump is managed to complete it is a terrific work. Absolutely terrific work. And because that wicketkeeper not really having that much of a good view of that line of the delivery when you are bowling around the legs of the batter, that time I think only good wicketkeeper can complete that kind of job. That was a fantastic work by wicketkeeper behind the stump in delegation. Lovely work, and one more wicket is which is back into pavilion. 45 for the loss of a wicket, and definitely we are later we are giving that the action replay of that. Stamping here again, looking for the second chance of run out, and this time the batter complete that couple of runs in the form of leg bye. That excellent running with the wicket. They're dealing with the last over, so that doesn't want to take any chance to miss the chance, miss the opportunity to get the runs. Again, they're running hard between the wicket, and they're converting that single into two with the excellent running between the wicket. Just grabbing the opportunity and to convert that single into two by both the batters are in the middle. 47 for the loss of 8 wicket, and now last 3 deliveries left in their innings of Kalakanda. CS like still the 500 rupees which is waiting in the pocket of Rohit Moili, and wait and see. And so far I think we are not having that much of the big strokes. Of course the Mahesh is the only one who got a 6 and in his innings, and even Bhagwan who scored he played a cameo, scored a 6 run, and he got us 1 boundary as well. And again, nice looking drive, but not more than a single in the relegation. With their single scoreboard numbers are to 48 now for the loss of 8 wicket here in over number last in progress, and last 2 deliveries left as Kiran Raj, right above 1 wicket, wide of the crease is bowled again. That was a full toss outside the line of half time. Wicketkeeper, not a good to see that wicketkeeper missing the opportunity and conceding extra runs in the last overs, and Kiran was a bit struggling. 50 comes up. 50 comes up here for Kalakanda CS Tigers, and 50 came in the last over. There are 2 deliveries to spare. Karthik looking for the on right. This time wicketkeeper the face to collect the ball neatly. Wide call by umpire. The opportunity for the stump out, but again the ball just missing out of the hands of the wicketkeeper. 51 for the loss of 8 wicket. Again, this time well within the reach of the batters. Just getting inside the line in the relegation. So last delivery of the innings of Kalakanda CS Strikers are now coming up. One more lovely shot driven down to deep long on, but they're going for the second as well. Fumble from the fielder, and they completed a couple of runs for the final delivery of their innings. So over number 7 completed. That means Kalakanda Strikers very happy to see that they got a good total, and the total score of 53 runs, and they set a target of 54 to win the match for the opposition team Srianz, and wait and see how team Srianz will going to get their 54 in the stipulated 7 overs. Back in the game.
I request all the players of Create Challenges Kodical to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪಂದ್ಯದ 3 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದ 3 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು धन्यवाद सतीश. तो इस तरह से टीम श्रीयांश के लिए इस वक्त 54 रनों का लक्ष्य निर्धारित 7 ओवर में रखा है कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स ने, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होते हुए 54 रन उन्हें बनाने हैं. यहां पर लगभग 7.72 रन प्रति ओवर के औसत से, और देखना यह है कि उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं. आरंभिक बल्लेबाज सचिन और कीर्तन इस वक्त तैयार है बल्लेबाजी के लिए, जबकि गेंदबाजी भगवान इस वक्त शुरू करते हुए. और एक बार फिर से बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका. सूरज जो कि हल्के से बादल जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर इस वक्त छिप चुका है, और यहाँ पर बदली भरा वातावरण जो कि मैदान पर इस वक्त छा चुका है. लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जब तक ये श्रृंखला समाप्त ना हो, यानी कल तक वर्षा यहाँ पर ना आए. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, लेग स्टंप नहीं, बेहतर नहीं थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर थी, काफी बाहर. और इस बीच वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है टीम श्रीयांश के लिए. ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, बैकफुट पर गए, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को ड्राइव किया, गेंद की लाइन को भांपते हुए, और गेंद को बैक टू बैक गेंदबाज ने गेंदबाजी में फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया. और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. बैकफुट पर जाकर खेलना चाहा, लेकिन गेंद इस बात कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए बल्लेबाज को वंचित करते हुए निकली सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कुछ हद तक टर्न लेते हुए. और बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज भगवान द्वारा अगली गेंद के लिए तैयार. बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट. एक बार फिर से तेजी के साथ इस बार रन चुराया बल्लेबाज ने, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर, 2 विदाउट लॉस. और यहां पर भगवान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ द टॉस, परफेक्टली प्लेड, दैट वन गॉन टू क्विक सिंगल, दिस कुड बी ट्रबल. पहले प्रयत्न में अगर विकेट उखाड़ते तो निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े जब तक बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे. बाल बाल इस गेंद पर बचते हुए, और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ उनके खाते में. यहां पर अगर कलाकंदा सिया स्ट्राइकर्स के किसी गेंदबाज अगर हैट्रिक प्राप्त करते इस मैच में, तो उन्हें 1000 रुपए का नकद पुरस्कार विशाल कोट्टारा और रोहित मोइली इनकी ओर से दिया जाएगा. कोई भी गेंदबाज कलाकंदा स्ट्राइकर्स के अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का नकद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा. और इस बार गेंद को स्विंग कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान 4 रनों के लिए. सचिन के बल्ले से यह चौका लग चुका है. इस फुलटॉस गेंद को कबूल न करते हुए गेंद को ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ दिया. डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के बीच गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और एक बार फिर से भगवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर में विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई. इस बार गेंद को ढकेला, इस बीच मिसफील्ड कुछ हद तक, जब तक गेंद को लॉन्ग ऑन पर बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. और ओवर नंबर 1 उनकी पारी का यहां पर समाप्त हो चुका है. सो आफ्टर फर्स्ट ओवर
chasing the victory target of 54 in 7 overs. Steady start made by the batsmen of team Srianz. 8 runs they managed to score after the completion of first over. So 46 more to get in remaining 6 overs. That means 36 balls remaining, and they have to score 46 more runs for victory. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 the asking run rate for them at this situation. 46 to get from 36 deliveries. जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने उनके 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर 25th ईयर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला शुरू हुई और इस श्रृंखला का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ। गेंदबाजी में इस वक्त उतरते हुए गणेश, एक और बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एमएलए प्रीमियर लीग 2022 अगले शनिवार और रविवार को सह्याद्री क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। जो प्रतिष्ठित नेता के फ्रांचाइजी टीम है, 8 प्रतिष्ठित नेताओं के फ्रांचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा लेंगी और इस श्रृंखला के विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रनर्स अप को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और यह श्रृंखला 28 और 29 मई यानी अगले शनिवार और रविवार को सह्याद्री मैदान अड्यार पर खेली जाएगी। तो जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, इस श्रृंखला का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता है और बेहतर गेंद इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को और एक और इस वक्त इनाम घोषित किया गया है कलाकंदासिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के लिए। कोई भी गेंदबाज अगर विकेट उखाड़ता है तो 300 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। यहां पर रन आउट होने से बाल बच चुके हैं। जोखिम भरा रन पूर्ण करने का प्रयास किया था और यशस्वीतम जोखिम भरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए 300 rupees cash prize announced by Kiran Chilimbi for every wicket for the bowlers of Kalakandasiya strikers। इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर गेंद, जब तक फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। ये दोनों सलामी बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए उनके टीम के लिए। दाइना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। गेंद को इस वक्त खेलना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यह गेंद ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति बेहतर ओवर कहना पड़ेगा। इस ओवर में सिर्फ 2 रन गणेश जो गेंदबाज थे उन्होंने प्रदान किए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। बराबर का टक्कर इस वक्त जारी है। 10 रन बन चुके 2 ओवर के बाद। रन्स बनाने थे उन्हें 54 रन जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी। अब रन्स बनाने हैं 44 जबकि 30 गेंदें उनके पारी में बाकी। एंड द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 8.80 रन्स पर ओवर। तो डीजे की मधुर संगीत हमारे कानों को इस वक्त ठंडक पहुंचाते हुए और यहां पर तीसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। पहले गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को चिप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ। स्टंप्स को
कवर करते हुए सफल होते हुए डीप मिड विकेट पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और हेलो 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 ಹಲೋ 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸಚಿಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Hello, hello. So it's 13 without loss at the start of the third over in fact. और गेंदबाज इस वक्त तैयार था हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई काफी बार वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इट्स 14 विदाउट लॉस। शिवराम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 3 लगातार वाइड ओ फेंक चुके हैं यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। इस बार बेहतर गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहा था। हेलो हेलो इस बार गेंद को ड्राइव किया सीधे मिड विकेट पर। रन से यहां पर नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और 2 लगातार डॉट गेंदें फेंक चुके, 3 लगातार वाइड फेंकने के बाद गेंदबाज ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त लगभग छोड़ दिया था अंतिम क्षण में, लेकिन कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। और 3 लगातार डॉट गेंद इस वक्त फेंक चुके शिवराम 3 लगातार वाइड फेंकने के बाद ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना था नीचे लेती हुई गेंद 4 लगातार डॉट गेंदे। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक बाय द बॉलर। हेलो हेलो और जहां तक सवाल है स्कोर का तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 40 और रन विजय के लिए और चाहिए। हेलो हेलो और 25 गेंदें उनकी पारी में अभी भी बाकी। 40 रन मोर टू गेट इन रिमाइनिंग 25 डिलीवरीज। लगभग 10 के आसपास इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर गेंद 5 डॉट बॉल्स इन ए रो एंड फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड। अगर 3 वाइड को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो निस्संदेह ये बेहतर और भी बेहतरीन ओवर ये साबित होता, लेकिन अभी भी बेहतरीन ओवर कहना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 4 रन इस ओवर में शिवराम ने प्रदान किए जिनमें से 3 वाइड थे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के और 4 ओवर का खेल बाकी। और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो 4 ओवर में चाहिए 40 40 टू गेट फ्रॉम 4 ओवर्स। और आइए सतीश आगे का आंखों देखा आप संभालिए। The target seems to be a little bit of a difficult, but not impossible. जहां तक सवाल है 10 रन रिक्वायर्ड रन रेट है और मैं समझता हूं इस वक्त कुछ करारे स्ट्रोक्स आक्रामक स्ट्रोक जरूर खेलने होंगे बल्लेबाजों को। टीम श्रेयांस के बल्लेबाजों को कुछ आक्रामक बल्लेबाजी जरूर अपनानी होगी अगर उन्हें इस मैच में वापस कम बैक करना है तो। Exactly, Gopi. And just mentioning about the requirement, it might be that it was a difficult one. And seeing the condition of today's after that bright sunny morning, it was looking little bit overcast condition. And in this condition, I think getting 10 runs per hour is required. It is always going to be a difficult one, but not impossible in cricket. And one of these batsmen have to play some big strokes if they wanted to win the match. Big strokes in the sense that the calculated risk has to be taken. They need to get at least 1 and 2 big shots in each over if they wanted to back into this game. But you see, the strategy, the game plan from the batters are in the middle. Both the batters are spent a little time in the middle, but they spent the time. They consumed some deliveries as well, but they didn't got that much of run rate which is really required for the team. And now after settle down, they need to look for some acceleration of run rate. First ball, looks like the one fielder from short extra coverage, little bit shouting. He is not happy with the field set. That's why umpire should have called this a dead ball.
far end. From Eloisius D'Souza and right arm over the wicket, beautifully bowled, and the batsman almost is just catched him onto the back foot in the legation. Because of that was a leg cutter, is a very good one, and batsman off the back foot not really did that one as per the merit of the delivery, but he managed to rotate the strike in the legation, so that scoreboard numbers are to 15 on the board without loss of any wicket. So far, the Kalakanda cricketers strikers are managed to tighten up the screws out here, even though they're not able to pick the wickets. This time he lost it beautifully, right in the gap, on bounce, collected by the fielder in the deep mid wicket region, and before the throw coming from the deep, the ample time for the batters to complete that couple of runs. Excellent piece of work, we can say that, in the deep mid wicket region. Shivaram is the one who's done a great job in the deep mid wicket region. Absolutely good one actually, because that was hit very firmly by the batter in the legation. Sachin, but unfortunately couldn't manage to beat that field. Excellent piece of return as well from that fielder, and with that couple of runs, scoreboard numbers on to 17 on the board. This time again, a loose delivery outside the leg stump, then just try to reach that one, but not quite able to get that one from mid of the bat, just a single. So still, it's a cash prize of 2,000 for the bowlers of Kalakanda for the hat-trick, and so far there is no single wicket, as no question of hat-trick, but they are not able to get any wicket here, but they managed to bowl some economical overs. Again, a lovely delivery, again the batter really struggling to get the runs on the board. Kirtan this time tried to push that on the onside region, but not really able to get that one from the bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run at all. Hit in from the far end. Right arm delivers again, that was outside the line of leg stump. Nothing much to do with the delivery, and just a single here, and with that single, Skobana moves on to 19 on the board without loss of any wicket. Ethan, right arm over the wicket, delivers, that's chipped in off the toes towards the deep mid wicket region, looking for the second. In comes the throw from the deep again. The throw is not really having that much of power behind, quite understandable, because from the deep mid wicket, if you try to return the ball towards the hands of a wicket keeper, it's really going to be a long distance, and that's why the batsman completed that couple of runs quite easily. So with that couple of runs, scoreboard numbers on to 21 without loss of any wicket. Heaton from the far end, right arm over the wicket to Kirtan, delivers again, total misjudgment of the delivery. I don't know why he is just leaving that delivery, because whenever the opportunity is offered, when you are hit the ball towards a deep fine again long on region, whenever the required run is more than 10 runs per over, you need to capitalize this kind of deliveries. More than the wide, I think they need to get some big stroke, but unfortunately not a good judgment there from the batter. One more over completed. After completion of over number 4, it's a 21 without loss of any wicket. So far, the cash is very safe in the hands of sponsorer Vishal Kotar as well as Lohit Moili, and so a lot of dignitaries are enjoying the game of cricket in our main stage. And certainly it's a very good day for cricket, and unbelievable, isn't it? Sometimes in some previous 8 days we are having a lot of rains, and today we are having a very good condition out here in UCG Cricket Ground for this prestigious Kodical Premier League Season 3, and we are coming to the match, the over number 5 now, and 3 overs remaining. They need to go a long way, another 32 runs required for the victory. Again, the starts with the dotted delivery. Each and every dot balls will take the target tougher and stiffer here for the opposition team. Srianz again, right arm over the wicket. Shivaram bowls this time, chance here for the fielder to take the catch. He's dropped that one. He not only dropped the catch, but he just dropped the 500 rupees for the bowler. Can you believe this? Shivaram not happy
He is not happy because he just missed the opportunity to grab the 500 rupees. Look at it. He is just having some word with that fielder. Why you are not trying your level best to take that catch? So 23 without loss of any wicket. Again Shivaram. Right about this up, lofted. Another chance. This time fielder, two fielders, and one of them is taken the catch. Looks like one more drop catch because the two fielders from deep long on and deep long off almost they are not really having a good communication. Both are coming to the catch. Look at that one, a replay. Ball high up in there. The fielder one coming from the deep long on, one from the deep long off. Looks like both are having a collusion, but fortunately from the deep long on fielder takes the catch and 500 rupees at last into the pocket of Shivaram. So next match, Royal Army will going to take the challenge from Kodical Challengers. Here is Shivaram, right arm over the wicket. It was nicely driven towards the deep long on region. Nice looking drive there from Kirtan. Kirtan picked up a single here. Scoreboard now was on to 24 for the loss of one wicket. Still, it's long way to go. 29 more runs required for the victory. And now, Kiran Raj came into battle. One who can change the complexion of the match. He got a potential. He got a potential of hitting a big stroke, and one of the most favorite ground for Kiran Raj. He played some very good innings and fast for his team. And whenever the team is required some big stroke, and wait and see how Kiran Raj will going to contribute. The very good striker of the ball, especially is a very strong hitter on the onside region, and even is a very good striker in front of the wicket, and even the reverse stroke, one of his favorite stroke. And wait and see how Kiran Raj will going to contribute here. Needed some big shot to straight away here for team Srianz if they wanted to back into this game. But here is Shivaram. He is in hunt of getting wicket as well as the money. Oh, that was a very interesting to see that. Umpire's decision is a leg by, and Kiran Raj tried to turn that on the onside region, but not really able to manage to get the pat onto that ball, but he completed a single in the form of leg by. 25 comes up for the loss of one wicket. Shivaram, right arm over the wicket to Kirtan. There he was. Far outside the line of stump, and once Ketan wanted to reach that one, quickly realizing that is going further away, he's left the bat, and rightly so. White call by umpire. 26 for the loss of one wicket. Again Shivaram, right arm over the wicket, try to cut that one. He cuts that one, but not coming from the middle of the bat as a fielder in the short fine leg and run across his right and fields the ball. One more good over is completed after completion of over number 5, chasing 53 to win this match. Still struggling, team Srianz are 27 for the loss of one wicket. Everything is ready here for Royal Army as well as Kodical Challengers, and captain of Kodical Challengers, Sandeep, is very much ready here, out here. It's a very good news for the cricket lovers, because we have watched him, he's been injured in the tournament which is organized by Nutan Friends in this UCG cricket ground. When he was injured, when he played, when he was performing in the finals of this tournament, when he tried to take the catch, he just fell down and become unconscious. By the grace of God and efforts and well-wishers of all cricket lovers, is back into the game. This is really the big news for the today, number 1 of this Kodical Premier League Season 3. Ganesh bowling his second over. That one beautifully whipped that one down to deep mid wicket region, looking for the second, but they're going against that one, rightly so, because Kiran Raj wanted to take the strike as much as possible in the remaining deliveries if they wanted, his team wanted to back into this game. 28 for the loss of one wicket. Another 26 more runs required for the victory in just 11 deliveries, and it's a really difficult one, but the caliber of
Kiran Raj, I think it can be manageable if he managed to talk with his bat. In the sense, needed some big shots straight away. And wait and see how Kiran Raj will going to continue contribute, and wait and see how the bowler Ganesh will going to restrict Ashwin Raj. Deep fielders, deep long on, deep mid wicket, deep wideish long off, and one at deep cow point region. This time appeal for leg before wicket. The impact of the line is outside the run of off stump when the ball hits the leg of the batter Kiran Raj. Rightly so, very good decision the umpire Arish Padil. And one more leg by 29 for the loss of 1 wicket in the over number 6 in progress. Ganesh bowling from the far end to Ketan. Ketan bowls back dry, opportunity of cotton bowled, hard chance, tough chance, but he managed to stop the ball, but fails to hold the ball, and so that Ketan managed to complete the single, and scoreboard now moves on to 30 for the loss of 1 wicket. Very little bit reaction time for the bowler when the batter hitting the ball very hard back to him, and he just dropped the ball from the hand. This time Sam again they're going across the line of the delivery, appeal for leg before wicket, half-hearted shot, slower one, excellent change of pace here from Ganesh. Really is a good bowling there from Ganesh, putting his all experience against these two batters, especially he was able to keep Kiran Raj quiet in this over. 31 for the loss of 1 wicket. 22 more runs required for the victory. Again, this time excellent work. Wicketkeeper behind the stump, Guru Prasad, is done a great job to collect the ball in a fraction. Is complete the job in a fraction of second. Is complete the job, and the innings of Ketan is comes to an end. 31 for the loss of 2 wicket. Team Srianz. So one more 500 rupees it goes into the pocket of Ganesh. So the sponsor, please get ready to sponsor the 500 rupees for Shivaram, as well as now 500 rupees for Ganesh for wicket. Ganesh from the far end, right arm over the wicket delivers. This time nicely driven towards a mid-wicket region. One more single to the total, and with that single scoreboard numbers on to 32 for the loss of 2 wicket. So now it's going to be a last over of the innings of Team Srianz. So thank you very much, DJ. We're back into this final over. So one more announcement. 2,000 goes into 3,000 now for the hat-trick wicket for Bhagwan. And first ball, opportunity. Will it go into the stump out? Yes, it is. The batsman coming down the track, and Bhagwan picks up a wicket. One more 500 rupees. For Bhagwan, 32 for the loss of 3 wickets. ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಾನ್ ಇವರಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಣೇಶ್ ಇವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ the opportunities for Bhagwan, if he able to pick the hat-trick, he will go and get 3,000 rupees, and I think it's a golden opportunity for the bowler here. Bhagwan picked up first wicket
and is bowling second delivery of the over number final. This time outside the line of off stamp in the negation. The line of the delivery, in fact, of the line is outside the line off. The batter tried to strap that one, missed it completely. Leg by call by umpire. 33 now. 19 more runs required for the victory in remaining 4 deliveries. Kiran looking for the big swing of the bat, appeal for something like before wicket, but I think there might be that ball is going to miss the off stamp because of Bhagwan is returning a ball a lot as a leg cutter, and probably that ball going to miss the off stamp as far as umpire suggestion. Again outside the line of leg stamp, going to be a wide, and one more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 34 now. 20 required for the victory. 20 required in remaining 3 deliveries, and it's a very difficult task one. Once again looking for the big shot, quicker one there from Bhagwan. Now all the opportunities. Now definitely it's a difficult one. 2 balls, 20 runs, 10 runs per delivery. It's a very difficult one. You cannot find any records as far as getting 20 runs in 2 balls is concerned, unless bowler making a mistake, and here is one mistake from Bhagwan. So 35, 19 to get from 2 deliveries. Bhagwan bowling with a short run up. Right arm over the wicket delivers. Went for the reverse stroke. Missed it completely from the bat, but ball has contact with this leg. And one more delivery left in the innings of team Srianz. Kalakanda CS strikers, absolutely they dominated this match in every department, bowling, fielding, and even in the batting as well. So comprehensive victory, and we are for Kodical Kalakanda strikers defeated the team Srianz with a huge margin of 17 or 18 runs, and it's a huge margin. 18 runs in stipulated 7 overs match. 18 difference is always going to be the big margin victory. It is going to help the team to get some good net run rate, and it's a very good run rate which is going to be for Kalakanda CS strikers. They started their journey very well with the victory, and the next match Royal Army takes on the challenge from Kodical Creator Challengers. But before that, it's a time to announce a man of the match. Pangasius ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ it's going to be an all-round performance by Ganesh of Kalakanda strikers. Is judged as a man of the match for his excellent the batting. The 11 runs he scored at the same time he bowled 2 magnificent overs, very economical, 2 overs, 5 runs and 1 wicket, and that means a match-winning performance. And I request Mr. Praveen Amin Kodical to present this man of the match award for the winner, Ganesh of Kalakanda strikers, and Shruti will go in to be in a presentation ceremony. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ
The captain of Create Challengers, report here immediately for toss.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त मैच शुरू होने जा रहा है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स और रॉयल आर्मी के बीच में। रॉयल आर्मी टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और आरंभिक बल्लेबाज मौजूद अल्फाज और पृथ्वीराज, गेंदबाज मुकेश के हाथों में पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का 1 रन बिना किसी नुकसान के तीसरा मैच इस श्रृंखला का यहां पर शुरू हो चुका है और मुकेश दाइनात ओवर द विकेट। इस बार यह गेंद लेग स्टंप पर एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद सीधे स्टंप से ऊपर टकराई और जहां तक सवाल है बल्लेबाज का, तो तब बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे तो इस वजह से कोई क्षति नहीं। एक बार फिर से गेंदबाज मुकेश पृथ्वीराज के लिए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती है। गेंद रन के लिए तौर पर थ्रो पहुंचा स्ट्राइक रन पर, लेकिन थ्रो काफी वाइड विकेट कीपर पहुंच से बाहर और बल्लेबाज अपना बल्ला जरूर खो चुके हैं लेकिन रन पूर्ण करने में सफल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। तो 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और पहला ओवर यहां पर प्रगति पर और मुकेश दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बेहतर गेंद थी। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, इस बार गेंद उनके पैर पर टकराई, अपील जरूर लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और सही तरीके से अंपायर हरीश पटेल ने इस अपील को नकार दिया और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 रन बिना किसी नुकसान के और मुकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो मुकेश बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार पैरों पर टकराने के बाद पहुंची शॉर्ट कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन पूर्ण कर चुके हैं, लेग बाई का इशारा, 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर Kodical Create Challengers after being losing the toss and put it to bat by Royal Army. They made a slower start. In fact, 3 runs they managed to score after first over. Yet to lose any wicket. 3 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। प्रवीण गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स की पानी में। इस मैच के बाद कट्टे टाइटंस और टीम स्काई हॉक्स कोडिकल के बीच में मैच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और इस बीच गेंदबाजी प्रवीण शुरू करते हुए स्ट्राइक अल्फाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज आगे जरूर निकल आया लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। इस बीच 1 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है। 4 रन बिना किसी नुकसान के वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं प्रवीण और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा प्लम्बिंग फ्रंट और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। अल्फाज की पारी समाप्त। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे उनके पैर पर टकराई, लाइन पर टिप्पा खाते हुए गेंद सीधे मिड स्टंप को कॉन्सेंट्रेट केंद्रीकृत कर कराते हुए और अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। पहला विकेट गिर चुका है 4 रनों के ऊपर। और अब नाउ द प्लेयर इज नाउ कम्स हु इंजर्ड इन द लास्ट वीक, लेजेंडरी वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट और निस्संदेह संदीप। और हम सब ने तमन्ना भगवान से प्रार्थना की थी कि वो सही सलामत हो जाए और सही सलामत होने के बाद वो इस वक्त मैदान पर उतरते हुए निस्संदेह ये बहुत ही खुशी की बात है। क्यों सतीश?
Absolutely, Gopi, it was unbelievable, isn't it? When the last wicket, even I was watching the live telecast of that tournament, that Nutan organizing that cricket tournament, when he was trying to take the catch of NM Cricketers Mangalore's batsman, when he was going back and he just fell down, and of course his head is hardly it hit into the ground, and he just got unconscious, and everybody is really got a seeing him is how he is managed to come back actually, because he's a very good fighter, Gopi. Now umpire Roland Pinto shaking hands. This is what I want to say, that Gopi, this is a really true cricket, the true spirit of cricket, and Roland Pinto welcoming him, and that's I'm talking about. He is a very good cricketer, Gopi, and even Arish Padil also, and there are two umpires actually, they're witnessing that time, and it was a fantastic, isn't it, watching Sandeep. He's a fighter. He's a very good fighter actually. It's not easy to come back because after getting that much of injuries, he's been hospitalized, and because of NM Cricketers Mangalore as well as SK Charan, immediately they are taken him into the hospital, and Irshad of NM Cricketers Mangalore, definitely it was a very good gesture which is shown there by Irshad and all the NM Cricketers Mangalore, and even the cricket lovers, under cricket lovers. It was a very good scenario, we can see that in that, and because of the prayer of all underarm cricket lovers, and as well as the well-wishers of underarm cricketers prayed for the quick recovery, and he is back, Gopi. He is back, and straight away he is back very strongly. The first delivery itself, he got a very positive start. Absolutely Satish, निस्संदेह he is a fighter. संदीप पर निस्संदेह, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, ऑलराउंडरों में से एक जाने जाते हैं, और वो उनका कमबैक यहाँ पर हो चुका है। हमने देखा कि अंपायर रोलैंड पिंटो और अंपायर हरीश पटेल ने उनका जिस तरीके से स्वागत किया, काबिल तारीफ है, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में उनका क्रिकेट भविष्य और भी उज्जवल हो। और यहाँ पर वो इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के बीच, एक रन का इजाफा हो चुका है लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। प्रवीण इस वक्त गेंदबाजी करेंगे पृथ्वीराज के लिए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए रॉयल आर्मी के कप्तान अशफक, और इस वक्त गेंदबाज तैयार प्रवीण दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार चिपकी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे संदीप, काफी तेज, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, और हालांकि पृथ्वीराज दूसरा रन पूर्ण करने के बाद कुछ हद तक झिझके थे जरूर, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि संदीप जो कि बेहतरीन रनर बिटवीन द विकेट के रूप में जाने जाते हैं, उनकी ओर दौड़ कर आ रहे हैं स्ट्राइकर एंड की ओर, उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया, और आखिरकार 3 रन दोनों बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर, बिना 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रवीण, थोड़ी सी फील्डिंग में फिर से जमावट करते हुए रॉयल आर्मी के कप्तान अशफक, और संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। प्रवीण दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर, दिशा से भटकती हुई गेंद, और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, माफ कीजिए दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और प्रवीण एलोशियस डिसोसा इनकी ओर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चिप गया इस वक्त, और इस बार गेंद को लपकते हुए डीप मिड विकेट के फील्डर और संदीप जो कि गेंद को उछालना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन उछाला जरूर लेकिन काफी ऊंचा, और गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और डीप मिड विकेट पर आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया। तो संदीप इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए, और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। इन फैक्ट एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। जैसा कि इस श्रृंखला के बारे में अगर कहा जाए तो कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 ये श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने उनके 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 25th ईयर। और
सिल्वर जुबिली के रूप में, और ये श्रृंखला जो कि एक शानदार प्रगति करती हुई यहाँ पर इस सुंदर से उर्वा क्रिकेट मैदान पर, जो कि लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, प्रशांत का आगमन यहां पर हो चुका है और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए पृथ्वीराज गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। प्रवीण गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed, 12 for the loss of 2 wicket, and still in the overall calculation it's going to be 5 overs remaining in Kodical Create Challengers innings. Right after this match, the next match, Katte Titans will take over team Skyhawks Kodical, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो यहां पर गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज कार्तिक और सामना करते हुए इस वक्त स्ट्राइकर के बल्लेबाज प्रशांत, और फील्डिंग 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात। शॉर्ट फाइल लेग, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट। जहां तक 20 गज के दायरे के बाहर के फील्डिंग के नजरिए का सवाल है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, और डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के बीच एक फील्डर यहां पर वहां पर तैनात। और ओवर की पहली गेंद लेकर कार्तिक का इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए 1 रन प्राप्त कर चुके हैं प्रशांत, और इस 1 रन के साथ उनका खाता यहां पर खुल चुका है। अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार पृथ्वीराज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए कार्तिक। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को ढकेला, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची पर थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा। स्ट्राइकर पर कितना हो सकता है, यतीन के हाथों में गेंद पहुंचा जरूर रहा है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज दूसरे रन पूरा यहां पर कर चुके थे, और इसी के साथ 2 रन पृथ्वीराज के खाते में जुड़ चुका है। जैसे ही लॉन्ग के फील्डर ने मिसफील्ड की, स्ट्राइकर के बल्लेबाज प्रशांत नॉन स्ट्राइकर पर दौड़ पड़े, जो कि डेंजर एंड था, और लेकिन थ्रो रिसीव करने के बाद कार्तिक ने गेंद को थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचे बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे। पृथ्वीराज हल्के से गेंद को स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, और गेंदबाज कार्तिक के हाथों में एक बार फिर से गेंद आ चुकी है। हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजर रही है, और निस्संदेह एक बेहतरीन वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, और गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन नहीं खेल पाए, और गेंद को शॉर्ट कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा, फील्डर ने फील्ड कर लिया, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी जरूर, लेकिन ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, और कोई भी रन उनके खाते में नहीं जुड़ेगा। कार्तिक की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन सीधे शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, बेहतर गेंदबाजी, और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs. Still the batsmen of Kodical Create Challengers are searching for the right track. 4 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई रॉयल आर्मी के सदस्यों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और काफी देर के बाद धूप इस वक्त मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, उतना प्रखर तो नहीं लेकिन अपना अस्तित्व का प्रदर्शन जरूर यहां पर करता हुआ, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका है। सुंदर से यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान, जो कि अंडरआर्म क्रिकेट का लॉर्ड्स कहलाता है, और जहां तक सवाल है चौथे ओवर का,
तो चौथा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज प्रवीण जो कि अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर यहां पर तैयार एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए रॉयल आर्मी के कप्तान अशफक जो कि इस वक्त फील्डिंग में सजावट करते हुए, जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर इस वक्त खुद मौजूद हैं, और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रवीण इस वक्त तैयार। स्ट्राइकर पृथ्वीराज सामना करते हुए पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त निकाल दिया है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर घोषित किया, कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था, सिर्फ गेंद को अपने पैरों पर लगने दिया था और गेंद सीधे उनके पैरों पर लग कर निकली थी शॉर्ट फाइन लेग पर, और बिल्कुल सही तरीके से अंपायर रोलैंड पिंटो ने इसे डिलीवरेट घोषित किया। तो रन से कोई नहीं जुड़ेगा, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका। प्रवीण एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान, 17 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो 17 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। अगर कोई बल्लेबाज जो वो स्टेज के दाईं ओर हमारे कमेंटेटर बॉक्स की दाईं ओर कोडिकल प्रीमियर लीग का बैनर जो इस वक्त फ्लेक्स जो लगा हुआ है, उस फ्लेक्स पर अगर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार, 1000 रुपए का नगद पुरस्कार उस बल्लेबाज को दिया जाएगा। विशाल वी कोट्टारा इनकी ओर से, और मनोज, तो मनोज कुमार कोडिकल और विशाल कोट्टारा इनकी ओर से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार उस बल्लेबाज को दिया जाएगा जो बल्लेबाज छक्का उस कोडिकल प्रीमियर लीग फ्लेक्स पर लगाएगा। ये गेंद, इस बार गेंद बल्लेबाज को वंचित करती हुई सीधे स्टंप पर टकरा चुकी है, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रशांत की पारी समाप्त। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए, कुछ अपने रफ्तार को वृद्धि करते हुए सीधे उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई मिडल लेग स्टंप पर, गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 18 रनों पर। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन बल्लेबाजी का सिलसिला यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हैं रॉयल आर्मी के गेंदबाज। फलस्वरूप इस वक्त कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए। अगले मैच का जहां तक सवाल है, कट्टी टाइटंस का मुकाबला होगा टीम स्काई हॉक्स कोडिकल के बीच, और इसलिए मैं दरख्वास्त एक बार फिर से करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना साइन हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। फारूक नंबर 77 की जर्सी यहां पर पहने हुए नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज प्रवीण गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज फारूक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट प्रवीण की गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा, और 1 नहीं 2 रन मिलेंगे वाइड के रूप में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, प्रवीण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, पृथ्वीराज जो कि बतौर आरंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे हुए थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए, एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, सामना करते हुए, बेहतर गेंद अंदर की ओर आती हुई, गेंद को हल्के से ढकेलना चाहता, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए, और गेंद को विकेट कीपर यतिन ने आगे की ओर जाकर फील्ड कर लिया, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 20 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। चौथा ओवर प्रगति पर। हर गेंद के बाद फील्डिंग में जमावट करते हुए रॉयल आर्मी के कप्तान अशफक ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर जाती हुई, और इस बीच एक और वाइड, 2 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ते हुए 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और देखा जाए तो 22 रनों में 10 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में प्रदान किए हैं रॉयल आर्मी के गेंदबाजों ने। और जहां तक सवाल है गेंदबाज प्रवीण का, तो अब कुछ खिलाड़ी
कप्तान अशफक के साथ उनकी ओर बढ़े, कुछ उन्होंने सूचना दी कि किस सही तरीके से उन्हें गेंदबाजी, सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और कुछ सूचना प्राप्त करने के बाद इस वक्त प्रवीण तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट लाइन, और इस वक्त यतीन जस्ट मनाते हुए कि गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुका है। और देखना यह है कि अंपायर whether it's out or not out, just we have to wait for the third umpire। तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की है रोलैंड पिंटो ने, और देखते हैं यहां पर क्या हुआ था। तो तीसरे अंपायर श्रीरज जिस वक्त यहां पर टीवी मॉनिटर पर चेक करते हुए कि गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी या नहीं। सो श्रिया स्ट्राइकर्स का जो फ्लेक्स वहां पर लगा हुआ है, जिसके मालिक है सुरेश एस पुजारी, अगर वो फ्लेक्स पर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार विशाल और मनोज इनकी ओर से दिया जाएगा। गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। फारूक की पारी समाप्त और 4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स स्कोर्ड बाय कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स अगेंस्ट रॉयल आर्मी। और 3 ओवर का खेल बाकी उनकी पारी में, और देखते हैं कि इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अब सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा। So thank you very much, Gopi. So welcome back again. And before that, the next over is going to commence. I would like to invite 2 teams which is going to play the next match of their league. The Katti Titans takes on team Skyhawks. Team Skyhawks Kodical takes a challenge from Katti Titans. So that I request all the players of both the teams complete the formalities of signatures as soon as possible. Katti Titans ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೈಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So struggle time continues here for Kodical Create challengers. Runs are not really coming very freely because of some decent bowling performance by the bowlers of Royal Army. 22 for the loss of 4 wicket and over number 4 will going to start. Karthik for the first delivery of the over number, over number 5, let me correction. This time kept that one and fielded there in the right position to take the catch. Jersey number 17 takes a catch here. I think Sameer there in the deep long of making no mistake at all. And wicket number 4 is back into pavilion. 22 for the loss of 4 wicket.
So Prithviraj is back into pavilion and replacing him is a new batter Prajwal and he's in a non-striker's end and Prajwal Junior will going to take the strike. Right arm over the wicket. That ball is just a little bit going down the leg stump but well within the reach of the batter. Wide call by umpire Arish Padil. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 23 for the loss of 5 wicket here in over number 5 in progress. Very slow progressing here for team Kodical create challenges against Royal Army. Army just like what the name they got Army and they are really bowling like the Royal Army and so far they are really bowled a very decent and tidy bowling performance so far. Now Karthik sending one fielder from mid wicket to deep in the deep long on. Manoj is going back as one of the senior most player. It's going towards a wideish long on region. This time nicely driven right in the gap and fielder there in the deep mid wicket charging from the deep and he was able to collect the ball and returns the ball quickly to the hands of Karthik. Ample time for the Prajwal senior to pick the single. Scoreboard moves on to 24 for the loss of a 5 wicket here in over number 5 in progress. One more lovely delivery in there from Karthik. Sharp incoming delivery forcing the batsman onto the back foot. Couldn't manage to get the placement right, timing right. Ball went straight to the hands of Silly mid off region. Again nicely turns that one down to square leg. He's looking for the second. In comes the throw from the deep but the throw is not really having that much of power as well as the direction and that's why the batters has got a opportunity to come back for the second as well. Prajwal completed it too after completion of over number 5. Searching for the right track, still struggling. Kodical create challenges, managed to score 26 for the loss of 5 wicket. What a fantastic moment we are witnessed today and when Sandeep is coming to bat and definitely one of the most memorable moment as far as under-arm cricket is concerned. We got a lot of fans in under-arm cricketers. Definitely they are really going to enjoy that the picture when Sandeep is walking towards the middle to bat first when umpire Roland Pinto and as well as Arish Padil just welcoming him. The way that they are showing the gesture absolutely fantastic and of course everyone is really looking for that and that was almost the pin drop silent when the incident is happened in the last week when Sandeep is fell down, tried to take the catch and Sajid of NM Cricketers Mangalore tried to go over the top of Cow Point region. Then Sandeep just running back couldn't manage to control his body balancing and he just fell down and a little bit hitting his head hard into the ground and immediately is unconscious. All the cricket lovers are really shocked in this incident but really it's nice to watch him immediately after 1 week is back in action in cricket. This is the beauty of under-arm cricket, isn't it? We never get that kind of the true spirit of cricket anywhere than in coastal area region when you are watching under-arm cricket. Definitely it's very good to see and even good to see that the cricket is got really a fantastic cricket is definitely is an exciting game, isn't it? That is encourages the relationship, the friendship between the players. The way that NM Cricketers Mangalore players showing that gesture immediately, even all the cricket lovers immediately shown the gesture that taken him to hospital and before that given a first aid as well for Sandeep to recover very quickly and he is back into the game today and fantastic to watch. Again one more single. Scoreboard now moves on to 29 for the loss of 5 wickets. Over number 6 in progress. Mukesh is in action from the Aloysius D'Souza end and this time not quite getting hold of that one properly. It's a bowler's back drive but not really getting that much of timing behind the stroke from Prajwal Senior. One more addition, 29 for the loss of 5 wicket in the over number 6 in progress. Mukesh bowling with a short run up. Right arm over the wicket delivers. Again this time right in the gap. They're running hard. Little bit of confusion between the fielder at short
backup point as well as Ashfaq, who is standing at short third man region, and because of that confusion, both the batters completed a couple of runs, and with that couple of runs, Coburn moves on to 30 on the board for the loss of 5 wicket. Lovely shot, beautifully driven again right in the gap before the fielder from deep cow point region to pick that one. Ample time for that batters to complete a couple of runs, but here is run out taken place, and because of that very good throw coming from the fielder at cow point region right over the bills, and wicketkeeper completed that formalities of removing the stumps, and Yatin behind the stump is a very good wicketkeeper behind the stump, is completes the job. One more wicket is back into pavilion. Last over is going to commence, and very experienced player Manoj has been asked to bowl that last over. It's a very good bowler, and he is a player from our era. In the sense, he is a very good player, and in the olden days, in the 90s, 2000s, he's a fantastic performer. He's a very good leg spin bowler actually, left-hand leg spin bowler, and probably it was off spin for the right-hander batsman. Off spin in the sense, ball just coming into the batter, the right-hander batsman. And wait and see how Manoj will go into contribute for his team from the bowling. First ball, beautifully bowled. That was a tossed up delivery, and right on the slot, so that the batter completed the single by hitting the ball down to deep long off region. Flighted one, quite deliberately Manoj inviting the batter to go for the big shot, but this time the batter picked up a single by hitting the ball down in the ground, and not really trying for the lofted stroke, and scoreboard now was on to 32 for the loss of 6 wicket here in over number last in progress. 33, let me correction, 33 on the board, 33 for the loss of 6 wickets. Manoj. Sumit is a very good all-rounder for the side of for the side of Kodical create challengers, and so far they are not having that much of big innings, and 33 is a score, and last opportunity for the create challengers to get some runs. They again looking for the reverse sweep, and Manoj is so clever in that occasion, seeing that intention of the batsman, he tried to play the free meditated switch it, so that he just changing line quite cleverly, ball down the leg stump, and wicketkeeper fails to collect the ball, and umpire signals a bye. 34 for the loss of 6 wicket. Manoj bowling left arm. Round the wicket, going down the track, but not really getting the distance right. He's just finding the fielder in the deep long off region. One more wicket is back into pavilion of create challengers. The challengers couldn't manage to take the challenge here from the bowlers of their opposition. Royal Army are looking in a top. 34 for the loss of 7 wicket. So Manoj once again bowling away from us. Left arm from the wicket again across the line of the delivery, swinging that one towards a wideish long on region. Good piece of fielding there by the fielder, and returns that one very well. Shamir is a very good fielder in the deep, not really making any mistake at all in that occasion. Clean collection and very good throw, and only one run here for create challengers. Again a lovely delivery, beautifully bowled, but the wicketkeeper behind the stump not supporting in that occasion. Lovely delivery there from Manoj, flighted one, and defeating the bat, but not really. The wicketkeeper behind the stump gathers the ball. One more addition, 36 for the loss of 7 wicket. Manoj, left arm,
Bounce this up, swings that one, ball going, oh! That was really, once it looked like the fielder will going to take the catch, they're going for the third run as well, they're running hard, chance of run out, they missed it, and they're looking for the fourth one as well, chance of run out, but this time they're not survived. So last delivery is 3 runs. Just look at the effort from the fielder in the deep mid-wicket region. He is standing well in front of that boundary line, almost 10 to 15 meters actually is in front of that the boundary line. That's why he couldn't manage to take the catch, couldn't manage to judge the catch very well. He's just going back, tried to take the catch and the ball just slipped out of his hand. But he managed to survive the boundary. But meanwhile, 3 valuable runs which is scored in the last delivery of the final over. That last they scored 39 valuable runs in the stipulated 7 overs by losing 8 wickets and set a target of exactly 40 runs to win this match. So 40 to win the match for Royal Army in the stipulated 7 overs. That means 42 deliveries. They have to get 40 runs to win the match and wait and see how well create challenges Kodical will going to restrict the batters of Royal Army. It's going to be a very, very interesting second session and wait and see how well these 2 teams will going to get the victory and before the innings will going to commence of Royal Army. Once again I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So exactly 40 the target for Royal Army set by Kodical create challengers and their innings now going to start and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज प्रशांत इस वक्त तैयार जबकि स्ट्राइक का इस वक्त प्रवीण के पास नॉन स्ट्राइकर पर यतिन और दाहिने हाथों उभरता विकेट उनकी पारी की पहली गेंद फुल टॉस लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए अंतिम क्षण में और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और एक बार फिर से प्रशांत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रवीण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों उभरता विकेट ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ और पावर प्ले के अंतर्गत कोई फील्डर इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मौजूद नहीं और गेंद सीधे आसानी के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग
सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है रॉयल आर्मी के लिए 4 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर है। और एक बार फिर से गेंदबाज प्रशांत माफ कीजिए इस वक्त तैयार, प्रवीण सामना करते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के दौर पर अपील और रनआउट का खतरा, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं। गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट इस वक्त दिखाई थी, लेकिन अंतिम क्षण में जैसे ही उन्होंने भापा 4 से 5-6 कदम आगे आने के बाद की गेंद वहां पर फील्ड की जा रही है, पॉइंट पर अपने इरादे को बदलते हुए अपने क्रीज पर वो सुरक्षित वापस लौटने में सफल। और यहां पर अब यतिन जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है उनकी ओर बढ़े, कुछ उन्होंने कहा कि भैया जल्दबाजी की यहां पर जरूरत नहीं है, रन्स बनाने सिर्फ 40, सेंसिबल बड़ी बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है, आप जल्दबाजी ना करें। तो यहां पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ द बैकफुट, गेंद को परफेक्टली इस वक्त ड्राइव कर दिया वाइड स्लॉग ऑफ पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। यतिन मोटे कद के खिलाड़ी लेकिन काफी प्रतिभाशाली और एक बेहतरीन विकेट कीपरों में से एक जाने जाते हैं, बेहतर बल्लेबाजों में से भी एक जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, जबकि इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद की धीमेपन को पहचानते हुए और जहां तक सवाल है रनों का, रन मिलेगा जरूर, इससे पहले कि वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर एक बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। और एक बार फिर से गेंदबाज प्रशांत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ लगभग जमीन के सामने आई थी, गेंद को बैकफुट पर जाने के बाद इस वक्त ऑफसाइड पर खेलना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, विकेट कीपर भी चूक गए, गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया, शॉर्ट फाइल लेग पर रन से नहीं मिलेगा। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 7 ओवर में पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्टीडी स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, सत्र की शुरुआत यहां पर कर चुका है रॉयल आर्मी, 6 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के, 6 for no loss ऑफ द फर्स्ट ओवर। बैट्समैन यतिन, सो सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन रॉयल आर्मी इनिंग्स और इस वक्त पृथ्वीराज गेंदबाजी शुरू करते हुए यतिन सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद ऑटोमेटिकली टकरा चुकी है और एक बेहतरीन निर्णय यहां पर दे चुके अंपायर हरीश पटेल, ऑटोमेटिकली गेंद विकेट कीपर के पैर से टकराकर सीधा टकराई थी स्टंप्सों पर, और इससे पहले की गेंद स्टंप्सों पर, इससे पहले कि बल्लेबाज अपना बल्ला वापस क्रीज पर रखे, गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी थी, बेल्स डिस्टर्ब हो चुके थे और निस्संदेह बिना किसी तीसरे अंपायर को देते हुए, ये निर्धार देते हुए अंपायर हरीश पटेल ने बिल्कुल सही तरीके से अपने अनुभव के अनुसार बेहतरीन तरीके से उन्हें आउट घोषित किया और बेहतरीन निर्णय यहां पर कहना पड़ेगा। और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है यतिन का और 6 रनों पर पहला विकेट खो चुका है रॉयल आर्मी। नवीन नवीन का आगमन होता हुआ इस वक्त एज ए नंबर 3 बैट्समैन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार पृथ्वीराज की गेंदों का, ये गेंद इस बार ऑफ द बैकफुट, गेंद को खेला पॉइंट पर रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जैसे उन्होंने भापा गेंद वहां पर फील्डर के हाथों में पहुंच रही है, बल्लेबाज ने तुरंत अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया और वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड भी होती थी और आखिरकार
बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज कोटिकल क्रिएट चैलेंजर्स के ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद की गति को पहचानते हुए और इससे पहले के लंग ऑफ पर गेंद को फीड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 7 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, सेकंड इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। और प्रवीण अब सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा पॉइंट की दिशा में, लेकिन आफ्टर आई थिंक इट कुड बी आफ्टर फर्स्ट बाउंस। जी हां, गेंद पहले टिप्पे के बाद सीधे पहुंची थी पॉइंट फीडर के हाथों में और इस वजह से बल्लेबाज बाल बाल बचते हुए इस गेंद पर और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पृथ्वीराज दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इलेक्शन से बाहर, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था लेकिन गेंद इलेक्शन से बाहर की ओर निकली और आखिरकार शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ पृथ्वीराज का, जिसमें सिर्फ 1 रन मात्र वो प्रदान कर चुके हैं और 1 विकेट भी ये 3 का प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चेक किया, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, निस्संदेह बेहतरीन प्रयत्न वहां पर किया था। शायद संदीप जो कि बेहतरीन क्षेत्र रक्षकों में से एक जाने जाते हैं और पिछले हफ्ते भी नूतन फ्रेंड्स ट्रॉफी में फाइनल मैच में इसी तरीके के प्रयत्न में पीछे की ओर जाते हुए कैच को लपकने के प्रयास में उनके सिर पर चोट आई थी और वो बेहोश हो गए थे मैदान पर। और यहां पर सुदैववशात भगवान की दया से, भगवान की दुआ से यहां पर उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो इस गेंद पर उन्हें कुछ चोट नहीं आई और हालांकि कैच तो जरूर छूटा, लेकिन ये खुशी की बात है कि संदीप सही सलामत है। तो निस्संदेह संदीप जो कि ऑलवेज फाइटर के अनवर्थ नाम से जाने जाते हैं, एक फाइटर वो अपने क्षमता के अनुसार, अपने काबिलियत के संपूर्ण 100% जिसे कहते हैं 100% क्षमता के अनुसार खेलते हैं हर मैच में। और यहां पर भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने डाइविंग लगाई थी, कोशिश की थी कैच लपकने की, निस्संदेह काबिल तारीफ है। तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। 2 overs completed, it's 8 for the loss of 1 wicket. So an equal battle is now continuing here. 2 overs completed, 8 for the loss of 1 wicket. और जो 2 गेंदबाज प्रशांत और पृथ्वीराज जो पहले 2 ओवर में इस्तेमाल किए गए, अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की है और 2 ओवर के बाद 8 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है रॉयल आर्मी का, तो एक धीमा शुरुआत कर चुका। जहां तक सवाल है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का, तो इस वक्त वो अपना संघर्ष बरकरार रखते हुए उनके कप्तान संदीप जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता होगा। और निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी पहले 2 पावर प्ले ओवर्स में की है कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने। 30 गेंदें बाकी हैं और 32 रन चाहिए। 32 runs to get in remaining 30 deliveries. The asking rate is now exactly 6.40 runs per over. और फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज सुमित इस वक्त नया ओवर शुरू करते हुए एक बार फिर से मैदान पर लगभग बदली भरा वातावरण छा चुका है और इस बदली भरे वातावरण तले इस श्रृंखला का तीसरा मैच यहां पर प्रगति में। पहले गेंद सेंसिबल, लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज कुछ खास उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली रन पूरा करने में और रन लेने में, और इस वजह से बल्लेबाज आखिरकार बल्लेबाज को कोई रन इस गेंद पर नहीं मिला। और एक बार फिर से गेंदबाज सुमित तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस टॉप एज और गेंद इस वक्त मिड विकेट फील्डर के नीचे आती है, लेकिन स्वयं गेंदबाज ने उस गेंद को लपक लिया है। यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्ले दैट वन टू अर्ली, और यहां पर गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद काफी देर तक हमें नहीं उछली थी और मिड विकेट फील्डर के लिए आसान सा मौका था, लेकिन गेंदबाज जो कि
सीधे दौड़कर आए मिड विकेट पर और उन्होंने कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ यहां पर लपक लिया। तो दूसरा विकेट गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज प्रवीण आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 8 रन जो अब तक बन चुके उनकी पारी में। रन प्रवीण ने बनाए और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद स्वयं कप्तान अशफाक एज नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और सामना इस वक्त करते हुए नवीन सुमित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया खूबसूरत एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक था लेकिन प्लेसमेंट खास नहीं गेंद सीधे पहुंचा एक्स्ट्रा कवर फील्डर संदीप के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार सुमित यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया संदीप का एफर्ट लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और वाइड लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका 9 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. Now the skipper is now taking the strike. He is now going to face Sumit और इस वक्त सुमित अशफाक के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया इस वक्त धीमी लेग कटर गेंद थी लगभग ऐसा कहना पड़ेगा गेंद के बल्ले के भीतरी किनारे पर टकराई थी लेकिन मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे थोड़े से पीछे और यहाँ पर 1 रन दोनों बल्लेबाजों को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर बराबर का टक्कर यहां पर जारी सुमित एक बार फिर से तैयार ये गेंद दैट इज एन एब्सोल्युटली प्लम दैट इज एन प्लम एक्स्ट्रा क्रिकर गेंद बिल्कुल लाइन पर टिप्पा गई मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कर आती थी और उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने था और बिल्कुल सही निर्णय यहां पर अंपायर हरीश पटेल ने दी और यहां पर यह तीसरा विकेट गिर चुका है। नवीन की पारी समाप्त अब इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियों के बादल इस वक्त साफ मंडराते हुए रॉयल आर्मी के बल्लेबाजों के ऊपर। तो अब 3 विकेट गिर जाने के बाद सारा दारोमदार इस वक्त कप्तान अशफाक के ऊपर गिर चुका है और देखना यह कि वो अपने टीम को अपने बचे हुए साथियों के साथ सही तक पहुंचा पाते हैं नहीं। अशफाक जो कि विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल के 30 ओवर के फॉर्मेट के कप्तान हैं और उनके कप्तानी में विशाल कोडिकल 30 ओवर का फॉर्मेट जो आरआर मेमोरियल यूएफसी ट्रॉफी का खिताब वो प्राप्त कर चुका है और यहां पर देखना यह है कि अपनी टीम को इस मैच में वो विजय दिला पाते हैं या नहीं। निस्संदेह अपार अनुभव है उनको और देखना यह कि इस अनुभव का इस मैच में वो किस तरह अनावरण करते हैं। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए तख्ता कुछ हद तक इस वक्त भारी लगता हुआ कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स का लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त रॉयल आर्मी के बल्लेबाजों को और गेंदबाज प्रज्वल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अशफाक के लिए बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली परफेक्ट वन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। निस्संदेह 3.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है लेकिन अभी भी बल्लेबाज रॉयल आर्मी के रनों के लिए संघर्ष करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त संदीप के पहुंच से बाहर गेंद पहुंची वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा दूसरे रन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग दिस इज एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टैंडिंग। कार्तिक जो कि पहले 2 कदम दौड़े इसे देखते हुए अशफाक ने भी 2 कदम आगे बढ़ा है लेकिन जहां तक सवाल है अशफाक वहीं पर रुके रहे और कार्तिक दौड़कर स्ट्राइक लाइन पर पहुंचे और जब कार्तिक स्ट्राइक लाइन पर पहुंचे अशफाक क्रीज से बाहर थे तो इस वजह से अशफाक को आउट घोषित किया गया है और निस्संदेह ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक यहां पर साबित हो सकता है रॉयल आर्मी के लिए क्योंकि अशफाक के ऊपर काफी उम्मीदें थी और दुर्भाग्यवशात रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। अब ऐसा कहना पड़ेगा निस्संदेह रॉयल आर्मी के ऊपर जो परेशानियों के बादल छाए हुए थे वे और अब घने होते हुए
11 रन 4 विकेट के नुकसान पर और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के गेंदबाज, हालांकि उनके बल्लेबाजों ने for the young talented Prajwal as well. Look at this bowling figure. He bowled 2 overs. 2 overs, no maiden, 3 runs and 2 wickets. It's one more fantastic bowling figure. 3 runs and 2 wickets. Outstanding. Now Prajwal Senior is brought into attack. Last over, 22 required. The batsman has got no option at all. Ratish Raj looking for the big drive. Missed it completely. 5 ball, 22 runs required for the victory for Royal Army. Again, the identical mirror display of previous delivery. The same line, same length. Ratish Raj again, he was looking for the lofted stroke on the offside region. Missed it completely. 4 balls, 22. Last opportunity. And now, 1 runs. That means 3 sixes can tie the match, but not going to win the match unless bowler making any mistake here. Prajwal, 3 balls, 19 required for the victory. Slashes that one off the back foot to the deep long off region now for a easy single. Now, just an formalities left in this game. The formalities left in this game. Can Ratish look for unorthodox stroke? No, he is in orthodox mood. Just using his feet to get the single down to deep long off. And scoreboard now moves on to 20 on the board for the 21 for the loss of 9 wicket. 19 required and last ball, and that's it. The very good victory, the victory of 18 runs for Kodical Create Challengers are really creating that problem for the opposition with their bowling, and Royal Army nowhere near the target at the margin of 17 big runs. Victory for Kodical Create Challengers. Congratulations the winners, and better luck for Royal Army when they're going to play their second match of the league. They need to come back strongly with their batting department, in fact. And before the match, the next match will go into commence between Katti Titans as well versus Team Skyhawks Kodical. A change in commentary box as well. The first time I would like to invite Mr. Sujit in our commentary box in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Welcome Mr. Sujit, and good afternoon. Good afternoon. So man of the match of the previous match, it's a very difficult one because everyone contributed. It's a very good bowling figure for the 2 players. One Prajwit, Prajwal, who bowled 2 overs, 3 runs and 2 wickets. But Prajwal's 2 overs, 4 runs and 4 wickets. So that Sumit, Sumit is bowled 2 overs, 4 runs and picked up 4 wickets. So that Sumit, who's judged as a man of the match of the previous match for his excellent bowling figure of 2 overs, no maiden, 4 runs and 4 wickets. Definitely it's a match-winning performance. So I request Mr. Sumit, so please come forward. Please collect your man of the match award from our chief guest in the main stage. The captains Skyhawks already, I think the captain of
Kayaks on the are selected to field faster. This is the fourth match of the day. Competitors and teams Kayaks Kodical. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಹತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಕಲ್. ಟೀಮ್ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ತಂಡವು 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 3 ಇದರ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಸಿಜಿ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು match umpires, the experienced umpire, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಲಂಪುಟ್ಟ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್. ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ತಂಡವು 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕತ್ತೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗುತ್ತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವ ತೃತೀಯದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 7 ಶತಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಂತದಿಂದ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನ್, ನಾನ್ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್, ಎಸ್ಕಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್.
ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅದು ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಾಜ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅಪಾಯದ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ, ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಪೀಚ್ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಮಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಉತ್ತಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಓಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು, ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತದನಂತರದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2-1. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ನವದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಗೀಶ. ನವದಾಂಡಿಗ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಆವೃತ್ತಿ 3 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಾಜ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರ ನಾಗರಾಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರೈಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಾಜ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ನತೆಯವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ ಸುನಿಲ್ ಗೋರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟದಂಗನ ಪ್ರಯೋಗವಂತೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 1 ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಯವರೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ, ಅವಳಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5-1 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನಂತಿ. The next match will be between Kodical Indians and Royal Army. Both of them players and captain plays a signature registered book as soon as possible. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ
ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 5, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 1. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೋಲು ಪ್ರದೀಪ್ ರೌಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ತಂಡ ಮುಖೇನ ಹೊಡೆಬಡಿದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. UCG ಇರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ರನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 12 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರದೀಪ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಸುಸಾಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ ಹೊರಡಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ನಿಶಾನೆ 4 ಓಟ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡಗಾರ ಸುಮನ್ ಅವರ ದಂಡ ಮುಖೇನ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 11 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಯೋಗೀಶ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಶಿವರಿಂದ ಮೊತ್ತ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರದೀಪ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಯಾವುದೇ ಶತಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಿಧವಾಗಿ ಮುನ್ನ ಯತಿರಾಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುಮನ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ 23. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಓಟ, 1 ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 18 ಓಟಗಳು ನೋಡಿ. 18 ಓಟ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದು 5 ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ನಾಗರಾಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಲವೇ ದಾಂಡದ ಆಟಗಾರ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್, ಫೈನ್ ಲಾಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಕಟ್ಟೆ ತಂಡವು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಗರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25ರಲ್ಲಿ ತಂಡ 7 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಬೌಲರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾಗರಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುಮನ್ ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ಲಿಗಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮನ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ರಂದಾರಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಾದ ರಂದಾರಣ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಓವರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23 ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಈ ಬಾರಿ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 28 ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾಗರಾಜ್. ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್. ರೈತ ನೋಡಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದಂತು. ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಭೂತ ರಕ್ಷಕ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗರಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ನೌಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಗೇಶ್. ತರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಯ್ದಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಮನವಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30 ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ರಾಜ್ಯಭವನದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಸುಮನ್ ಈ ಬಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಮನ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೇಲರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 46. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಓವರಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರ್ ಹೊಡೆದಂತ ಈ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪೇಲಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32 ಎದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಸ್ ತಂಡ. ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. Hello, check. Hello, mic check, testing. Mic testing. Check. Hello, check. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜ್ ಮುನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ರೈಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. ಯತಿರಾಜ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ದಾಂಡಿಗ ಯೋಗೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್
ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮನವಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ತಳಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32 32 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಔಟನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯನ ನೇರ ಫೈನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನವದಾಂಡಿಗ ಭರತ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಭರತ್ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಳದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32 ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜ್ ಮುನ್ನ ಕಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಭರತ್ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯೋಕ್ಸ್ ತಂಡವು ವಾಪಸಾಟ ನೀಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ 32 4ನೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರದೀಪ ಎಸೆದಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಈ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಪಸಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮುನ್ನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33 ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವದಾನಿಗೆ ಭರತ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾಸಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡು ಚಿಹ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನವದಾಂಡಿಗ ಭರತ್ ಅವರ ದಂಡ ಮುಖೇನ
ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾರವರು. ಮುನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಜೊಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜ್ ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರು. ಕೇವಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2 ಓಟ, 1 ಹಿದ್ದರನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಪಸ್ ಹಸಿಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೈಯರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ್ದು. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33, 2 ಹಿದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರದೀಪ ತನಗೆ ಸಂತದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಚರಿಸಿದ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತದಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ದೀಪ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಭರತ್ ಅವರೊಡಗಂತ ಈ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭರತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗರಲ್ಲಿ ತನಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35, 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೊತ್ತ 35, 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನವದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತನುಷ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ತಿಕಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರನೀತರ ದಂಡ ಮುಖೇನ ಉಲ್ಟ ದಂಡದ ಮುಖೇನ 2 ಓಟ. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37, 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದೀಪ್, ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರನೀತ್. ಪ್ರದೀಪ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಓಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೀತ್ ಅವರಿಂದ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತನಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37, 4ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವೈ ಆಟಗಾರ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಎಸೆದಂತ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38, 38 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರದೀಪ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನದ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ತನಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನಗೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4.
39 ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶ್ರೀಕರ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀಕರ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಕಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥಿರಾಜ್ ಮುನ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಸೋಲು. ಕಂತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಸೋಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2, ಕಬಲಿಸಿದ್ದು 1. ಆದರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಒಟ್ಟು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40 ಹೊಂದಿದೆ. ಮುನ್ನ ಐಸಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಧನುಷ್ ದಂಡ ಮುಖೇನ 1 ಒಟ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಂಡ ಮುಖೇನ ಧನುಷ್ ಅವರ ದಂಡ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41 ಹೊಂದಿಬಹುದು. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಯಥಿರಾಜ್ ಮುನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಬಣ್ಣದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರು ದಂಡ ಮುಖೇನ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಮನ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42 ಯಥಿರಾಜ್ ಮುನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊತ್ತ 23. ಆದರೆ ಉಳಿದ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 23. ಆದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರದ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 19 ಓಟಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೈ ಆಕ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ನೋಡಿ. ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುನ್ನ ಹೊರಸಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 5, ಕಬಲಿಸಿದ್ದು 1. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಸೋಲು ಸ್ವತಃ ಮಾಲಕ, ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಕೈ ಆಕ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶ್ರೀಕರ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರೋಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥಿರಾಜ್ ಮುನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಮುಖ್ಯ 1 ಓಟ ಸುಲಭ ಹೌದು ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ದಾಸರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಡೆಗಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 43. 43 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್. 6 ಉದ್ದರನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವ ದಾಂಡಿಗ. ನವದಾಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶ್ರೀಕರ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಾವೂದ್ BMR ಗ್ರೂಪ್ ಓನರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ Kodical Premier League Season 3 and Dawood BMR Group owner are present here in our main stage. So warm welcome for this wonderful cricket tournament and we are welcoming on behalf of Vishal cricketers Kodical as they are celebrating their Silver Jubilee celebration in this most beautiful UCG cricket ground. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ವರ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. 7ನೇ ಉದ್ದರು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45ರಲ್ಲಿದೆ. 45 ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನವದಾಂಡಿಗ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 23ರ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರದ 5 ಓವರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ನೇಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ 5 ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46 ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಈ ಬಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಸಿದ್ರು. 8 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 47 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಾಗರಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಂತಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಂಡು. ಸುನಿಲ್ ಗೋಡ್ರಕ್ಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಎಸೆತ. ನೇರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೆಯುವಂತ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉದ್ದರಿ ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49. 8ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ದಾಂಡಿಗರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ 49ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುಗುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಿಂತ ನೋಟು ಮೊತ್ತ 50 ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 51ರ ಸವಾಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ 7 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 51ರ ಸವಾಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಆಮಂತ್ರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The next match will be between Kodical Indians and Royal Army. Both team captains and players signature should book as soon as possible. धन्यवाद सुजीत। और जहां तक सवाल है इस वक्त धन्यवाद सुजीत, एक बार फिर से आपका हम आभारी हैं। एक बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया राज्य भाषा कन्नड़ में। तो यहाँ पर उनकी पारी की शुरुआत होती थी और इस वक्त टीम स्काई हॉक्स को बनाने 51 रन विजय के लिए 51 द टारगेट फॉर टीम स्काई हॉक्स एंड द इनिंग स्टार्ट्स। इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और यहाँ पर जहां तक सवाल है, हालांकि स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अपना बल्ला बैट जरूर खो चुके थे लेकिन एक रन पूर्ण करने में सफल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर। आर्मिक बल्लेबाज है इस वक्त सुनील और यतिराज, जबकि गेंदबाज इस वक्त करते हुए धनुष। और यहाँ पर दाहिने हाथ ओवर का विकेट, धनुष की गेंद ड्राइव किया, बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को बल्ले तक आने दिया और इत्मीनान के साथ गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर कर चुके हैं और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर। लेकिन खूबसूरती के साथ निकाला, रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन सीधे गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर, एक बेहतर लिंक लाइन के साथ धनुष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, सुनील सामना करते हुए और इस बीच गेंदबाज को किया गेंद इस बार टॉप एज मौका हो सकता है, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है टीम स्काई हॉक्स का। गेंद को उछालना चाहा था लेकिन गेंद इस वक्त कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए टॉप एज पर टकराई, हवे में उछले और 20 गज के दायरे के कुछ बाहर इस कैच को सफलतम लपक लिया फील्डर ने और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है सुनील के रूप में टीम स्काई हॉक्स के लिए। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 3 for the loss of 1 wicket. Okay, match Kodical Indians will take over Royal Army in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. तो नए बल्लेबाज नागराज जो कि स्वयं टीम स्काई हॉक्स के मालिक हैं, फ्रेंचाइजी के मालिक है, इस वक्त क्रीज पर मौजूद और देखना यह है कि वो अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। इस बार रक्षात्मक तरीके की खेल, ऑफ द बैकफुट गेंद को ढकेला था इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए धनुष और अपनी
ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद इस बार हवा में, कवर पॉइंट फील्डर एक बार फिर से इस कैच को लपकने में सफल, इस बार दूसरा फील्डर शायद, लेकिन कवर पॉइंट पर लगातार दूसरा कैच और दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ, और टीम स्काई हॉक्स कोडिकल यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत, शैकलिंग स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, कर चुका है। 3 रनों पर 2 विकेट खो चुका है। 1, 2, 3 का सीक्वेंस यहां पर दिखाई देता हुआ पहला ओवर पूर्ण हो चुका है, 2 विकेट गिर चुके हैं, 3 रन बन चुके हैं, और निस्संदेह एक बेहतर ओवर समाप्त कर चुके हैं धोनी, जिसमें केवल उन्होंने 3 रन प्रदान किए हैं। तो नीलाकाश तले घने बादल इस वक्त मंडराते हुए नीलाकाश को इस वक्त ढक चुके हैं, और रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है। वर्षा की संभावनीयता हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं जब तक यह श्रृंखला टूर्नामेंट समाप्त ना हो, वर्षा ना आए। तो यहां पर गेंदबाजी प्रणीत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, जबकि यतिराज सामना करने के लिए तैयार रहा। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता होगा। एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से प्रणीत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त कप्तान कटे टाइटंस के, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लंग ऑन लंग ऑफ इस वक्त मौजूद, 2 फील्डर पेशकश के दायरे के बाहर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। ओवर की पहली गेंद, absolutely perfect run. This is a perfect Yorker lane delivery and he got the rid of the batsman. Absolutely fantastic delivery. गेंद ठीक ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए, और बल्लेबाज को ऐसा कहना पड़ेगा इस गेंद पर कुछ करने का मौका ही प्रदान नहीं किया गेंदबाज ने। हालांकि गेंद फ्लाइट जरूर थी, लेकिन सीधे बल्लेबाज के ब्लॉक होल पर इस वक्त टिप्पा खाते हुए और सीधे स्टंप्सों पर जा टकराते हुए स्टंप्स इस वक्त बिखरते हुए, और एक बेहतरीन गेंद के जरिए ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं प्रणीत अपनी पहली गेंद पर। और नागराज यतिराज का विकेट यहां पर गिर चुका है। 3 बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं और सिर्फ 3 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ टीम स्काई हॉक्स इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा इस वक्त दिया जा रहा है यूट्यूब पर। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 इनफैक्ट, और इस बीच प्रणीत अगली गेंद ऑन साइड पर खूब चोट के साथ निकाला, लेकिन रक्षण और प्रोटेक्शन मौजूद इस वक्त। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पे लेकर साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम स्काई हॉक्स को, अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना है। तो ये गेंद अच्छी गई, अंतिम क्षण में विकेट कीपर अगर पहले गेंद पर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट कर देते तो शायद यहां पर स्टंप आउट का मौका हो सकता था, लेकिन जब तक दूसरे प्रयत्न में वो गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेटों की ओर गेंद को बढ़ाए, बल्लेबाज क्रीज पर अपना कदम रख चुके थे। और एक बार फिर से ये गेंद उछाला, लंबा पर नहीं, कवर पॉइंट पर इस वक्त कैच लपक चुके हैं। टॉप एज पर गेंद टकराई और कवर पॉइंट पर इस कैच को लपक ले गया। तीसरा कैच कवर पॉइंट पर लपका है इस वक्त फील्डर ने, अलग अलग फील्डर्स ने, और 4 रनों पर 4 लिखते यहां पर रन गिर चुके हैं। टीम स्काई हॉक्स काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। I request the next match captains, next match teams captains, Kodical Indians and Royal Army. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯತಿರಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ
इस बीच गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಶ್ಫಕ್ ಇವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर. और इस बीच प्रणीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंद थी इस वक्त. गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहता, गेंद गई ऑफ साइड पर. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. तो 2 बेहतर ओवर इस वक्त फेंक चुके हैं टाइटंस के गेंदबाज और सिर्फ 6 रन पहले 2 पावर प्ले ओवर में बना चुका है. टीम स्काई हॉक्स कोडिकल ऐसा कहना पड़ेगा लड़खड़ाती हुई शुरुआत यहां पर कर चुका है. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಾವೂದ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So back to this game and 6 for the loss of 4 wicket. 2 overs have been bowled. Third over is now going to start. धनुष जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में की थी, सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे. अब अपना दूसरा ओवर लेकर यहां पर तैयार. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट क्रीज के कोने से ये गेंद बेहतर थी इस वक्त. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को खेलना चाहता क्योंकि 6 for the loss of 4 wicket. और एक बार फिर से ड्राइव किया, गेंद को बल्ले तक आने का इंतजार किया. स्कोर ऑफ द विकेट वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फील्डिंग में अभी भी जमावट यहां पर चलती हुई और जहां तक सवाल है अगली गेंद था तो इस वक्त धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ड्राइव किया, बेहतर गेंद थी और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद को लॉन्ग ऑफ पर ड्राइव करते हुए 1 रन बटोरने में सफल बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. और क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज प्रदीप और नागराज पारी की भागदौड़ को यहां पर संभालते हुए बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्डमैन की दिशा में गेंद पहुंची. गेंद पर पहुंचना चाहा था और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद इससे पहले कि थर्डमैन पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 9 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाता है. ये गेंद उछालना चाहा लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं. गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद पहुंचे डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. रन किस तरह से बनते हैं ये जरूरी नहीं है उनके लिए, जरूरी है कि रन सब बनने चाहिए चाहे वो किस तरह से भी हो. और इस बात को मद्देनजर रखते हुए टीम स्काई हॉक्स के बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए बेहतरीन तरीके से गेंद को रोक लिया गया 20 गज के दायरे के अंदर. और इस बीच वाइड का इशारा शायद मेरे ख्याल से गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े आ चुके थे तो अंपायर को ठीक तरह से मालूम नहीं हुआ और अंपायर रोलैंड पिंटो ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद, कुछ क्षण कहना पड़ेगा, सोच विचार करने के बाद इसे वाइड घोषित किया और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर. दोनों अंपायर इस वक्त अंपायर रोलैंड पिंटो और अंपायर श्रीरंज कुछ बातचीत करते हुए और एक बार फिर से स्क्वायर अंपायर से पूछने के बाद सही तरीके से इसे वाइड घोषित किया अंपायर रोलैंड पिंटो ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. और गेंदबाज धनुष फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर शायद वहां पर मौजूद है. जी हां, इस कैच को वहां पर लपक लिया है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. 5वां
छठा विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा जो दबाव बढ़ता जा रहा था उस दबाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया करारे स्ट्रोक्स के जरिए, लेकिन स्ट्रोक्स जरूर उन्होंने खेला था, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को क्लियर कर सके। लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर जो गेंद की ताक में थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंचे और एक और विकेट गिर चुका। और इस और एक और विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियां और बढ़ चुकी है टीम स्काई हॉक्स के लिए। तीन ओवर्स की समाप्ति, 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और 3 ओवर में निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है कट्टे टाइटंस के गेंदबाजों ने। और ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 3 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ कट्टे टाइटंस। 4 ओवर का खेल बाकी, 39 रन चाहिए, 39 to get from 4 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 9.75 runs per over. तो पहली गेंद पैरों पर टकराई, लेग स्टंप से बाहर और अपील को नकार दिया अंपायर श्रीराज ने सही तरीके से। 13 रन 13 for 5 ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಇರುವ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಾವೂದ್ ಬಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹನೀಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್, 14 for 5 is back. देखो खेला था मिसअंडरस्टैंडिंग, this could be one more wicket. This time I think he's gone. गेंदबाज माफ कीजिए विकेट कीपर और बल्लेबाज के बीच में इस वक्त दौड़ लगी थी, लेकिन अंतिम क्षण में जैसे ही विकेट कीपर ने भापा कि वो बल्लेबाज से तेज नॉन स्ट्राइकर पर नहीं पहुंच सकते, उन्होंने निशाना दागा अंडरआर्म थ्रो के जरिए, उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इसी के साथ ये छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। टीम रेड हॉक्स के बारे में क्या कहा जाए, इस वक्त कुछ कहने की जरूरत नहीं है, काफी संकट की स्थिति में वो नजर आते हैं। तो इस वक्त नए बल्लेबाज प्रदीप है, इस वक्त नए बल्लेबाज जो कि एक बेहतर खिलाड़ी है। इस वक्त इस बार उछाला लंगोर की दिशा में, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीनली कलेक्टेड आफ्टर 1 बाउंस बाय द फील्डर और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर, 6 विकेट के नुकसान पर, 15 for the loss of 6 wicket in the open, number 4 in progress, still 36 more runs now they have to score for victory. और इस बार this is a clean it, I think so, yes it does, it's a biggie. 6 runs came from the number 7 batsman, number 8 batsman in fact. Sushit the batsman connected that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style. और ये छक्का कुछ हद तक दबाव को इस वक्त कम कर चुका है टीम स्काई हॉक्स के ऊपर से। ऐसे ही चंद और स्ट्रोक्स की जरूरत इस वक्त कम बैक करने के लिए टीम स्काई हॉक्स के बल्लेबाजों को। ये गेंद इस बार उसी तरह का स्ट्रोक दोहराना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया उन्होंने, गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त लंगोर पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति, 22 विकेट के नुकसान पर, 22 for 6 after completion of 4 overs, 3 overs remaining and 29 more runs now they have to score for victory and the asking run rate is now gone up to exactly 9.66 runs per over. देखते हैं 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. So struggle time continues, but the last over and the batsman Sumit it's 1-6, and because of that 6 there Shishit in fact it's 1-6, and because of that 6 looks like the slowly and steadily then the chasing team try to get back into the right track of winning this match, but needed some extra work, and this time lovely delivery, but as a fact that ball is a little bit going away from outside the line of off stump because it's ball the leg cutter, and because of that extra turn surviving the batsman from the leg before wicket, and of course he's shoved it across the line of the delivery, but being the fact that ball is getting extra turn, and just umpire Roland Pinto just seeing the turn of the delivery rightly, so that ball definitely will going to miss the off stump. 23 for the loss of 6 wicket in the over number 5 in progress. So Cutted Titans, they're looking in a commanding position, but still I think Skywalks, they got an opportunity to back into this game, because this man Pradeep, he has to play some sheet ankle roll. If they, what we talking about the sheet ankle roll, but bowler is playing a sheet ankle roll with the beauty of the delivery. Absolutely no clue at all for that delivery from the bowler. Praneeth, is a kind of bowler, it's not easy for any batsman. Look at the way the batsman completely misreading the turn of the delivery. He thought that ball is off cutter, but ball is a different way, and is just completely misreading the turn of the delivery and pays the penalty for that. Wicket number 7 is back into pavilion of team Skyhawks are in a deep trouble. So now, number 9 batsman coming into middle. Rajanish with lot of responsibility. The tailenders have to contribute now, along with, of course, one player is looking very good is Shishit. And wait and see the first text delivery. And again, that ball is going to be a chance of run out. Wicket behind the stump and missed it completely. White call by umpire, rightly so. Umpire Roland Pinto giving a warning number 1 for the bowler Praneeth, because he's just coming across actually after delivering the ball. Follow through is a little bit problem that he is coming right in front of umpire, so that it's rightly so umpire. It's very difficult for the umpires to see the line of the delivery. Again, nicely bowled, equally well fielded by Praneeth in the negation on his follow through. Beautiful leg cutter, the flighted one, extra bounce as well, and Shushit have to give respect for that delivery. Again, using his feet, but this time nicely bowled again, a different line. This compared to the previous 2 deliveries, this is a quite a different line. He bowled outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. 25 for the loss of 7 wicket. Again off the backward, beautifully driven towards the deep long off region for an easy walkable single. So with that single, score now moves on to 26 for the loss of 7 wickets. So over number 5 in progress. They needed some partnership, needed some acceleration of run rate, and if they wanted to back into this game. 25 required from 13 balls. Whoa, how close that ball is into the off stump in the negation. Again, nicely bowled. Excellent delivery to finish the over number 5. After completion of over number 5, searching for the right track. Still, Skywalks are looking in trouble. 26 for the loss of 7 wickets. Last 2 overs remaining. Needed another 25 runs to win this match at the required rate of exactly 12.5 runs per over. For the latecomers, you are watching the match number 4 of day number 1 of this prestigious Kodical Premier League Season 3, and look at the bowling figure of both the opening bowlers. Outstanding. They are really dismantling the batting department of the opposition. Dhanush bowled 2 overs, conceded 6 runs and picked up 3 valuable wickets. And look at Praneeth, the same performance from him as well. 2 overs, 6 runs and 3 wickets. This is an outstanding bowling figure for the 2 opening bowlers of Cutted Titans. They already did the damage in the first 2 overs of their game. And lot of dignitaries are watching this cricket tournament in our main stage. We have owner of DMR Group, Mr. Dawood is present in the
the main stage. We have Hanif of Young Friends Surwa, the manager of Young Friends Surwa, and we have Chandrahas of NFC Urva. They're watching this live here in UCG ground. Meanwhile, one more wicket is back into pavilion. The batsman looking for the expansive drive, not quite getting hold of that one properly. Got outside edge of the bat, and the wicket keeper behind the stump did the rest. The wicket number 8 is back into pavilion. 27 for the loss of 8 wicket. So new batters are coming into the middle as the number 10 batsman for the side of team Skyhawks are looking in a deep trouble. .27 for the loss of 8 wicket. Again, the bowler from the far end. Right arm over the wicket. It was lovely delivery. Quicker one. The batsman completely misjudging the line, and ball just hitting his bat and pad. One more addition to total with the addition of that single scoreboard numbers on to 28 for the loss of 8 wicket. Another 23 more runs required for the victory. You are not really having enough deliveries to get that one. Again, looking for the drive. Again, Shushita, I think, is trying his level best, and as far as winning this match is concerned, he is the only last hope of winning this match. And if he is able to deliver some big shots in the remaining deliveries, then they can win the match. Again, one more delivery, which is a little bit down the leg stump. Batsman tried to turn that one onside edge and missed it completely. They're looking for the second, and the fielder trying for the run out in a non-cycles end, but it's very difficult, isn't it? You need to shy the wicket, but in a keeper hand, you can get the result very easily, and that's why the batsman survived from the direct hit, and they got 2 valuable runs in the last delivery of the over number 6. 31 for the loss of 6 wicket. Now 20 required in last over. 20 runs required in the last over for Team Skyhawks Kodical if they wanted to win this match. One more big tournament is coming here. It's not under-arm cricket, but it's an over-arm cricket, which is not made in UCG cricket ground, but that made in Sayadri ground, Adyar, in coming 28 and 29. The first time in the history of cricket, the tournament which is played under the ownership of 8 MLS, and players from 8 constituency will go in to participate in this tournament, which is called MLA Premier League 2022 over-arm cricket tournament. Will be organized in coming 28 and 29th May by the Sankalp Foundation and Mangalore Youths presenting this cricket tournament, and on behalf of organizers, we would like to invite all the cricket fans for that cricket tournament. Meanwhile, one more wide in ball by Bharat Raj, the last over, the 19 required to win the match. This time again the full toss delivery, but umpire need to see. It's a no ball call by umpire square leg, because that ball is going over the waist level, and definitely as per the rules and regulation it's going to be no ball. That means it's a free hit delivery, and it's a golden opportunity for the batter, and Shushit need to take the advantage of that free hit delivery if they wanted to back into this game. Now Bharat Raj with the free hit delivery, right arm over the wicket, using his feet, lofted that one, but fielder there in the deep long on will going to take the catch, but not really getting the result for that because of that free hit delivery. And Shushit have to settle for the singles. With that singles, Kobana moves on to 34 for the loss of 8 wicket. Now 17 more runs required for the victory. 17 more runs required for the victory. Bharat Raj bowling away from us. Right arm over the wicket, looking for the off drive. Again they missed it completely. Perfect delivery for the lower order batsman. And now still they have to get another 17 runs to win this match in remaining 4 deliveries. Last opportunity, and this time he tries that one, misfield by the infield, and before current is gone.
Hello. Hello. So 35 for the loss of 8 wicket and 3 balls remaining in the innings. This time Shishit looking for the law of drive, landed safely, and they're looking for the second as well. In comes the throw from the deep extra cover region, diving effort there from Shishit to save his wicket. Maybe that his bat is stuck in that reaper, so that he couldn't manage to control his speed and his body balance. But it's a good technique actually is implemented as far as saving from the injuries. The rolling, that's very important. The gymnastic work which is really required sometime for even for the cricketer as well to save from the injuries. So 37 for the loss of 8 wickets. This time he lost it, but it's too late. And even it's not enough to get the even boundary for that. Just a couple of runs here for Shushit, and with that couple of runs, Koban moves on to 39 on the board. Last delivery of the innings, and almost Katte Titans are won the match, and that's the last delivery. Just the formalities completed by Bharatraj. Comprehensive victory, the victory of 11 runs for Titans here, so they're registering their first victory of the league match and got a valuable 2 points and they with the victory of 11 runs against Team Skyhawks Kodical. The next match, Kodical Indians takes the challenge from Royal Army. So I request now the time to announce the man of the match award. We have a chief guest in our main stage, Mr. Dawood, the owner of DMR Group, Krishnapura, will going to present this man of the match award for the man of the match winner. It's a very big competition for the man of the match award because the two bowlers are really having the same figures, but I need to judge who will going to be the Of course, the two very good bowling figures, but the man who contributed even from the bat as well, and he picked up 2 valuable wickets as well, and that is none other than Suman of Titans, Katte Titans, who was chosen as the man of the match award for his all-round performance, who scored 16 valuable runs and he got 2 wickets in his bowling performance. So I request Dawood, the owner of DMR Group, Krishnapura, along with of course we have Hanif as well, the manager of Young Friends Urva, and I request Suman, please come and collect your man of the match award. ದಯಮಾಡಿ ಸುಮನ್ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಸುಮನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾದಂಥ ದಾವೂದ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಮಿತ್ ಇವರು. ಸೊ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ season 3 2022, and it's a time for the presentation of the man of the match award, and now our chief guest Dawood presenting the man of the match award to Suman for his wonderful performance, all-round performance, scored 16 valuable runs and picked up 2 valuable wickets as well. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
Hello, hello. Hello, 8 kilo. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Check. Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, hello, check. Hello, check. Right, the match starts now. First ball, outside the off stump, and just wanted to play that one, missing the line completely, and collected by wicketkeeper behind the stumps. Here batting. Match starts between Kodical and the Royal Army, the fifth match of this tournament, this prestigious tournament, in fact, in the name of Kodical Premier League Season 3 2022, which proudly organized by Vishal cricketers registered Kodical. This time लौटे दैट वन, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और एकमात्र दूसरा रन भी मिलेगा जरूर। इससे पहले कि डीप मिड विकेट पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बेहतर फील्डिंग के जरिए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ इस वक्त रॉयल आर्मी का खाता यहां पर खुल चुका। जहां तक रॉयल आर्मी का सवाल है, पहले मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स के सामने, तो इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इसी श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है। तो यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई गेंद पर पहुंचना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला, गेंद हवे में तब तक गेंद को बेहतर फील्डिंग के जरिए डीप मिड विकेट पर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास समय अवकाश 1 रन प्राप्त करने का, 3 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, एब्सोल्युटली क्लाउडी एटमॉस्फेयर एट दिस ग्राउंड, और सूरज जो कि घने बादलों के बीच इस वक्त छुप चुका है। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस बदली भरे माहौल तले यहाँ पर इस श्रृंखला का 5वां मैच खेला जाता हुआ, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नवीन की पारी समाप्त, बिल्कुल गेंद लाइन पर टिप्पा गई थी और मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कराते हुए देखिए किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस, और गेंद सीधे उनके पैर पर टकराई और अंपायर श्रीरज को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर।
तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है रॉयल आर्मी के लिए, और इस संदिग्ध मोड पर अब क्रीज पर उतरते हुए स्वयं कप्तान खुद अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया है तीसरे स्पॉट पर, और अशफक जो कप्तान है इस वक्त क्रीज पर मौजूद। पिछले मैच में दुर्भाग्यवशात उन्हें रनआउट होना पड़ा था, और यहां पर अगर उनके टीम का अस्तित्व को इस श्रृंखला में बरकरार रखना है तो यहां पर इस मैच में एक बेहतर प्रदर्शन देना जरूरी बन चुका है उनके लिए। और इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कोडिकल इंडियंस के कप्तान यतिराज, और गेंदबाज स्वर्थक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अशफक के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई स्टंप्स को कवर किया था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा पहले ओवर की समाप्ति 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। और जहां तक कोडिकल इंडियंस का सवाल है, अगर इस मैच में वो विजय दर्ज करते हैं तो वो प्ले ऑफ पहुंचने की उनकी संभावनाएं काफी उज्जवल हो जाएगी, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया था किंग्स यूनाइटेड के खिलाफ, और निस्संदेह यहाँ पर वो चाहेंगे कि इस मैच में वो विजय दर्ज करे और अपने प्ले ऑफ पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ा ले। और जहां तक रॉयल आर्मी का सवाल है, इस मैच में उन्हें जीतना बेहद जरूरी बन चुका है। अगर इस मैच में भी उन्हें पराभव का सामना करना पड़ता तो निस्संदेह प्ले ऑफ पहुंचने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी उनके लिए। तो इस बात को स्वयं उनके कप्तान अशफक जानते हैं, बाकी खिलाड़ी भी जानते हैं, और देखते हैं वो इस मैच में अपनी टीम को विजय दिला पाते हैं या नहीं। चेतन गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए एलोशियस डिसोजा जैक्सन की ओर से, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए प्रवीण। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर शुरू होता हुआ रॉयल आर्मी की पारी में, और चेतन दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर। फुल टॉस गेंद थी लेकिन गेंद को छोड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, वाइड का इशारा, और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज चेतन। गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद को कट करना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन ठीक तरह से गेंद को ठीक तरह से नहीं, बिल्कुल गेंद को नहीं खेल पाए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बार फिर से चेतन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रवीण के लिए। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, स्टंप्स को कवर किया, हल्के से बल्ले के मुंह को खोलते हुए, मेरे ख्याल से हाँ बल्ला टकराया था गेंद पर, 1 रन का इजाफा, गेंद को हल्के से डिफ्लेक्ट किया था इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्ट्राइक अशफक को यहां पर देते हुए, अशफक इस वक्त फील्डिंग में जमावट, फील्डिंग का जमावट का मुआयना इस वक्त करते हुए और सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का। चेतन अभी भी फील्डिंग में जमावट करते हुए कोडिकल इंडियंस के कप्तान यतिराज, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात इस वक्त, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, धीमी गेंद परिवर्तन के दौर पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त, हालांकि कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे, अपने पैर के जरिए उन्होंने गेंद को रोकना चाहा। शायद अगर वो झुकते अपने हाथों को गेंद के लाइन पर लाते तो शायद गेंद को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर से गेंद को रोकना चाहा था, और गेंद उनके पैरों के बीच से निकलकर सीधे चली गई सीमा रेखा के दीवार पर जाकर टकरा, जो कि एक्स्ट्रा कवर पर 4 रनों के लिए। और चौका इस वक्त जुड़ता हुआ 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। अशफक अपना खाता इस चौके के साथ खोल चुके हैं, और इस वक्त उस फील्डर को बदल दिया गया है, उन्हें इस वक्त भेजा गया है शॉर्ट मिड विकेट पर कहना पड़ेगा। और एक बार फिर से गेंदबाज चेतन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, अशफक सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर
आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द कैप। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, शायद तीसरा भी मिल सकता है। थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज आसानी के साथ 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर की बाईं ओर से और गैप को चुनते हुए, और 3 रन बल्लेबाज अशफाक यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। प्रवीण स्ट्राइक पर आ चुका है। एक बार फिर से चेतन गेंदबाजी से यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक नीचे रहते हुए बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट मिड विकेट पर जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed and after 2 overs Royal Army made a mixed start. In fact, they managed to score 13 runs on the board for losing 1 wicket. और एक बेहतर ओवर कहना पड़ेगा जहां तक रॉयल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण का सवाल है, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 10 रन बने और 2 ओवर के बाद आरंभिक धीमी शुरुआत के बाद कुछ हद तक संभल चुका है इस ओवर में रॉयल आर्मी, खासकर अशफाक की बदौलत इस ओवर में, जिन्होंने एक चौका और एक तिकड़ी उन्होंने इस ओवर में लगाया था। तो 7 रन उन्होंने बटोरे थे उन 2 गेंदों में और कुल मिलाकर इस ओवर में 10 रन बने और यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुका है रॉयल आर्मी। तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ इस वक्त प्रतीक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, लेफ्टी गेंदबाज, और यहां पर धीरे धीरे रोशनी मैदान पर कम होती हुई, घने बादल इस वक्त आकाश को ढक चुके हैं और यहाँ इस बदली भरे वातावरण तले यहाँ पर ये मैच इस वक्त प्रगति पर। प्रतीक पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, प्रवीण सामना करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेकिन गेंद को डिफ्लेक्ट किया इस वक्त। इस बार निशाना टकराया नहीं और बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके। शायद गेंद वाइड हो सकती थी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ला अड़ाया था, तो यहाँ पर 1 रन बल्ले के जरिए प्राप्त करते हुए बल्लेबाज प्रवीण 14 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। अशफाक स्ट्राइक पर आ चुके इस वक्त, प्रतीक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। अशफाक के लिए इस वक्त गली इस वक्त पीछे भेज दिया गया डीप बैकवर्ड 3rd मैन पर, ठीक सीमा रेखा के पास, और प्रतीक इस बार तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये क्या टेरिफिक अशफाक रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेलना चाहते थे, सेंसिबल क्रिकेट अपनाना चाहते थे, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद टिप्पा खाने के बाद जितनी ज्यादा घुमाव ली, टर्न ली, उस टर्न को समझ नहीं पाए और पूरी तरह बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक की। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन गेंद को निकाला जरूर रिवर्स शॉट के जरिए अशफाक ने, और जब तक बैकवर्ड 3rd मैन पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे बारिश के चंद बूंदे मैदान पर गिरते हुए और यहां पर बारिश शुरू हो चुकी है और मैच इस वक्त बारिश तले यहां पर खेला जाता हुआ। ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, दिस इज एन एक्सक्विजिट रिवर्स शॉट, फ्लाइटेड गेंद थी और गेंद की टिप्पे को पहचानते हुए विद अ ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड 3rd मैन सीमा रेखा से बाहर रिवर्स शॉट के जरिए 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा उन्होंने पहले ही भाप लिया था, बैकवर्ड 3rd मैन फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है गली क्षेत्र पर और यहां पर इस फील्डिंग को देखते हुए गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। इस बार गेंद को खेला जरूर लेकिन जगह नहीं बना पाए और गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर फील्डर यतिराज के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। प्रतीक एक बार फिर से तैयार, ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, हल्के से बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को मोड़ा इस वक्त। आई थिंक इट्स गॉट नो, इनफैक्ट नो कांटेक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल, गेंद पैर से लगकर आई थी, अपील जरूर हुई हल्की सी, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। 3 ओवर की समाप्ति, 7 रन इस ओवर में बने, 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, 3 overs completed and after 3 overs 20 for the loss of 1 wicket for Royal Army, scored with an average of exactly 6.66 runs per over for losing 1 wicket. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर और
जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस श्रृंखला का 5वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ कोडिकल इंडियंस और रॉयल आर्मी के बीच। हल्की सी बारिश मैदान पर होते हुए, और जहां तक सवाल है नए ओवर का, चेतन गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए अपना दूसरा ओवर, रॉयल आर्मी की पारी का चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार प्रवीण के लिए, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। गेंद इस बार आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, लेकिन चूके जरूर गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और चेतन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस, लेकिन गेंद धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी और निशाना दागते तो शायद समसों पर गेंद टकराती तो शायद यहां पर अशफक का विकेट गिर सकता था, लेकिन यहां पर निशाना दागना मुनासिब नहीं समझा और अशफक आसानी के साथ 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर, और फिर से इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार, और यहां पर कोई मुसाफिर यहां पर मैदान के बीच गुजरता हुआ, और अंपायर से इस वक्त उनको कह चुके हैं कि कृपया आप सीमा रेखा से बाहर जाएं, और कुछ क्षणों के लिए खेल यहां पर रुक चुका है। तो गेंदबाज इस वक्त चेतन दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, धीमी गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए खेल दिया। इस वक्त अशफक ने गेंद की धीमेपन को पहचानते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज कोडिकल इंडियंस के अगली गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरती के साथ। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, और हालांकि अशफक अपना बल्ला बैट जरूर खो चुके हैं, लेकिन आसानी के साथ दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 2 रन प्रवीण के खाते में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं इस वक्त उन्हें एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप इस वक्त निभानी है, अपनी टीम को एक सही मंजिल तक, सही स्कोर, एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाना है, और इसकी पूरी कोशिश जारी रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह, लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाते हुए पैरों पर टकराए, और एक बार फिर से वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे ही प्रवीण ने भापा कि वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हो चुकी है, जो बैकवर्ड थर्ड मैन पर जो फील्डर मौजूद हैं उन्होंने तेजी के साथ दूसरा रन लेना चाहा, दौड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण किया। 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चेतन ने एक बार फिर से प्रवीण के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। फुल टॉस गेंद थी, और जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 22 के रूप में। 27 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। 4 overs completed, 27 for the loss of 1 wicket, scored by Royal Army with a run rate of exactly 6.75 runs per over। 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का कोडिकल सुनाने के लिए अंग्रेजी में अब मैं सतीश को आमंत्रण देना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Mr. Gopi. So, Royal Army, after they faced their defeat in the first match of the league, they are really looking in a good position in the second match, and the captain, of course, taking the responsibility along with the Praveen, his opening batters, looking pretty good in the middle, scored 15 valuable runs, and this partnership of 25 runs between these two batsmen for the third wicket, and they lost their first wicket at the score of 2. That means 3, let me correction, and
and 25 runs of 24 runs partnership between these two. The players are looking pretty good now. Now 3 overs remaining, and having 9 wickets in hand. Certainly the time for the acceleration for the Royal Army, and wait and see how the team will going to give the restriction for the flow of the runs. It's a lovely shot, just inside out cricketing stroke played there by Praveen, but protection has been given in the deep extra cover region so that batsman managed to complete the single. So with that single, score now moves on to 28 on the board for the loss of 1 wicket. The bowler Swartak bowling away from us. Right arm over the wicket to Ashpak. Oh, ball him, cleared him up. Just using his feet, but not really reading the tone of the delivery. And maybe it was a little bit late reaction coming from Ashpak. He's just in the right position to hit the ball. But I look at the bat speed is not that much of enough to reach the turn of the delivery. And he just left the gap between, little bit gap between bat and pad. And that ball did the trick to hit the stumps. And Ashpak is quite a little bit disappointed with himself because he after settled down in the middle. When he was looking for some acceleration, he is not quite able to do that. So, and the wicket number 2 is back into pavilion. 28 for the loss of 2 wicket. So 28 for the loss of 2 wicket. What a fantastic delivery that one from Swartak. He's got a very big wicket here. The new batter Karthik came into, one more good delivery in the relegation, right on the target in the relegation. Might be that ball is a little bit got inside, outside edge of the bat of the new batsman Karthik, and not really carried to the wicket keeper behind the stump. One more addition to total with the addition of that single score, but numbers on to 29 for the loss of 2 wicket. What an outstanding cricket tournament is organized here by Vishal cricketers, Kodical, and in the memory of their Silver Jubilee celebration. And certainly they wanted to make this Silver Jubilee memorable one by organizing such a prestigious Kodical Premier League 2022. This time appeal and it's gone. One more big wicket. 2 settled batsmen are back into pavilion in that particular over of Swartak. That means he's on fire. So what a fantastic bowling performance here from Swartak, and what a irresponsible 2 cricketing strokes tried by the 2 settled batsmen of Royal Army. So 29 for the loss of 3 wicket. Just look at the two dismissal out here in this particular over. One is Ashpak, and he's tried to use his feet to hit the big shot, missed it completely. And after losing Ashpak, all responsibility on the shoulder of Praveen to carry the business. But he is also choosing a wrong shot selection against the turning delivery. He's trying for the reverse stroke, pays the penalty for that. 29 for the loss of 3 wickets. Swartak this time, full toss delivery. Going to be a chance here for the fielder, but that ball is just a little bit placement made there by the batter, so towards the deep extra cover. I thought there is a fielder, but fielder is in the wideish long off, not in the deep extra cover. There is a huge gap between long off and deep cover point region, so that batsman deliberately chipped that one in that gap, Kishan, and he picked up a couple of runs. 31 for the loss of 3 wicket. Swartak bowling with a short run up from the very good line. This that was ball is just landed short of that fielder at cover point. Unorthodox cover point, not in the deep, not in inside the ring. Between that, in the middle of that, the fielder is situated in that. That was a fantastic field set by the captain of the side of Kodical Indians, and of course is a very clever captain Yatiraj is the mastermind in irrigation. Just having a very good field set, and but more than that, I think this is a fantastic over there from Swartak. Picked up 2 valuable wickets, settled batsman back in the pavilion. 32 for the loss of 3 wicket.
32 for the loss of 3 wickets in the 5 overs completed, and now 2 overs remaining in the innings of Royal Army. And bowler is introduced from the far end. Roshan brought into attack. Right arm over the wicket delivers. This time little bit outside the line of leg stump, and batsman shuffled across the line of the delivery. He's just asking umpire to give the wide, but certainly that ball very well within the reach of the batter. Ball just turning and right, coming in the playable area of the batter, and the right call from Harish Patel. At the same time, he's been given warning to the bowler as well, as he was coming right in front of umpire Harish Patel. Roshan delivers outside the run of off stump. It's a big wide. Good stop by the wicketkeeper, but not really able to stop the single because it's not a neat collection in that occasion. Even the great effort there from fielder wicketkeeper Pratik, but a couple of runs here for the opposition in the form of extra. Scoreboard now moves on to 34 on the board for the loss of 3 wicket. 34 for the loss of 3 wicket. Now, from the far end, right arm over the wicket, delivers again. This time, just chipped that one, just got a placement right. Both the batsmen quickly realizing, because they are the new batter, the fresh leg came into the middle, so the time for them to negotiate very well in the remaining overs. Need to carry on the business, need to take the runs in each and every ball so that they can able to get at least 45 to 50 runs. And wait and see how will they going to get. As a Roshan bowling from the far end, right over the wicket. There he was. There's some lovely shot off the back foot. This time he's got a placement right as well. The long chase here for the fielder from the backward point region. Before the fielder from the backward point to run towards a deep cover point region. 3 runs, but here is a one shot which is called by umpire Harish Patel. So all the efforts are gone in vain from two batsmen, because they run hard but not really giving concentration over the line, and that's why the one shot called by umpires. 37 now for the loss of 3 wicket. 37 for the loss of 3 wicket. Again, Karthik facing the next delivery. Roshan was struggling with this line again. That was a big wide, far away outside the line of off stump. Much required runs coming here for Royal Army. And Kodical Indians, they won their first match of the league. That was the first match, the inaugural match, which is played against Kings United. They won the match. This time again, quite interesting cricketing stroke here from Karthik again. Ball is outside the line of leg stump. Still he manages to send that one between cover point and extra cover. Excellent placement there from Karthik. Even though he's not really looking for the big shot, but he's just looking for some rotation of strike. It's very nice to see. And runs are coming very freely. 40 for the loss of 3 wicket. Roshan from the far end. Aloysius D'Souza end, one of the main sponsor of this cricket tournament. This time, Yatiraj is just having a little bit jump to take the catch, but this time they're going for the second run as well, and they completed. The very good running with the wickets. Runs are coming in the singles and couple in this particular over. That means it's a good going here for Royal Army. As far as the slog over is concerned, they needed some runs. The runs are coming in this particular over. 42 for the loss of 3 wicket. Roshan from the Aloysius D'Souza end. Again that ball, the way to see the addition of umpire here is umpire says not out, but at the same time, and signals a wide. One more addition, 2 more to the in fact, 1+1, and extra runs really contributing the total score of Royal Army. Now they're looking pretty good. 44 for the loss of 3 wickets. It's a prolonged over. It's a big over. Ten runs already conceded by Roshan in this particular over, and the big contribution in the form of extra as well. Roshan delivers this time straight. Second attempt, he takes a catch. Once the ball is just slipped out of his hand, but he's kept eye on the ball. Ball is not really went far from him. Ball very near to his catchable level,
and distance as well. Look at it when I replay. The batter looking for the reverse stroke. He's got a connection, but he's straight to the hands of that fielder at backward point. One bounce after that ball hitting is a palm of the hands, and second attempt he complete that catch, and the wicket number 4 is back at the pavilion. So 44 for the loss of 4 wickets, and now new batters are replacing. Here is jersey number 28 and very famous and popular, and Yatin came into middle, and now he's in a non-cycle stand, and wait and see how they're going to deal with the last over. First ball beautifully bowled, excellent delivery indeed there from Pratik. He is knowing for that such a very difficult bowler when he bowls a good line and line. He's a left-arm bowler, and left-arm bowler always very effective when they bowls with a rhythm and a line and length. And here is again Pratik, right arm over the wicket, beautifully bowled. That was a fantastic delivery indeed there from Pratik. This time the batsman using his feet, Karthik, but not really able to reach the pitch of the delivery. So 44 for the loss of a 4 wicket, and that was a very good delivery there from Pratik, and he picked up a wicket for that, and why not? He's a fantastic performer from the ball, and look at the way he's pitching the ball in a right spot and moving the ball in a right line and length in the occasion, and he picked up a valuable wicket. So, and now new batter was just walking towards the middle. It's a very young talented player for the side of Royal Army, Sudeep will go into face, and Yatiraj having a little bit a change in field as he was trying that fielder, calling the fielder from deep mid wicket to come in unorthodox, not in the deep, almost 15 meters in front of the deep mid wicket boundary. And 2 closing fielders. This time he lofted, but not really having enough bat onto that. And Sinan, the fielder, then the deep long on, takes a very good running catch. And again, the back-to-back 2 wickets are back into pavilion. 3 dot balls in the final over. This is not a good to see for Royal Army. The wickets are tumbling in the final overs. This is, I think, is almost the second wicket in this particular over for Pratik. And he is on hat-trick. There is no hat-trick yet in this particular tournament. KPL Season 3. Will it go into the first hat-trick getter, Pratik? And wait and see how Yatin will go into answer that hat-trick delivery of Pratik. Balls this time shuffled across the line of the delivery, very close indeed, but fortunately got a bat onto that. Yatin having a little bit of word with Pratik. It's not a word which is we can see in international cricket, not a sledging, but it is a friendly sledging. Again, lovely delivery there from Pratik. Again, not really able to get the bat onto that. Leg by call by umpire. Last delivery. And wait and see how heaviest man, Yatin, can able to get an heaviest stroke here. And wait and see. Needed some big stroke. What a fantastic. That was a delicate. Absolutely delicate here from Yatin. Just look at the way he is having some word with Pratik. See, I am a player, I can do anything. And even I can play the reverse strokes as well for that full toss delivery. And he's just helping it down. Got the direction right and got the placement right as well. And that's going to be a boundary here. A good finish for the last delivery of the final over. And they got the runs what they really wanted. Royal Army got exactly 50 runs. Half century for Royal Army. And they set a target of 51 to win this match for Kodical Indians. And wait and see how Kodical Indians with the captaincy of Yatiraj, can they able to win the match. Of course, Indian
Kodical Indians, they won their first match. They won their first match against Kings United. That is the first match which is played in the morning. That is the inaugural match. They started very well in their league matches, but this is the second match, and more than I think for the Indian Kodical Indians, I think it's a very important year for Royal Army to win the match, because they lost the match. They lost their first match of the league, so that they desperately wanted to win this second match if they wanted to remain in the points table. So we are expecting some the very good battle between these two teams. The battle in the sense, battle between bat and ball is a healthy battle, and wait and see which team will going to win the match. And suddenly it's going to be more interesting. The second innings will going to coming up. That's the innings of Kodical Indians, and for that innings I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ನವರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟಗಾರನ ಸಹಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸುಜಿತ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 11 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And a fantastic performance, Gopi. At last, Royal Army, the managed to bounce back in this, because it's a must-win match, isn't it? After losing their first match against the Kings United, they knows that's how important if they wanted to remain in the points table, they have to open the account in the points table. I think the batters did the job. Now all up to the bowlers of Indians, how well they managed to restrict the opposition to not to get 51 runs. I think in this condition, Gopi, it's an overcast condition so far, I think. So it's a very, very helpful for the bowlers. So if the bowlers bowl with a good line and a good length, they can restrict the opposition not to get that 51 runs to win the match. Exactly, Satish, जैसा कि आपने फरमाया, और under this condition it's going to be competitive total, और जैसा कि कहना पड़ेगा यहाँ पर रॉयल आर्मी के अगर गेंदबाज सही लेंथ और लाइन के साथ पहले ही ओवर से गेंदबाजी करते हैं तो निस्संदेह वो इस 50 रनों के टोटल को डिफेंड कर सकते हैं. देखते हैं क्या होता है. यहाँ पर दोनों आरंभिक बल्लेबाज मौजूद. जस्ट 2 ओपनर्स आर इन द मिडल for Kodical Indians, and now their innings are going to start. और देखते हैं यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाज उनके यहाँ पर किस तरीके की शुरुआत उनके टीम को दे पाते हैं. हफीज और चेतन आरंभिक बल्लेबाज. मुकेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 51 रन बनाने हैं. और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, एग्जैक्टली 7.30 रन्स पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ 10 विकेट्स फॉर Kodical Indians. The present equation shows for them, and their innings now going to start. आमतौर पर इस मैदान में देखा गया है कि बदली भरे वातावरण तले ज्यादातर उदाहरण ऐसे हैं कि गेंदबाजों ने इस बदली भरे वातावरण का फायदा उठाया है. और यहाँ पर देखना यह है कि रॉयल आर्मी के गेंदबाज किस तरह इन कंडीशनों का फायदा उठा पाते हैं. पहली गेंद लेग स्टंप पर आते हुए कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक गेंद उनकी पारी में फेंकी जा चुकी है, और मुकेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. हफीज सामना करने के लिए तैयार, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट. मुकेश की गेंद हफीज के लिए. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, बेहतर गेंद थी. इस वक्त कुछ हद तक थोड़ी सी अंदर की ओर आते हुए, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद को आक्रामक स्ट्रोक गेंद पर लगाना चाहता, लेकिन न गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 2 बेहतर गेंदें गेंदबाज फेंक चुके हैं अपनी ओर की. अगली गेंद इस बार थोड़ा सा विकेट, कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को निकाला है. कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे. इससे पहले कि गेंद को जब तक कवर पॉइंट फील्डर पीछे की ओर दौड़ते हुए डीप कवर पॉइंट पर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था कि वो 2 रन पूरा कर सके. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है कोडिकल इंडियंस के लिए. 2 रन 90 रन के नुकसान के. गेंदबाज मुकेश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं. इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है. इनटू द गैप 4 रन जरूर मिलेंगे, और 4 रन यहाँ पर मिल चुके हैं.
हफीज के बल्ले से ये चौका लग चुका है। जैसे ही गेंद मैंगलोर लेग स्टंप पर आई थी, जितनी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनके बल्ले के करीब आई, उतनी तेज रफ्तार के साथ ऑफ द टोस गेंद को उन्होंने एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के साथ फ्लिक कर दिया और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। 6 रन, 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और मुकेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हफीज सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से ये गेंद, अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आती हुई। इस वक्त गेंद पर आक्रामक दमदार स्ट्रोक खेलना चाहा था, लेकिन गेंद उनके बल्ले के नीचे से होकर सीधे विकेट कीपर यतीन को भी बीट कर गई और शॉट फाइन लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे अशफाक, उनके हाथों में गेंद पहुंची और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो मुकेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, शॉट फाइन लेग पर पैर के जरिए 20 गज के दायरे के कुछ बाहर अशफाक ने गेंद को रोका और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था। 7 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 51 in 7 overs set by Royal Army. Kodical Indians made a steady start. In fact, it's 7 for none after first over. And let's straight away coming back to the equation. 51 minus 7, 44 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs with a required run rate of exactly 7.34 runs per over. और जहां तक सवाल है नए ओवर का, तो नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए प्रवीण और सामना करने के लिए तैयार यहां पर हफीज। हफीज पहले ओवर में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो दे चुके हैं। 7 रन पहले ओवर में बटोर चुके हैं एक चौके की मदद से और जो टीम के 7 रन बने वो 7 रन हफीज ने बनाए, जो कि 7 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए। तो यहां पर फील्डिंग में जमावट चलती हुई 7 रन टीम के बन चुके हैं और 7 रन 7 नंबर की जर्सी वाले बल्लेबाज हफीज बना चुके हैं कोडिकल इंडियंस के लिए। फील्डिंग में अभी भी जमावट चलती हुई और नया ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ। नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज प्रवीण इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करती ऑफ कटर गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। रतीश जो फील्डर थे शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया। यह गेंद ऑन साइड पर निकाला है। इस वक्त 2 रन कम से कम प्राप्त होंगे और गेंद सीमा रेखा से पार हो चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है डीप मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। इट्स 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक आरंभिक बेहतर साझेदारी की इस वक्त जरूरत है कोडिकल इंडियंस को। अगर उन्हें 51 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 7 ओवर में। और अब काफी लंबी बातचीत चलती हुई कप्तान अशफाक और गेंदबाज और एक खिलाड़ी के बीच फील्डिंग के सजावट के बारे में। और गेंदबाज प्रवीण एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। हफीज आक्रामक इस वक्त नजर आते हुए एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार प्रवीण की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रवीण गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए हफीज के लिए। ये गेंद इस बार गेंद जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। गेंद हालांकि मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं हुई थी, शायद गेंद उनके टॉप एज पर टकराई थी, लेकिन देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस। गेंद को उन्होंने उछाला था, लगभग टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद गेंद सीधे जा चुकी है डीप मिड विकेट पर। स्ट्रोक में इतना दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और डीप मिड विकेट पर ये छक्का जड़ चुके हैं हफीज और इस छक्के के साथ वो अपने इरादों को और बुलंद कर चुके हैं। 17 रन बन चुके हैं और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है अगर कोडिकल इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें अब तक पहले 3 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं। गेंदबाज प्रवीण एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। टीम का स्कोर है 17,
हफीज का भी स्कोर है 17 और इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। 18वां रन जुड़ता हुआ हफीज के खाते में और 18वां रन जुड़ता हुआ कोडिकल इंडियंस के खाते में। और अब सामना करेंगे इस पारी में पहली बार चेतन। तो अब तक के जो 10 गेंदे फेंके गए हैं वो 10 गेंद हफीज सामना कर चुके हैं और पहली बार इस पारी में गेंद का सामना करते हुए चेतन। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई, उनके पहुंच से बाहर और छोटे मैन पर गेंद फील्ड की जा चुकी है और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 18 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर प्रवीण इस बीच एक बार फिर से लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया था, विकेट कीपर यतीन गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, वाइड का इशारा। 2 रन का इजाफा वाइड के रूप में। 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 31 more runs now they have to score for victory and still 31 balls left, I think. Yeah, it's 31 balls left and 31 more runs now they have to score for victory. Again, इस बार one more big one. This time I think it clear. No, absolutely fantastic. This is an outstanding effort. और निस्संदेह मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा रिप्ले में किस तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया था। एक शॉट का इशारा जरूर हो चुका है और यहाँ पर दिस इज एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग। निस्संदेह अपना 100% यहाँ पर वो देते हुए देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। सर्व खिलाड़ी इस वक्त उनका अभिनंदन यहाँ पर करते हुए और जैसे ही सीमा रेखा को गेंद पार करे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए देखिए किस तरीके से गेंद को उन्होंने ढकेला था। निस्संदेह 100% मार्क गोज टू दैट मैन, मिड विकेट फील्डर नवीन जो फील्डर थे और इस निश्चित छक्के को सर्टेन 6 को बचाते हुए और सिर्फ एकमात्र रन इस गेंद पर जुड़ता हुआ। हालांकि 2 रन जरूर जुड़े थे लेकिन एक शॉट यहां पर अंपायर ने इशारा किया तो 21 रन बन चुके हैं यहां पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर पूर्ण हो चुका है। 2 overs 21. They've been a pretty good start for Kodical Indians, chasing the victory target of 51 in 7 overs. This is an absolute good start for them. 21 without loss after 2 overs. 30 required in remaining 30 deliveries. 30 गेंदे 30 रन चाहिए और यहाँ पर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कार्तिक और इस वक्त सामना करते हुए चेतन जो 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। निस्संदेह इस वक्त रॉयल आर्मी के गेंदबाजों को कमबैक करना है। डॉट गेंदे उन्हें फेंकने ही होंगे, विकेट उन्हें उखाड़ने ही होंगे इस मैच में कमबैक करने के लिए। गेंद को इस वक्त खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर होता हुआ और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 विदाउट लॉस एंड नाउ द मैन बैक ऑन स्ट्राइक हफीज जो कि एक बेहतरीन पारी यहां पर खेलते हुए सामना करने के लिए तैयार। कार्तिक की गेंदों का यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, हालांकि उनकी गेंद बैक लेग पर जरूर टकराए लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच लेग बाय के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 30 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। कार्तिक 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव करना चाहा, स्ट्राइट पास द बॉलर लेकिन गेंदबाज जरूर फील्ड नहीं कर पाए लेकिन बैकअप किया गया तेजी के साथ मिड ऑन पर फील्डर द्वारा और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 23 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज कार्तिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए उछाला लंगोन पर और मैं समझता हूं वहां पर फील्डर मौजूद है। जी हां, 1 रन मात्र मिलेगा, सिर्फ 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 24 विदाउट लॉस in the over number 3 in progress. They are giving a good reply by the batsmen of Kodical Indians और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022-2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर और इस बार गेंद को उछाला है। इट्स अ बिगर 30 रन बन चुके हैं और सिर्फ 3 रन इस वक्त चेतन के पक्ष में, जबकि 27 रन जोड़ चुके हैं हफीज और इस छक्के के साथ अब मैं कहूंगा दे आर बैक इन द मैच। 21 रन और चाहिए
विजय के लिए और गेंदे बाकी हैं 25। इस वक्त समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ उनके लिए। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर उछालना चाहा, पूरी तरह सफल होते हुए नहीं उछाल पाए, विकेट कीपर भी गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक रन जरूर मिला बाई के रूप में। 31 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 31 विदाउट लॉस। 4 ओवर का खेल बाकी और 4 ओवर में उन्हें रन्स बनाने हैं 20। 20 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 24 बॉल्स। देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अंग्रेजी में मैं अब सतीश को बुलाना चाहूंगा। और सतीश, 20 रन 24 गेंदे और मैं समझता हूं एक यादगार पारी यहां पर खेलते हुए हफीज, जो कि इस वक्त 27 रनों पर बल्लेबाजी करते हैं, बैटिंग ऑन 27। और मैं समझता हूं कमबैक करना है तो बचे हुए 4 ओवर्स में जो 20 रन बनाने, इस वक्त कमबैक करना है तो गेंदबाज को कुछ घातक गेंदबाजी इस वक्त करने होगी। और सबसे पहले हफीज का विकेट उन्हें उखाड़ना होगा। अगर हफीज का विकेट वो उखाड़ते तो इस मैच में लगभग कमबैक कर सकते हैं। और देखना यह है कि यहां पर वो बचे हुए 4 ओवर में क्या कर पाते हैं। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। So thank you very much, Gopi. So just you were just mentioning about Hafiz is really sensational in this particular match. What a fantastic innings he's playing. Absolutely terrific innings, entertainment innings, one must say. He's batting on 24, little bit correction. He's batting on 24. That means just 1 run required to complete his quarter century. I think it's one of the best innings, one must say, as Hafiz is played in this particular match. Now he's on strike, facing first delivery of the over number 4, and this a little bit down the leg stump. Wait for the umpire's signal. It's going to be a leg by, so one more addition to total. With the addition of that single scoreboard numbers on to 33 on the board. Almost they are in a driver's seat of winning this match. And it looks like Kodical Indians are looking in a commanding position, and opening batsmen Hafiz and then Chetan really laid the foundation for the team, and still they are continuing. This time, look at the placement. It was really good to see. Almost it's the inside-out cricketing stroke there from Chetan, and couldn't manage to beat the infield, but he managed to pick the single here, and with the single scoreboard numbers on to 33 on the board. And again, Karthik bowling right arm over the wicket. Delivers, and again that is a one delivery which is repeats the bat of Hafiz. A very rare occasion that Hafiz just missing the opportunity to get some runs here. And needed such kind of deliveries regularly if Royal Army wanted to back into this game. Again, looking for the expansive drive, not really controlled over that stroke, but he's just went with the strokes. That's very important from Hafiz. He's a powerful striker of the ball. When he hits, it's a very, very powerfully, no hesitation at all. And that was the kind of the technique which is required. When you want to hit the ball, you need to hit that one very hard with a full heart, and you can get that distance. Again, nicely driven, but not a good placement, and at the same time not a good piece of fielding there by Karthik at short mid-off region, so that the batters got an opportunity to cross off for a single. 35 on the board for the loss, without loss of any wicket. A very good partnership. It looks like it's a first highest run partnership for the first wicket so far in this tournament, and the over number 4 completed. It's a good over. So compared to the last, now 25 for Hafiz. He's batting on 25, the well-made 25. It's a fantastic knock here from Hafiz. Scored a valuable 25 runs for his team out of 35 runs. Now 35 on the board. That means 16 runs required from 3 overs. 18 balls, 16. And this is a 1 over. The Manoj is just brought into attack. He's a very experienced campaigner. He can turn the match around. He's got a potential. He got experience. He got a variety in his bowling.
something different bowler, and wait and see how Manoj will going to contribute. If Royal Army back into this game, certainly this over going to be very important for Royal Army to restrict and just break the partnership. If wanted to back in this match, they need to break the partnership between these two. Again, this look at that one. Just like I'm mentioning about the Manoj, the kind of bowler he's been so good indeed, having that much of experience. The age is just a number for the performer like Manoj. The way he is bowling the line and land, this time we are talking about he got a potential, he got experience, he got a variety in his bowling, and he just broke the partnership in the right time for Royal Army. The 35 runs partnership is comes to an end, and Chetan walks back to pavilion. So just like we are mentioning about, if the Royal Army back into this game, they need to break the partnership, and just like I mentioned, here is the partnership breaking delivery coming from the hands of Manoj. What a delivery that one. The batsman tried to play inside out cricketing stroke, but not really got a control over that stroke, and the ball went straight to the hands of extra cover, and first wicket is back into pavilion. Manoj is bowling his third delivery of the over with the jersey number 74. Left arm around the wicket, and captain Yatiraj so not impressed with his partner Rafiz. Why you are responded that much of slow for that run? Because he's played it on right in the gap. If they runs well, they can convert that a single into two. That's why Yatiraj is not impressed with his partner. But he's got a confident, as Hafiz is a very confident player, is a settled batsman in the middle. You know exactly that I am the man, I can hit some big shots. This time a lovely delivery, but appeal for leg per wicket, but certainly that ball is going down the leg stump. So far it's a wonderful over. Just like I'm mentioning about, age is just a number for the performer like Manoj. In other day, the last week Sunday, Quresh, when he is representing for Mangalore cricketers, when it's a 9 runs required from 3 balls, he completes the job. And again, look at the throw from the field. A chance of run out. Rafi is struggling, and umpire Anish Patel referring for the third umpire. Will it go into be another wicket here for Royal Army? If it is a wicket, then Royal Army certainly the back into this game. Will it going to be out? Will it going to be a not out? Umpire Roland Pinto has got an eagle eye. Will go in to check along with the technicians of Mangalore media, and it's going to be a very close call, isn't it? When it was whenever there is a big appeal coming from the fielding side, the fielding side thought that it might the result going in the favor, and even the captain, the batsman, looking very confident that his body language saying that he is safe. Just saying to his partner Yatiraj that I am safe, but whoever the safe, whoever is the danger, but umpire will go in to decide. And with the help from the technicians of Mangalore media, of course, we need to get that from the square angle, whether the batsman is landed his bat in the right time or not. And for that, we need to take a little bit time, isn't it? So that I think it's now time for the DJ to get some melodious songs to get some entertainment for the spectators. All are looking towards the commentary box. Everyone is excited because this is the one result will going to turn the match around. That's why they're really looking towards the commentary box, so that the kind of decision, of course, the fielding team certainly wanted to see that Roland Pinto will go to give the out,
At the same time, the batting side doesn't want to lose this man of his, because he is the one who got a lot of runs already in the bat. He scored 25 runs already from his bat. And but sometimes it's very difficult, isn't it? Having a limited availability of technology, we need to get the decision. And of course, the cricket is all about the fair game, isn't it? And the umpire certainly wanted to give, before giving the decision, he wanted to see and again, so that to get the best result, what they can able to do. So very touch and go indeed. So umpire Roland Pito having examination, and at last it's a not out signal coming from umpire, and rightly so, because in the right time when the bails are off and the batsman Hafiz is managed to put his bat in right inside the line. That's why he's so confident. That's why he was just telling to his partner, Captain Yatiraj, I am safe. That's the level of confidence what he has got. But at the same time, this is a cricket, isn't it? Sometimes very difficult for even for the third umpire as well. Even in international level, Gopi, we are some observing even the mistake is coming in from the international level as well. It's a very difficult one sometimes. And always it's a benefit of doubt goes in favor of the batsman. But here is not a benefit of doubt, but it definitely the face is bat is inside the line after seeing that. And this is a very good decision coming from third umpire Roland Pinto. 37 for the loss of 1 wicket. Again, looking for the big shot. A lovely delivery indeed. What a fantastic over there from Manoj. Once again, he is justifying why he is one of the most valuable player for the side of Royal Army. Even though in this particular age, he has managed to handle the pressure. That's very important. It's not so easy to come and bowl. And he's just bowled and delivered the over which is really required, badly required for Royal Army. And because of that good over, now equation is very interesting. 2 overs remaining, 12 balls remaining. They have to get 14 runs at the required 100 of exactly 7 runs per over. .38 on the board. That means 13 runs required for the victory. 13 required from 2 overs. Required run rate 6.5 runs per over. Now, after that, a fantastic over there from Manoj. Just 3 runs he conceded, and he got 1 valuable wicket. Now, 13 to get from 12 balls. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Still, it's overcast condition and cloudy weather, but it's fantastic weather for the players as well as for the umpires in this particular weather condition. And it was a cloudy after that afternoon.
And it's going to be a very, very good match as well in this weather condition. Yatiraj, nicely driven right in the gap. They're running hard, looking for the second. In comes a throw. What a fantastic throw. But still, Yatin had to wait for the throw to coming to his hand. But finding himself, he was trying to get that one in the off volley. Look at that throw coming from the fielder. Of course, he returns very well. But couldn't manage to get the result for that, and yet in disappointment you can see that he couldn't manage to get Yatiraj back. But Yatiraj runs very well between the wicket, and he got 2 valuable runs for his team. Now the balls remaining same, and they need to get the same runs as well. That means 11 balls remaining. They have to get another 11 runs to win this match. Just a rotation of strike is required for Indians, Kodical Indians, to win this match. Karthik searching for the dotted deliveries. Right arm over the wicket, just like what mentioning about searching for the dotted delivery. This is a too clever piece of bowling there from Karthik. Bowled outside the line of off time, seeing that Yatiraj standing well outside the line of leg stump. It's a very good delivery, flighted one and off volley, but outside the line of off stump. And within behind the stump did the rest. Karthik. One more delivery, the similar delivery, the Xerox copy of the previous one. Back-to-back 2 deliveries bowled there by Karthik. Now, ball winning the race against the winning the race against the ball. That means that they have to get another 11 runs and ball remaining 9. Appeal for leg before wicket is gone. Yatiraj back into pavilion with the beauty of the delivery there from Karthik. 40 for the loss of 3 wicket. Captain departs of Kodical Indians. So 11 runs required from remaining 8 deliveries. Meanwhile, I request the 2 teams, please get ready. Team Srianz as well, captain of Kodical Titans, please report to the commentary box for the toss. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಈ ಕೂಡಲೇ. So Karthik just getting some inspiration from Manoj, which is bowled beautifully the previous over. Now he is just continuing what is left in the previous over. The Karthik looking so far so good in this over. Bowling right arm over the wicket. This time he lofted, but just finding the fielder in the deep long off region. One more wicket is back into pavilion of Indian. Kodical Indians, in fact, is back into pavilion. Now they're right on top. Royal Army looking in a commanding position. Look at that stroke. Not much power, not much timing. Even placement is too bad. Flighted one, short pitch delivery, but he's choosing a wrong direction to get the distance. And he can hit the ball a little bit across towards the mid wicket and wideish long on. But he's just choosing that long off fielder. And disappointment here for the new batter. And now they are looking in the top. Royal Army, 40 for the loss of 3 wicket. 11 runs required. 7 balls remaining. Match still in balance because Hafiz is still there in the middle. Hafiz is still there in the middle. Man who is out of the strike. In the last few deliveries, he's just a spectator watching the wickets are tumbling in front of him. And wait and see how Hafiz will go into now handle the pressure. 11 to get. This time he lofted, but he's getting, oh my goodness, he drops the catch. Can you believe this? Will it going to be a costly? Why not? You're dropping the catch of Hafiz. What could be a certain wicket here for Karthik? What could be one of the golden over here for Royal Army? Because of that fielder in the deep mid wicket couldn't manage to handle the pressure. Look at the effort there from the fielder in the deep mid wicket. He's just running towards his right, moved very quickly. Look at that one. He's got the right position. Even he can take the catch in the second attempt, but he couldn't manage to do that. So, and Hafiz has got a life in the last delivery of the over number 6 now. Last over remaining. 6 balls remaining.
10 runs required for the victory for Kodical Indians. After a long discussion, they need to look for one over who can turn the match around. Of course, he's the one who turned the match. So Manoj's got 1 hour. So they got the over of Praveen, but it's very expensive, and that's why captain thinking about Manoj. Why not? Because he is the one. He really changed the game here, bowling a magnificent first over, and the score is considered just 3 runs, and he's just diverted the direction of the match towards the side of his team, Royal Army. But job is not yet over, because in this final over, he need to restrict 10 runs, because in front of him is Hafiz. This time Hafiz shuffled across the line of the delivery too much. His intention is to get clear that final against square leg, but this time Manoj is bowled a slower one. Ball is not really coming to the bat as Hafiz tried to play that one into the find against, but not really managed to make any contact with the bat. 5 balls, 10 runs. That means each and every ball required 2 runs here onwards here for Kodical India. This time Hafiz lofted. The fielder is there in the mid wicket. He's taken a comfortable catch, and Manoj strikes. What a fantastic performance here for Manoj. Little bit flighted one, and might be the little bit short pitch delivery, but Hafiz, look at that. Hafiz, where he was standing, he's just wanted to clear the mid wicket fielder, but he's not really getting the distance what he's looking for. It's a big wicket, the big blow, and for Kodical Army, Kodical Indians are looking in a trouble now. The 4 balls now, 10 runs required for the victory. Ali team Srianz ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 41 for the loss of 4 wicket. New batter came into middle. Roshan is in non-striker's end, but striker he managed to rotate the strike. Again, the one more good delivery ball there by the bowler Manoj. Now 3 balls remaining. 9 runs required. Required run rate 3 per ball. Required run rate is a 3 per every ball. The 3 runs is required for each and every ball for Kodical Indians to win this match. They won their first match. Royal Army, they lost their first match. So Royal Army, one stage, no one can imagine that Royal Army will going to bounce back here, because so good going for the first wicket. They scored a valuable 35 runs for the first wicket, and in just 3 overs they scored a 31 runs in 3 overs. Now they are in almost in a trouble. Almost they are in a trouble. 9 to get from 3 balls. The batsmen have to throw the bat for some big stroke if they wanted to win the match. But so far Manoj is looking pretty good, putting his all experience into performance, converting his experience into performance. That's very important in cricket, handling the pressure. Manoj lofted. It will going to be one more chance here. No, ball is landed very safely between deep extra cover and deep long off, and 2 more to the total. That means the last 2 deliveries required 7 runs to win this match. 7 required in 2 deliveries. Will it go into be opportunity here? Manoj. 44 is the total score. 7 runs which is required. 1 big stroke can change the complexion of this match. The left-hand batsman Roshan is on strike. Right-handed batsman
Swartak is in non-striker's hand. Manoj this time across the line, swinging the ball, running, looking for the second, and in comes a throw from the deep, but just a single. That means last ball, 6 runs required for the victory. Swartak got opportunity to become the hero. If you want to become the hero, you need to clear the UCG cricket ground. If you wanted to choose the areas where you wanted to get the 6, of course the find against square leg is one of the shortest part of the ground. But if you try to hit the ball mid-wicket and deep long on the longest part of the ground. And now, I want to say that, Gopi, how effective that 6 which is saved by the fielder in the deep mid-wicket. Naveen, who saved the 6 in a deep mid-wicket region. And that is what we are talking about. The one big save. This time he loved it and he got the distance, I think so. Yes, he does. It's a 6. Swartak has become the hero. What a fantastic finish for this match. Can you believe this? This is a day which is not really belong to the Royal Army. This is a day which is really belongs to the batsman. Swartak one hits a 6 for the final delivery of this match. What a fantastic finish, Gopi. What do you want to say about that magnificent 6? Outstanding, isn't it? The condition is not suitable for the hitting a big shot, but he's just choosing the longest part of the ground, Gopi. Without the help of the wind, he's got a lot of power and using his feet and got a fantastic strike. And he got a 6. Bilkul Satish, absolutely fantastic strike. Just connected that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style. और अंतिम गेंद में ये छक्का लगाने के बदौलत वो he become the hero. और what a fantastic match and what a fantastic finish for this match, Satish. Absolutely, Gopi. The winning and the losing is a part of the cricket. But Manoj actually is bowled really very well last over until the last ball. And this is what we are talking about. The cricket is crazy, absolutely crazy, isn't it? It's a funny game. We can't say anything in cricket until last ball of the over and until you are getting last delivery of the last run when required for the victory. Now it's a time for choosing the man of the match award, and it definitely is going to be a very difficult one for the selector, because if they wanted to see the highest run getter, of course Hafiz scored 28 runs, but if you look at that, who got the finishing touch in the last delivery, he not only got a finishing touch, Swartak is not only got a finishing touch, but he got 3 valuable wickets. So that Swartak is a man of the match of this wonderful, the match of the tournament. And Swartak is a man of the match. So I request Swartak, please come and collect your man of the match award for the finishing touch when it's 6 required from the last ball. He hits a 6. At the same time, he bowled magnificently. He bowled 2 overs. Conceded 8 runs and picked up 3 valuable wickets. The economy is just 4 and he got 3 valuable wickets, and when his team is required 6 from the last ball, and he just finished the match in favor of Kodical Titans, one of the best finish as far as UCG cricket ground is concerned. Of course, a lot of the witness, lot of histories out here for the UCG cricket ground when it's a 6 required from the last ball, and now he is the one. He is just registering his name, Swartak, in this UCG cricket ground. When it's a 6 required from the last ball, he is the one. He finished the match for his team, and he's become a hero of that match. Not only he become the hero of that match, but also he's become the man of the match. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
I request Swartak, please come and collect your Man of the Match award. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೋಡಿಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪಡೆದದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So match number 6, team Srianz takes on challenge from Kodical Titans. So I request for that match, I would request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. So corporate Manoj Kumar and the corporator of Kodical Ward will going to present this Man of the Match award for Swartak for his wonderful all-round performance. So scored valuable 7 runs when it's 6 required from last ball, and he scored and he got 3 valuable wickets, and he got the Man of the Match award as well. Of course, Hafiz has played a very good innings, but it's a day which is belongs to Swartak. Thank you. Dhanyawad Satish. So what a fantastic match ended just a short while ago, which won by Kodical Indians in the last ball. And now the match starts between team Srianz versus Kodical Titans. और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो इस वक्त टॉस कटे टाइटंस ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और बेहतर इस वक्त 2 गेंदें यहाँ पर फेंक चुके हैं गेंदबाज धनुष, और गेंदबाजी के जरिए एक बेहतर शुरुआत कर चुके हैं पहले 2 गेंदों में. स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अमित, और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के दिशा में. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन मिलेंगे 1, और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर. अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार किरण, और फील्डिंग का मुआयना वो यहाँ पर करते हुए. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिए का, तो सिर्फ 2 मात्र फील्डर भी इसके दायरे के बाहर तैनात, और धनुष गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं. विकेट कीपर अभी भी फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, और इस बीच धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. इस बीच एक फील्डर कुछ दौड़ कर आए, उन्होंने कुछ कहा इस वक्त कि किस सही लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए. और इस बार बेहतर गेंद, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. प्लम इन फ्रंट घोषित. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए. गेंद को इस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कुछ हद तक टिप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आती हुई और उनके पैर पर टकरा. उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा, और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में.
नवीद द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और 1 रन पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है। टीम श्रेयांस और नवीद नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से यहां पर मैदान पर उतरते हुए एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त दिया जा रहा है मैंगलोर मीडिया के जरिए। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहां पर इस बदली भरे वातावरण तले एक बेहतरीन प्रगति करती हुई है। गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेल जैसे लिमिट ऑन पर रन के लिए दौड़ पर रन। इस बार अपना शायद बल्ला उनके पैरों पर टकराया था और वो गिर पड़े हैं। इस वक्त शायद उनको चोट ज्यादा नहीं आई है। और दूसरे कटे टाइटंस के खिलाड़ी उनका इस वक्त उपचार करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। अंतिम क्षण में रन पूरा करते समय शायद गेंद उनके पैरों के बीच आ गई थी, बल्ला उनके पैरों के बीच आ गया था शायद, तो इस वजह से वो अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। लेकिन इस वक्त वो संभल चुके हैं और उम्मीद है उनको कुछ ज्यादा चोट ना आई है। और यहाँ पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 2 रनों पर। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रो पहुंचा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। पहला रन पूरा करने के बाद बल्लेबाज दौड़ कर आए दूसरे रन के लिए नॉन सेकंड पर, लेकिन वहां पर जो बल्लेबाज खड़े हुए थे, हालांकि एक कदम उन्होंने जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा की थ्रो पहुंचा है स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और आखिरकार बल्लेबाज को अपने क्रीज पर वापस लौटने का कोई मौका नहीं। दूसरा विकेट गिर चुका है 3 रनों के योग पर। इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत कर चुका है टीम श्रेयांस पहले ओवर में 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर कंप्लीटेड, 2 विकेट लॉस्ट एंड 3 रन्स ऑन द बोर्ड। तो यतीश का आगमन यहां पर हो चुका है एज ए नंबर 4 बैट्समैन। ही इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। प्रणीत गेंदबाजी शुरू करते पहले और इस बार एक और विकेट कॉट बिहाइंड और विकेटों के ऊपर विकेट यहां पर गिरते हुए इस बार गेंद को खेलना चाहता चूंकि एंड इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एंड एट द लास्ट मोमेंट विकेट कीपर कंप्लीटिंग द कैच बिहाइंड द स्टंप सक्सेसफुली। और 3 विकेट 3 रन लड़खड़ाती हुई शुरुआत यहां पर कर चुका कहना पड़ेगा टीम श्रेयांश। अमित की पारी समाप्त। अब निस्संदेह यहां पर एक साझेदारी की सख्त जरूरत है टीम श्रेयांश को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और इन हालातों में कीर्तन का आगमन यहां पर होता हुआ 5वें बल्लेबाज के तौर पर टीम श्रेयांश के लिए। और देखना यह है कि वो क्रीज पर मौजूद एक और बल्लेबाज यतीश के साथ मिलकर साझेदारी निभा पाते हैं या नहीं। दाहिना तो ओवर द विकेट, प्रणीत की गेंद बेहतर गेंद थी, इट्स गॉन फाइन। गेंद निकल चुकी है दोनों फील्डरों के बीच और फाइन लेकर सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई है और गेंद इस वक्त बाई के रूप में सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद इस वक्त निकली थी बिल्कुल फाइन, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डरों के बीच और दोनों फील्डर ने गेंद का पीछा जरूर किया लेकिन आखिरकार गेंद को रोकने में असफल और बाई के रूप में चौका यहां पर प्राप्त कर चुका है टीम श्रेयांस। तो 8 रन स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। हेलो प्लीज स्टॉप द डीजे, प्लीज स्टॉप द डीजे। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर
दाहिने हाथों पर विकेट प्रणीत की गेंद, अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन रिटर्न, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, यहां पर एक साझेदारी की इस वक्त जरूरत है टीम श्रेयांस को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है तो। दाहिने हाथों पर विकेट, इस बीच प्रणीत की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में निशाना, और इस बार इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। वाइड भी घोषित यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। So 9 for the loss of 3 wickets, in fact, because of that wide. नो डाउट सेज द थर्ड अंपायर। और यहां पर सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए और स्कोर सो 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाज इस बीच तैयार, प्रणीत बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। दाहिने हाथों पर विकेट है, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया, हालांकि एक बार फिर से इस बार नॉन स्ट्राइक रेट पर खतरा, लेकिन मैं समझता हूं यहां पर शायद वो गेंद को लगाया नहीं है, हालांकि अपने हाथों से उन्होंने विकेट इस वक्त बिखरे थे और इस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित। तो दोनों मौकों में अंतिम 2 गेंद में दोनों बल्लेबाज रनआउट के मामले से बच चुके हैं। और एक बार फिर से गेंदबाज प्रणीत तैयार, ये गेंद ऑफ द टोज इस बार खेल दिया, हल्के धीमे तरीके से गेंद को शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस प्रतिष्ठित कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022
श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का छठा मैच यहां पर खेला जाता हुआ ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर और इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिला। तो इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed, 11 for the loss of 3 wicket. Slight bit of a recovering in this over for team Srianz after being losing 2 wickets in the first over. 8 runs scored in this over और एक विकेट जरूर खोए इस ओवर में, लेकिन 8 रन बनाने में सफल और उन 8 रनों में 4 रन बाई के रूप में प्राप्त किए थे, एक वाइड के रूप में। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर कटे टाइटंस के खिलाफ। तो इस वक्त बिरवेर कुडला एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए धनुष, जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए कीर्तन और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और सारे फील्डर्स इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और इस बीच धनुष की ओर की पहली गेंद दाहिना तो बुरदा विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चेक किया स्ट्रोक को, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे यहां पर फील्डर। अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया। गेंद हमें भी जरूर थी, लेकिन आखिरकार खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए मिड ऑफ पर और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर इस बीच पूर्ण कर चुके। यतीश स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त धनुष की गेंदों का दाहिना तो बढ़ता विकेट स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले कि शॉर्ट फाइन लेग फील्डर का थ्रू पहुंचे, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास समय था कि वो 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल सके। निस्संदेह कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा टीम श्रेयांश को, अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद पर ठीक तरह गेंद के लाइन पर आते हुए गेंद को ढकेल दिया, फ्रंट फुट पर जाने के बाद कॉपी बुक स्टाइल ड्राइव इस वक्त और इससे पहले कि सिले मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनके पार का यहां पर प्रगति पर। धनुष एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट बॉल पर नॉन स्ट्राइक रेट पर खतरा, निशाना लग चुका है और इस बीच यहां पर एक बार फिर से इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। नॉन स्ट्राइक रेट पर यह थ्रो इस वक्त लग चुका है गेंदबाज द्वारा और देखने वाली बात यह है कि जब स्टंप्स बिखेरे गए थे गेंद द्वारा तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर था या फिर क्रीज से बाहर था। He's gone. He fell just short out of his crease when stumps are disturbed by the ball. और इसी के साथ ये एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो ये साझेदारी जम ही रही थी कि यहाँ पर ये साझेदारी टूट चुकी है। दुर्भाग्यवशात इस वक्त आउट होने वाले बल्लेबाज यतीश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 14 रनों पर चौथा विकेट यहाँ पर खो चुका है। टीम श्रेयांश एक बार फिर से संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो देखते हैं नंबर 6 बल्लेबाज के रूप में कौन सा बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी पर उतरते हैं। दिलीप, द नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर टीम श्रेयांश। तो 11 रनों की साझेदारी यहां पर टूट चुकी है यतीश के रूप में और इस वक्त दिलीप नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद, जबकि कीर्तन इस वक्त
स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और ओवर की अगली गेंद लेकर धनुष एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थोड़ी सी गेंद अंदर की ओर आती हुई फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद और बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद इस वक्त निकली फॉरवर्ड शॉट की दिशा में। बेहतर गेंद थी इस वक्त और एक बार फिर से धनुष गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए परफेक्ट, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी, परफेक्ट लेग कटर। और इस गेंद पर बाल बचे, गेंद को इस वक्त खेलना चाहते थे लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी टर्न घुमाव लेती हुई निकली उनके बल्ले के कुछ अंतर दूरी पर और भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं टकराया और इस गेंद पर बाल बचते हुए एक और बेहतरीन ओवर धनुष का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए। कुल मिलाकर उनका गेंदबाजी का विश्लेषण 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 6 रन 1 विकेट और 7 ओवर के फॉर्मेट में ऐसी गेंदबाजी निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी कहलाती है। 2 overs नो मेडन, 6 runs 1 विकेट, फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस bowled by धनुष in this match. 3 overs completed, 14 for the loss of 4 wickets. Still the testing time is now continuing here for the batsmen of team Srianz. और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ सुमन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नए बल्लेबाज दिलीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रोशनी काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है, इस वक्त लगभग अंधेरा सा छाता हुआ और लगभग बादल इस वक्त आकाश को इस वक्त ढक चुके हैं और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती हुई और पहली गेंद को इस वक्त ढकेला था शॉर्ट कवर पर, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर इस श्रृंखला का छठा मैच यहां पर खेला जाता है। 6th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग ऑन हियर। गेंदबाज ये गेंद अंदर की ओर आई, गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और इस गेंद पर बाल बचते हुए तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए कटे टाइटंस के गेंदबाज फलस्वरूप रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए टीम श्रीयांश के बल्लेबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, जस्ट ओवर द बॉलर साइड और गेंद इस वक्त निकल चुकी है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। गेंदबाज के कुछ ऊपर से गेंद को उछाला था बल्लेबाज ने पिछले गेंद पर और 1 रन बटोर कर यहां पर अपना खाता खोल चुके हैं दिलीप और इस वक्त सुमन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए कीर्तन दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, परफेक्ट लेग कटर और यहां पर 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है बल्लेबाज ने लेकिन वहां पर रुक गए और देखना यह है कि यहां पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा गेंद पर टकराया था या नहीं और अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करने के लिए स्क्वायर लेग अंपायर की ओर बढ़ते हुए वो पूछते हुए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। He's got a nick on that at the last moment और थोड़ा सा निक हुआ था इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ एक बेहतर लेग कटर गेंद के जरिए विकेट प्राप्त कर चुके हैं सुमन और 15 रनों पर 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। टीम श्रेयांस काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। तो सचिन का आगमन यहां पर हो चुका है एज ए नंबर 7 बैट्समैन और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, मिड विकेट फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम बार इस ओवर में सुमन गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिलीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा हवे में विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। स्वीप करना चाहता, गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में उनके टॉप एज पर टकराए, उनके बल्ले के टॉप एज पर टकराए, हवे में उछली और विकेट कीपर ने अपनी बाईं ओर
3 से 4 कदम दौड़ते हुए इस कैच को लपक लिया और इसी के साथ छठा विकेट गिर चुका है. 16 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. 4 ओवर्स हैड बीन बाउल्ड. निस्संदेह परेशानियों के बादल और घने होते हुए इस वक्त टीम श्रेयांस के बल्लेबाजों के ऊपर 3 ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज बचे हुए 4 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मैं अंग्रेजी में अब आमंत्रित करना चाहूंगा सतीश को. आइए सतीश. So thank you very much, Gopi. So 16 for the loss of 6 wickets. So really they're deep in trouble now. The batsmen of team Srianz is not really able to bounce back from the early breakthroughs. Early the wickets fell and the wickets fell like a house of cards, and only because of the bowlers of Kodical Titans are looking in a commanding position with the bowling. Won the toss, selected to field first, and the bowlers are really justifying the decision of the captain. Right arm over wicket, it was beautifully bowled. Excellent one. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. It's definitely going to be a chance for the wicketkeeper behind the stump. It's outside of the bat and a little bit going away from the wicketkeeper behind the stump. He tried his level best to take that one, but couldn't manage to take the catch, and the batsman got a single for that. 17 for the loss of 6 wickets. Sujit came into middle, and wait and see how Sujit will going to contribute from the bat. Needed some partnership, and if they wanted to get some fighting total against Kodical Titans. Team Srianz, of course, they lost their first match, so that they wanted to bounce back with this match. It's a nice looking drive there from Sujit. Misfield dive by the short mid wicket because his is just standing very close to the batsman. It's a nice wrist work there from Sujit. Just taking that one in the off volley, and wrist work comes into play to pick the single down to mid wicket, and scoreboard 18 on the board for the loss of 6 wickets. Going to be one more chance, and even I think the bowler himself just calling everyone, it's my catch, don't come with middle of that, and he just got a very good judgment as well to finish the catch. One more wicket here for the bowler Praneeth, and scoreboard now 18 for the loss of 7 wickets. Wickets are really tumbling here of Srianz, team Srianz. 18 for the loss of 7 wickets. There is no single double figure for in the innings of Srianz. That's why they're struggling. The top order batsman fails to contribute from the bat. And we can see that 2-0-1-6-2. And out of that 18 runs, there is more contribution from the bat. Just look at the effort there from the wicketkeeper behind the stump. Now, Roland Pinto's the decision is very, very interesting. First, he's raised his fingers, then he made a box. Why not to take have some little work here for the third umpire. Srianz is relaxing in commentary box, so that I want to give some work here for Srianz to give the decision whether it's going to be out or not out, and it's going to be a very, very close one, and wait and see and what decision will going to come here from the third umpire Srianz. If it is a wicket, I think the team of Srianz almost they are in a disaster position. What a fantastic effort there from the keeper. Absolutely fantastic. It's a really good one. The all body is in the air when he was trying for the run out. And that was a fantastic to see that even in underarm cricket, such kind of commitment, such kind of the fielding efforts. And look at the wicket keeper. Almost that was just like a jaunty Rhodes when World Cup matches of South Africa, the former cricketer and one of the best fielders. Out is the decision which is coming from a third umpire. So that's why I'm quickly realizing, Gopi, the umpire Roland Pinto, he knows that it's out because first he raised his finger, then he made a box. And maybe he just wanted to see that why the batsman going to be disappointed. Even sometimes batsmen are thinking about that I am safe. Why umpire not gave that out? Why not he is asking for the
the third umpire. Maybe that's the reason why umpire Roland Pinto asking for the third umpire, and our third umpire has got full evidence, enough evidence to give that out. 18 for the loss of 8 wicket. They are in very, very difficult condition. Now, two very good friends out here in the middle. Sujit as well as Ravish. Oh, fantastic delivery indeed. Ball is just turning around the legs. Even Ravish just searching for the ball. Where the ball is. Ball is just missing his leg stump. And again, Praneeth has been outstanding today in his bowling. He's a very good bowler. Very intelligent bowler. It's a magical bowling performance here from Praneeth. This time he lofted down to deep long on. One bounce collected by the deep fielder. And Prajwal is about the fielder there in the deep long on. He just picked the ball after one bounce. So very good over there from Praneeth. Absolutely fantastic bowling figure from him. 2 overs, no maiden, 7 runs, and picked up 2 valuable wickets. And economy is 3.5 runs per over. Outstanding bowling figure. Even for Suman as well. He bowled only 1 over, but he picked up 2 valuable wickets. Now he will going to continue from the Aloysius D'Souza end. 5 overs completed and 2 overs remaining in the innings of team Srianz. Little bit showering out here in UCG ground. Not a huge rain, but just in showering. It will not going to interrupt the matches, even interrupt the interest of the players. But certainly it's a difficult condition for the batsman when it's raining. It's very difficult, very hard to get some big strokes. So sensible batting which is required in these conditions. They need to rotate the strikes, they need to get the runs. Any score around 35 to 40 is definitely a good score to depend in this condition. This time Chittaran beautifully by Ravish Raja. He's looking pretty good and looking for the second. 2 little masters out here in the middle. And try to get some good partnership between these two. But not really the plenty of deliveries remaining. Just 11 deliveries remaining in their innings. This time wicketkeeper behind the stump, Praneeth fails to collect the ball and bicycle umpire one more addition. Total with the addition of that single scoreboard now moves on to 21 on the board. So one more delivery which is bowled almost outside the line of off-time. Batsman tried to drag that one, but completely missed out the timing which is not really coming. Beautiful delivery indeed. Almost forcing the batsman to follow that delivery, but that was a slight leg cutter in the negation there from a bowler. Defeats the bat of Ravish Raj. Again, right arm over the wicket. Chip that one chance. Ball is landed safely between 2 fielders. Mohan Raj and Mohan Das, of course, and then Bharat Raj is in extra cover. And Mohan Raj is in the cover point region. Ball landed between these 2 fielders. And scoreboard now moves on to 22 on the board. Loud appeal for leg before wicket. And umpire just asking Suman, how can I give the leg before wicket? This is a second chance for you. But that will not going to disturb him because he's completed this 2 overs quota. And he just survived. He's got an umpire's 23 for the loss of 8 wicket. Almost it looks like it's a very good delivery indeed. If umpire able to watch that, it's definitely going to be the wicket for the person. But the fact that he's coming right in front of umpire Roland Pinto, then I think the punishment has to be given for the bowler because he is the one is responsible for missing that wicket. He's just coming right in front of umpire. That's so important in as far as the bowler is concerned. After delivering the ball, the follow through is so important. Immediately you need to go to your left, not right. If you come to your right, you are coming right in front of umpire. It's very actually when you are practicing, you have to practice that. After delivering the ball, you need to come to your left, not to come to your right. And when you try to practice regularly, and you can avoid that decision from the umpire, isn't it? And that's what the bowler need to learn from the mistakes. Now Bharat Raj bowling last over of the innings of the opposition. This time he is going for the big shot, but he is not really getting the distance right. With the beautiful toss
for Sujit, but I already mentioned the condition is not not that much of encouragement for the batters. Very difficult to get the distance right as you are not having any wind at all in the ground. The batsman, like the previous match, the batsman hit 1-6 in the last ball, Swartak. And that's why I was talking about that. That was a fantastic stroke. It's not an easy stroke to get the distance right. And when it's a 6 required from the last ball, he got the distance because he got really using some muscle power behind the stroke and using his feet as well in that final delivery. And he got a 6. But this time, the Sujit is not really getting that much of power behind the stroke. So last pair in the middle of team Srianz. Srianz are looking in a deep trouble to get some fighting total on the board. One more single is added to total. Bharatraj is in operation in the last over. And he bowled 2 deliveries and conceded 1 run and picked up 1 wicket. The last number 11 batsman is on strike. Vikram, tall player, bending a lot. This time nicely placed between bowler and short extra cover. And before the fielder to run across his right to field the ball, ample time for the batter to complete the singles. With that single scoreboard moves on to 25 now. Very hard combined 25 runs for Srianz, 25 for the loss of 9 wickets. Now it's the last 3 deliveries left in the innings. Ravish Raj looking for the big shot, but he's not interested for the run. Maybe his intention is, I want to carry on the business in the remaining 2 deliveries. I want to get some big shots. But wait and see. And his brother Ratish Raj is not really impressed with this brother's effort in the field. You want to see what brother will going to do in a 2 deliveries, remaining 2 hours. Using his feet nicely. Just over the top of the cow point fielder. They're looking for the second as well. But it's a last wicket. It's a last wicket. It's not a good thinking. Need to consume all the deliveries. But 1 delivery is left in their innings. And they're bundled out for 26 runs. And they set a target of 27 to win the match. For Cutte Titans. And Cutte Titans, all they're looking that they're in a commanding position. The Cutte Titans are looking towards the second victory of their league matches, but at the same time, Team Srianz are looking just edging towards the second defeat of their league matches. But cricket, everybody knows that it is unpredictable. Cricket is game of glorious uncertainty, and Team Srianz, if they wanted to win the match, they need to do a lot of hard work from their bowling department. As the condition is so good for the bowlers, if the first ball itself they are able to attack the batsmen of their opposition, they can win the match. If they want to win the match, I think the the way left here for the Srianz, that they need to pick the wickets in the regular overs, each and every overs, then only they can win the match. And wait and see how well they're going to restrict the opposition. Wait and see how Cutte Titans will going to get that moderate total of 27 to win the match. Meanwhile, the next match, Kodical create challengers takes on Kings United, and before the innings will going to start off, Cutte Titans, I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो 27 रनों का लक्ष्य, 27th टारगेट इन 7 ओवर्स एंड द इनिंग स्टार्ट्स। पहली गेंद इस वक्त यतीश की गेंद थी सुमन के लिए और गेंद को इस वक्त ढकेल दिया लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है कट्टे फ्रेंड्स के लिए, कट्टे टाइटंस के लिए, माफ कीजिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के। और जहां तक टीम श्रीयांस का सवाल है, उनके बल्लेबाजों ने सिर्फ 26 रन बनाए 5.5 ओवर में। उनकी पारी सिमट गई सिर्फ 26 रनों पर। अब 27 रनों का लक्ष्य कट्टे टाइटंस के सामने उन्होंने रखा है और कट्टे टाइटंस की पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और गेंदबाज यतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद इस वक्त थर्ड मैन पर निकल चुकी है और सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो 5 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 5 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रन। 5 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहां पर प्रदान करते हुए गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार 5 रन इस वक्त जुड़ते हुए कट्टे टाइटंस के खाते में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 5 रनों के साथ 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। शायद एक फील्डर उनके हाथ में शायद इस वक्त दर्द महसूस करते हुए, हालांकि कुछ हद तक चोट आई है उन्हें और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, कोडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3 2022-2022 का छठा मैच यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है विशाल क्रिकेटर्स कोडिकल ने अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द सिल्वर जुबली 25th ईयर। और ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करती हुई। तो जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो अगला मैच खेला जाएगा कोडिकल क्रिएट चैलेंजर्स और किंग्स यूनाइटेड के बीच। और शायद अगर पर्याप्त रोशनी हो तो अगला मैच यहां पर होगा, अगर ये मैच जल्द से जल्द समाप्त होता है तो। 6 रन, सिर्फ एक सही गेंद अब तक फेंकी जा चुकी है यतीश द्वारा और सर्व फील्डर अपने फील्डिंग के मार्ग पर जाते हुए और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहां पर होता हुआ। यतीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और कमल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बारिश हल्की सी मैदान पर होती हुई और काफी ठंडी भरा माहौल, थोड़ा सा ठंडी भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है मैदान पर। यह गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में पहुंच चुकी है। और फिर से एक बार गेंदबाज यतीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, गेंद तक पहुंचना चाहता और पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 6 रनों पर स्कोर बोर्ड रख चुका है यतीश। अंतिम 2 गेंदें बेहतर फेंक चुके, एक बार फिर से तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद एक बार फिर से उछाल लेते हुए, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट। 3 लगातार डॉट गेंदें और एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं वाइड के रूप में 5 रन प्रदान करने के बाद। और फिर से एक बार तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहला पावर प्ले ओवर जारी इस वक्त। ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। लॉन्ग ऑफ फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद गेंद को लौटा दिया है गेंदबाज के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज यतीश इस बार तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद पहुंची पहले टिप्पे के बाद सीधे शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 7 रन पहले ओवर में बने और कलकत्ता टाइटंस अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इस वक्त पहले ओवर में बल्लेबाजी कर चुका है, 7 रन जोड़ चुका है। 27 रन उन्हें बनाने हैं निर्धारित 7 ओवर में। They have to score 27 runs in the stipulated 7 overs. They pretty good start, steady start for them of 7 runs after first over. और 20 रन और चाहिए विजय के लिए बचे हुए 6 ओवर में। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, exactly 3.34 runs per over. Now they have to score for victory. That means और इस बीच एलोशियस डिसोजा एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए किरण राज, निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा
सिर्फ घातक गेंदबाजी ही इस मैच में टीम श्रेयांस को वापस ला सकती है। और पहली गेंद लेकर तैयार किरण, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया है खूबसूरती के साथ आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और गेंद सीधे डगआउट में इस वक्त जा गिरी है पहले टिप्पे के बाद 4 रनों के लिए। कमल के बल्ले से ये चौका लग चुका, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उन्होंने उछाला, खाली क्षेत्र चुनते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और चौका वो प्राप्त कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और गेंद सीधे डगआउट पर जा गिरी थी वहां पर कट्टे टाइटंस के। ये गेंद एक बार इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर और इस बार मिसफील्ड है, लेकिन बल्लेबाज ने रन चुराना मुनासिब नहीं समझा। 1 रन का इजाफा वाइड के रूप में हो चुका है। 12 रन 90 लग से नुकसान के 12 विदाउट लॉस। और अगली गेंद लेकर किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, वहां पर कुछ पत्थर लगने की वजह से गेंद मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से निकल गए डीप मिड विकेट पर। और आखिरकार बल्लेबाज के पास समय था कि आसानी के साथ 1 रन वो पूरा कर सके। 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। किरण एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर रन लेना नहीं चाहा बल्लेबाज ने इस गेंद पर। और स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका 13 रन बिना किसी नुकसान के। 14 रन और इस वक्त उन्हें बनाने हैं विजय के लिए। यह गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर, और गेंद इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था एनफील्ड क्लियर करते हुए और खाली क्षेत्र चुनते हुए, और चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज सुमन। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 17 विदाउट लॉस। और किरण राज एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद एक बार फिर से गेंद को इस वक्त स्कूप किया है, और इस बीच सुचित शायद गेंद का सामना पीछा करते हुए, और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। इट्स 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर किरण राज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस ओवर में अंतिम बार यह गेंद ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट फील्डर ने डाइविंग लगाकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन नाकामयाब। डीप मिड विकेट पर जब तक बैकअप होता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। दो ओवर के समाप्ति 20 रन बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस आफ्टर 2 overs. Katti Titans are looking in a commanding situation. Just 7 to get from 4 overs, 5 overs in fact. The asking run rate is now coming down to exactly 1.40 runs per over at this situation for Katti Titans. अमित गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सुमन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद इस बार गेंद को इस वक्त हल्के से ऑन साइड पर मोड़ना चाहता कलाइयों के सहारे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद जमीन के सहारे आई। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज अमित एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट। वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 21 कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वर्षा कुछ हद तक और तेज हो चुकी है। इस बार गेंद को मोड़ दिया और गेंद फाइन लेग की तरफ बढ़ते हुए, और इस बीच 1 रन मिलेगा। दूर से रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 23 नाउ राइनिंग हेवीली। वर्षा थोड़ी तेज यहाँ पर हो चुकी है, बारिश के मोटे बूंदे यहाँ पर गिरते हुए, और इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ फील्डर के लिए मौका, और इस कैच को लपकने में सफल एक बेहतर जजमेंट के साथ। पीछे की ओर 8 से 10 कदम दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी, और बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त लपक लिया गया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर। और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, जस्ट 4 टू गेट फॉर विक्ट्री। तो
तो इस बीच अगली गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में इस बार शायद उन्होंने स्टंप्सों पर अपना बदला निकाला है, सीधे इस तरीके से उन्होंने निशाना जड़ा था स्टंप्सों पर और ये विकेट यहां पर गिर चुका है सुमन का, दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और नए बल्लेबाज धनुष इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, प्रणीत नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, अमित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूंकि, और यहां पर शायद एक और विकेट गिर चुका है, शायद बल्ला बदलने के लिए, बैट बदलने के लिए बल्लेबाज की ओर बढ़ते हुए। तो निस्संदेह यहां पर अब वो अंपायर से अनुमति लेते हुए कि मैं अपना बैट बल्ला बदल कर आता हूं, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 रन अभी भी चाहिए विजय के लिए। तो 4 रन अभी भी चाहिए विजय के लिए। 3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। किरण राज नया ओवर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन पर, फाइन, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को इस वक्त खो चुकी है और सिर्फ बाई का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट 3 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 23 डिलीवरीज। इस बार लेग स्टंप से बाहर, तो शायद गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद हल्के से रक्षात्मक तरीके का पुश, किरण राज इस बार विकेट कीपर चुके, shot third man पर wide, 1 + 1 2 runs now added to their total, and that couple run brings the scores are leveled. Just a single run required for कट्टे टाइटंस to register a comprehensive victory। और इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा था चूंकि रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में। ऑन साइड पर खेलना चाहा चूंकि, और फिर से एक गेंद व्यर्थ, डॉट गेंद, और अब 1 रन अभी भी चाहिए विजय के। स्टिल 1 टू गेट नाउ। इस बार चूके और 4 ओवर की समाप्ति। शाम के 5:50 यहां पर बच चुके हैं और आज का छठा मैच यहां पर खेला जाता हुआ, और अभी भी अपने विजय से सिर्फ एकमात्र रन दूर कट्टे टाइटंस। और सुजीत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, लगभग 6 से 7 फील्डर इस वक्त घिरे हुए बल्लेबाज को, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार रिवर्स शॉट, और इसी के साथ कट्टे टाइटंस registered a comprehensive victory by 8 wickets with 17 balls to spare, and with that comprehensive victory they backed the complete part. Not even they backed the complete part, but they increased their run rate as well. So 6th match ended just a short while ago, which won by Katte Titans against Team Srianz, and the 7th match will be starts between Kodical Create Challengers and Kings United within just a short while, and we'll be back right after the short break with my friend in Satish in English.
Now it's a time to announce the man of the match award of this match, and man who really bowled magnificently to 2 overs, no maiden, 4 runs and 2 wickets, and he scored 9 valuable runs as well. And once again, Suman of Katte Titans becomes a man of the match. So that I request Suman, please come and collect your man of the match award from our chief guest. And I request the chief guest in our presentation dais, kindly request you to present this man of the match award for Suman for his all-round performance. ದಯಮಾಡಿ ಸುಮನ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Hello. So that's it for the day number 1. It's a successful day number 1 of this prestigious Kodical Premier League Season 3, which is proudly organized by Vishal cricketers on their Silver Jubilee celebration. So the 5 matches played today, 6 matches played today, and 1 match which is pending. That is the match of Kodical Creative Challengers versus Kings United. So that match will go into
play tomorrow morning exactly at 8:30. So that I request all the players of both the teams, please report exactly at 8 o'clock. And within 8:15, you need to complete the signatures. And we need to start the match exactly at 8:30 a.m. in the morning. Please note the time. 8:15ಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ 8:15ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ನಾಯಕರು, ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15 ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.